Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon Hello, for mic recent check. updates. Mic testing 1 2 3 check. Hello check. Hello. Welcome to King Hello Sports. check. Subscribe to the channel Mic and testing press the 1 2 bell 3 icon check. for recent Hello updates. check. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel. Good morning and everyone press the and bell welcome icon back for the recent most updates. prestigious BPL Season 3, which is proudly presented by Brothers Hello. Makyar. Welcome to It King is most Sports. beautiful Subscribe pizza to the ground channel Makyar, and and press the bell everything set icon here for the recent opening match updates. of this prestigious cricket tournament. We are going to start with two Hello. very good teams. Welcome to King We're going to Sports. have a contest. Subscribe. The team Friends Makyar takes on Mansho Talpadi, and we are going to start here the first match. The toss, which is on by the captain of Friends Makyar, and they rightly elected to ball first, and everything is ready for the first over. The opening batters for Mansho Talpadi are walks towards the middle. And the opening batters looks like Chami, one of the most popular name as far as underarm cricket is concerned in our neighboring state and neighboring district, Kasaragod. And Chami will go into face the first over, and against him as opener batter square leg umpire Abu will be the one more opening batters for the side, and Abu will going to take the strike, and Chemi will be the non-striker. And Aziz will going to start the pressure over. One more fantastic bowler, has got a lot of experience behind him. The most beautiful cricket ground here in Makyar, and very good sunny morning here, the bright sunny morning, and with the beauty of the natures. Wonderful cricket ground here in Makyar. We're going to witness one of the most prestigious BPL Season 5, which is proudly presented by Brothers Makyar. So good morning everyone, good morning those who are tuned to the live telecast of this cricket tournament, one of the most popular live telecast YouTube channel, King Sports. Will going to have a live telecast of this cricket tournament under the great leadership of Naufal as well as Badruddin, and they have got some fantastic staff members with the camera and with in this technical department. Here is the first delivery of the tournament. Aziz starts with a beautiful delivery, almost ball coming into the batter in the negation, and of course we are having a square angle commentary box here. We are not really able to see the line of the delivery. Chemi again with a short run up from the far end. Aziz again with a short run up. Right arm over the wicket balls. Pass umpire Shiraj, lovely delivery, the flighted one, but a very good one. Ball at the last moment kept it a little bit low. Abu just going for the drive, beaten by the pace. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Two very good teams are having a competition of this prestigious cricket tournament. The match number 1 is in progress. Mansho versus Friends Makyar. After winning the toss, Friends Makyar elected to ball first. And so far, very good start here from Aziz. 2 dotted deliveries to start with. Third time in this over. Right arm over the wicket balls. This time wanted to go for the reverse sweep. Lovely collection by the wicketkeeper behind the stump. 3 dotted deliveries. That just keeps the batsman under pressure here in this power play over. And the bowler absolutely exploiting the morning condition of this prestigious cricket tournament.
And the long on and the mid wicket correction, the deep square leg, the batters, fielders in the deep. Lofted that one beautifully up and over, down to deep long off. Fielder chasing the ball, and this looks like the ball winning the race against the fieldsman. Boundary number first, and first run as well for the team. Manshaw Talpadi, they are off the mark with that boundary, and this time Abu almost ready for that deliveries. After that 3 dotted deliveries, then he just wanted to break the shackle and played it exquisite off drive, lofted off drive, just over the head of the mid-off fielder, down to deep long off boundary for 4 runs. Excellent placement here from Abu. You know exactly the bowler is always bowling that line which is outside the line of off stump. So just he made his mind after that 3 dotted deliveries. Just he wanted to play that orthodox cricketing stroke and played it very well over that of the mid-off region fielder. Aziz, 5th time in this over. Pass umpire. Right arm over the wicket, almost drags the ball, played it very fine, down to deep fine leg region. The deep square leg fielder have to run across to his right a lot to field the ball. And before the return coming from the deep fine leg region, ample time for the batter Abu to complete the 2 valuable runs. With the 2 valuable runs, scored Namuzan to 6 on the board without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Aziz again bowling with run up, the good run up. He has got a very good bowling action as well. Right arm over the wicket. Oh, lovely delivery. Appeal for leg before wicket. Chance of run out in the strikers, and Chum is almost jogging there. Absolutely, if he run little bit quick, he can be a safe. But umpire asking for the third umpire. But looks like Chummy is the body language itself says that he's a short of his crease. Well, slight bit of agitation for the run, isn't it? Chummy is not interested, and Anch is already started, but I think he's run very slowly. He's already given up, and the out, which is a call from the third umpire, is gone. He's short of his crease. The first wicket back in the pavilion. Quite unfortunately, without facing a single delivery, Chummy back in the pavilion. So Manshaw Talpadi, they lost their first wicket. Chummy is a unlucky player without facing a single delivery. He is back in the pavilion. Umpire for this match, experienced umpire Sriraj of Gori Young Boys, the former cricketer, as well as Munir Ulal, the umpires from UCL. UCA, correction, Ulal Cricket Association appointed umpires for this prestigious cricket tournament. So new batter in joining Abu is Tai. The one more recognized player for the side of team Manshaw Talpadi, and bowling we also changed here. Bashir brought into attack. He will go into ball right arm around the wicket. Pass umpire Munir. This time lofted right in the gap. One bounce collected by fielder Aziz in the deep in the square leg, in front of square, between mid wicket and square leg. And ample time for the batter Abu to complete the single. With that single, scored Namuzan to 7 on the board without loss of repercussion for the loss of 1 wicket. 5 overs side to be played. And here is again the bowler Bashir, right arm around the wicket to Tai, facing his first delivery. Tai nicely helping it down, almost closing his face off the bat. Swept the ball very nicely down to fine leg region. The pedal sweep, in fact, he played it down to fine leg region for a single. With that single, scored Namuzan to 8 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Fantastic weather condition, the typical morning condition what we are witnessing in this prestigious cricket tournament. And here is again the bowler right arm
This time lofted. Oh my goodness, what a catch. Fantastically taken there by the fielder at mid-wicket. Once it looks like ball will go into falling short of the fielder. But it's been an excellent judgment taken by the fielder there. Almost below his knee level and just above the ground level. This is really a great catch. The Boaz, the fielder down at mid-wicket region, taken a wonderful catch to dismiss. A huge wicket of Thai is back in the pavilion. Krishnan Abu is a batter, is back in the pavilion. He looks so good in the middle, but the catches win the matches, which is the greatest slogan of cricket. And if you wanted to send a good player like Abu, certainly this kind of commitment which is required from the fielder. But it looks like a difficult catch. The fielder can make that easy with some fantastic technique. 8 for the loss of 2 wicket. So 2 wicket back in the pavilion. Bashir 4th time in this over. Round the wicket, right arm. Again drives that one down to deep long on. Nine on the board for the loss of 2 wicket. Ilyas. This time chance of run out, and both the batsmen completed a single very quickly. And with that single, Skobar Namuzan to double figure 10. And Taif got his second run. That brings Ilyas into strike now. Last time in this over. Bashir. So tidy bowling performance in progress here for team Friends Makyar. Friends Makyar, the local team, of course, they know exactly the condition of this cricket ground. This time wanted to go for the reverse sweep. Opportunity is created for stamping there. The batter is well out of his crease. Just try to get that one by playing the unorthodox cricketing stroke reverse sweep. Missed it completely. Great over. Comes in India from Bashir as well. 2 gone after completion of over number 2. It's 10 on the board for the loss of 2 wicket. And they're going exactly 5 runs per over. The great going here for the team, the fielding team in the Buster 2 out of the power play. They are absolutely bowled very good overs. It's 10 for the loss of 2 wicket. This is a huge ground, the full ground, isn't it? The most beautiful cricket ground we can witness. Because in South Kent district, it's not so easy to find the good grounds, but it is one of the ground I want to tell you. Definitely is one of the most beautiful, and as far as the dimension of this cricket ground is concerned, the perfect ground for the cricket. Again, wanted to go for the reverse sweep in that occasion, but beaten by the pace as well as good thinking bowling by the bowler Muhaz in that occasion. Seeing the batter is committing to play the reverse sweep, Taif, and missed it completely. There's a nice list up that one out to the square leg region. Good collection there by the fielder at deep square leg behind the square, and ample time for the batter Taif to complete the single. So with that single, Skobar Namuzan to 11 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 3rd is in progress. That brings Ilyas into strike now. Both the batters looks very similar. Only they can find them by the wearing the color of caps, the white and the black. Muhaz again over the wicket, right arm. Bowls to Ilyas. Nothing much to do with the delivery. Far outside the line of off stump, and umpire has got no hesitation to call that wide. With that extra, Skobar Namuzan to 12 on the board for the loss of 2 wicket. Muhaz.
This time catching is a call and ball's just falling short of that cow point fielder. After one bounce collected by the fielder, the ball is in there for a while. So Taif got a single and scored numbers on to 13 on the board. All the bowlers of team Mansho Talpadi did a great job. Again, the question, friends, Makyar bowlers did a great job so far. Keeps the batsman very quiet. Only one boundary so far in this tournament. The previous delivery, sweep shot played it down to deep mid wicket for a single. With that single, Skobar Namuzan 14 on the board for the loss of 2 wicket. Muhas to Elias, lovely lofted drive, but not more than a single. And with that single scoreboard, Namuzan 15. The runs are coming in the form of singles. But in this open ground, it's an open ground, a huge ground. I think the batter have to see that batting bus team. At least they have to get the score around 35 to 40 runs. It's definitely going to be the good score to depend in this morning condition. Again, almost pedal that one down to short fine leg division for a single by Taif. And with that single scored Namuzan to 16. One more good over which comes to end, and both the batters are just try to adapt to the condition and rotating the strike very well. 16 for the loss of 2 wicket after completion of over number 3. You are watching match number 1 of this prestigious BPL season 5, which is proudly presented by Brothers Makyar in this most beautiful cricket ground, Fiza cricket ground here in Makyar. So 12 balls remaining, excluding wides and no balls. Wait and see how well team Mansho Talapadi will going to showcase their batting here in the remaining 2 overs. Both the batters are settled down in the middle, Taif and Ilyas, and they are settled down in the middle. Just wait and see how well they will going to get acceleration of the run rate. So 3 brothers are playing in this. Friends Makyar and Nittu, Muzamil and Muhaz. So 3 brothers are playing in one team. It's going to be outstanding. And for this Friends Makyar, I have got 3 brothers playing in one team. So first ball of the over number 4, the Muzamil, what we are talking about, one of the brothers out of that Muhaz, after completing that over in the previous over, his brother Muzamil is in action. And first ball, which is appeal for stump out, umpire says not out, no damage done. Score remains on 16 on the board for the loss of 2 wicket. Absolutely, it's going to be a very, very busy schedules as far as the cricket is concerned. The month of February, almost we can see that everywhere there will be a cricket tournament organized. Muzamil shot fine leg division, chance of run out there, and the fielder have to make a little bit quick work because both the field batters are run very quickly between the wicket. Aziz, the fielder, down at short fine leg division, feeds the ball, returns the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scored Namuzan to 17 on the board for the loss of 2 wicket. Friends Makyar on the toss, elected to field first. Muzamil, right arm over the wicket. Second time in this over. Punishable from the umpire, not from the batter. Little margin for error to any bowling around the legs of the batter. And if the ball misses the bat, and as per the rules and regulation of in this particular cricket tournament is concerned in UCA, that will going to be wide. With that wide, scored Namuzan to 18 on the board for the loss of 2 wicket. Round the wicket, Muzamil, right arm over the wicket. Balls this time appeal for leg before wicket, and a good piece of running between the wicket. We need to wait for umpire signal. It's a leg by call by umpire. With that extra scope, Namuzan to 19 on the board for the loss of 2 wicket. The partnership is building up, but of course there were the boundaries which is dried up. Both the batters are
dealing with the singles. Muzamil. This time, what we're talking about? Oh, my goodness, he dropped the catch. The tough one here for the fielder, but he had to take the catches. In this condition, of course, the ball is went like a tracer bullet. The moment that ball left the bat, the ball is with the direction of the wind. That ball went very fine indeed. There is a fielder at square leg moving to his right, but the ball just passing his trying hands because of the speed of that stroke, which has been outstanding, which is Taif. He hit that one pretty well, isn't it? Fantastically struck. And scoreboard numbers on to 25. Just like I mentioned about acceleration is much required in the slog overs when you are got in and spent time in the middle. You have to look for some acceleration. You have to take a little bit risk. And Taif is taking that responsibility of acceleration. Might be it was a lucky one, but he played it very nicely and hit that one very firmly. 25. Again, played it exquisite, strong sweep shot. And again, he hits that one pretty very well. Just a single here. And with that single, scoreboard moves on to 26 on the board. (26) on the board for the loss of 2 wicket. Fantastic partnership is in progress for the Manshaw Talapadi. Right arm over the wicket balls. Again deflected from the legs. Aziz is a fielder in the short fine leg region. He couldn't manage to stop the single. Leg by call by umpire. This is the first productive over from the point of view of Manshaw Talapadi's comes to an end. After completion of over number 4, it's 27 on the board. Now looks like the team Manshaw Talapadi are pretty much happy with that total score because of that expensive last over ball by Muzamil. Quite unlucky one because certainly there will be a chance of catch there. Makyar ini kira-kira ini awal nonton aja Talapadi Makyar Talapadi net toll gate dete Makyar Premier League road avadi mic udu lan bakaman fan ide mic udu lan commented udu ave bakaman fan. Last over going to start here and the bowler Yakub brought into attack. This time lofted that one straight down the ground over that of the bowler, and before the fielder will go to run across to the right to field the ball in a straight area. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. So with that 2 valuable runs, scoreboard now moves on to 29 on the board. Again, played it down. Oh, ball is back now. Chance of run out. My goodness, can you believe this? He hits the stump, but the bails which is not dislodged from the stump. And Yakub, of course, he fields the ball very well, but lost his balance. But still is trying his level best. Tried his level best to hit the stump. Of course, he hit the stump, but he's not having enough power to dislodge the blades from the stumps. And the batter Taif is on strike now. Again outside the line of off time. Chance of run out. Oh, wicket keeper. He's not really the. My goodness, can you believe this? Absolutely absence of mind here from the wicket keeper. The batter is not in the picture. He is not really able to remove the bails, and batter is very lucky. And one more run completed here. 31 on the board. Drives that one down to extra coverage. A nice looking drive. They're looking for second. Easily they will going to complete that couple of runs. Excellent placement. Even looking for the third run as well. Oh my goodness, it's a high throw. All in sudden that friends Makyar, they lost their
the momentum what they got in the first 3 overs, everything is going now in favor of team Mansho Talapadi. 34 on the board. 3 valuable runs here for Elias. So now the fielding team exceeds the time limits. They have to bring one fielder inside the ring, not more than 4 outside the circle. As for the rules and regulation of the discipline is concerned, and time concept, which is very important. Again, played it, of course, it's going to be a bye. The wicketkeeper missed it. One more single. They're looking for second. And, of course, the wicket will go into failure in the form of run out. Only 1 run in the form of bye. And the total score now moves on to 35. So very good innings which has comes to an end. Elias played a very good innings for his team along with his partner Taif. They absolutely built the innings and they built the partnership in a very, very quick time, as well as in a difficult time. This batter they absolutely played a fantastic the partnership for their team. They lost the first wicket, the second wicket at a score of 10, then they scored a 35 minutes, a 25 runs partnership. This time again played it, it's going to be wide, 1+1, 2 more runs added to total in the form of extra. Scissor Rockers takes on Sime 11. Sime 11 as well as the Scissor Rockers. I request you to please complete the formalities of signature. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. Sime 11 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Outside the line of off time too far, so that it's going to be a chance of run out in the non-cycles and wide again. So a lot of extras conceded here by team of friends Makyar. They really started well, they progressed well, but they just lost the momentum in that 4th and 5th over. They conceded some lot of runs there, and the team was strongly back in the game. Mansho. Taif is a man who really played a good innings for his team. 333, the jersey number, the new batter. Ball stands up from out there, and looks like it's going to be they're looking for the second, but run out, and is gone. Well, it's a very close one, isn't it? Almost the batter will going to complete the second run, but the team managed to get the run out in the last ball of the over. That's it. Team will going to complete their innings with a very good runs here. Mansho, they started slowly, the progress slowly, but they finished well with some good acceleration of run rate. Especially the Taif and Elias played a very good innings, and they set a target of 40 runs. 40 runs target they set for team Friends Makyar, and wait and see how well Friends Makyar will go and get this total against team Mansho Talapadi. So highlight of the innings, Taif has scored valuable runs from his bat with the help of 1-6. He scored some runs, and Elias is also one more batter. He's got some runs along with Abu, who scored 7 valuable runs as an opener batter. Altogether, the contribution from 3 batters and some extras takes them into the very comfortable total now. 14 unbeaten by Taif with the help of 1-6. So that's it with the innings which is comes, and they completed a 5-over quota with a fantastic score, and scored at a rate of exactly 8 runs per over, and just under 8 runs per over. Now the required run rate for the team
friends Makyar exactly 8 runs per over if they wanted to win this match. We'll take a short break, and after a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone first time for this prestigious cricket tournament, BPL Season 5. And welcome, Gopi, and good morning to you. And looks like it's one of the most beautiful cricket ground here in Makyar, the Fizzer cricket ground. The first time in our commentary career, we are giving the commentary in this most beautiful cricket ground, Makyar cricket ground, and we are going to witness some very good matches today. And Makyar Premier League BPL Season 3 is absolutely one of the most prestigious cricket tournament and a well-organized cricket tournament, and hope this tournament will going to be a very successful cricket tournament. And good start in the morning itself with that beautiful weather condition. The team Mansho Talpadi, even they started very slowly, but they are finished well with some good runs, and hope this match will going to be a more interesting game of cricket because the Prince Makyar is also has got some very experienced players in the side, and we are hoping for some good battle between bat and ball between these two teams. It's over to Gopi, and welcome for BPL Season 3 for my friend Mr. Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से सतीश एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर बीपीएल 2025 के नाम पर इस वक्त शुरू हो चुका है, और पहला मैच इस वक्त खेला जाता हुआ मंशो तलपाड़ी और फ्रेंड्स मक्यार के बीच, और फ्रेंड्स मक्यार के सामने इस वक्त ठीक 40 रनों का लक्ष्य, एग्जैक्टली 40 द टारगेट इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ फ्रेंड्स मक्यार सेट बाय मंशो तलपाड़ी, and their innings is now going to start. Their openers at the crease are Hamid and Suleiman. Meantime, the bowler starts a fresh proceedings is Taif, and the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और फर्स्ट बॉल कम्स। ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, स्क्वायर लेग पर पहुंचती है, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ हमीद ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं। सुलेमान जो कि ऑफ द स्ट्राइक, सुलेमान ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, और हमीद इस वक्त सपना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज तैफ इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए, तो पहला और एकमात्र पावर प्ले उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर, और गेंदबाज इस वक्त तैफ दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंचे, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। काफी करारा प्रहार जरूर था, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं है, जब तक गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने को, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर, तो 2 रन बिना किसी नुकसान के। और जहां तक सवाल है इस वक्त तैफ का, तो तैफ एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट, अगली गेंद,
ये गेंद एक्स्ट्रा विकेट, फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम, किपलोर एट द लास्ट मोमेंट, गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज के हाथों में, माफ कीजिए विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज को वंचित करने के बाद और रन से इस बीच इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज तैफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई और विकेट कीपर ने आगे गिराकर स्लिप पॉइंट क्षेत्र पर गेंद को फील्ड कर लिया। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन्स इस बीच नहीं मिला, स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और तैफ एक बार फिर से तैयार। सुलेमान के लिए 3 नॉट आउट गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं, दाहिना तो बढ़ता विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकरा, एक बार फिर से अपील, लेकिन गेंद को छत तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त मिलेंगे एक लेग बाई के रूप में और लेग बाई के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। होता है फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार हमीद, जो कि इस वक्त सामना करते हुए और केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। और तैफ यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकली थी, सीधे पहुंची गेंद शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में और इस बीच वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 4 विदाउट लॉस, 40 द टारगेट इन 5 ओवर्स फॉर फ्रेंड्स मक्यार। और इस ओवर में अंतिम तैफ एक बार फिर से ऑफ स्टंप से, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी उन्होंने और वाइड का इशारा, लगातार दूसरा वाइड तैफ के हाथों से इस वक्त गिरता हुआ और एक वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर, 6 ऑन द बोर्ड एंड द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। He just got a problem with his length and line in the bowling department for Taif at this situation। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त इस ओवर की अगली गेंद का, तो तैफ इस वक्त गेंदबाजी पर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। तैफ रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लगभग गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंचे, लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद को फॉलो थ्रू में फील्ड करने में सफल। लेग बाई का इशारा अंपायर कर लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 7 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर बाय फ्रेंड्स मक्यार, चेसिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 40 in 5 overs। They are 7 without loss, 33 runs more now they have to score for victory in remaining 4 overs. That means in remaining 24 deliveries with a required run rate of exactly 8.25 runs per over। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए इलियास गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ फ्रेंड्स मक्यार की पारी में। निश्चित रूप से जहां तक 40 रनों के स्पर्धात्मक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है 5 ओवर में, इस वक्त फ्रेंड्स मक्यार को चाहिए एक बेहतरीन आरंभिक शुरुआत और क्रीज पर मौजूद हमीद और सुलेमान उस बेहतरीन आरंभिक शुरुआत को देने की पूरी कोशिश में इस वक्त लगे हुए और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का बीपीएल सीजन 5 which proudly organized by brothers मक्यार। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो इलियास गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 1 ओवर के पावर प्ले के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर तैनात, एक्स्ट्रा कवर पर डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास एक फील्डर मौजूद और डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के पास एक फील्डर तैनात। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इलियास फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद सुलेमान जो कि सामना करते हुए इस वक्त
इलियास। ये गेंद इस बार थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली, 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है इस वक्त बल्लेबाज ने, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जा चुका है। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, 7 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है, जबकि दूसरा ओवर राउंड का यहाँ पर शुरू हो चुका है। इलियास फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सुलेमान ने एक बार फिर से उनका सामना करते हुए 6 से 7 कदम उनका रन अप दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, डीप इन विकेट पर सुलेमान ने पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक कहना पड़ेगा। फ्रेंड्स मक्यार की पारी में लग चुका है सुलेमान द्वारा, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। ये दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश इस वक्त करते हुए अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी, और हमीद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है, और गेंदबाज इलियास गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग का मुआयना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार इलियास की गेंदों का, और इलियास दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। यह गेंद उछालना चाहा इस वक्त, काफी करारा प्रहार करना चाहता, लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस, और गेंदबाज इलियास एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद उछाला इस वक्त, गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर नीचे आते हुए गेंद के, और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद लगभग टॉप एज पर टकराए, और वाइडिस लॉन्ग ऑफ के फील्डर को 3-4 कदम अपनी बाईं और दौड़ जरूर लगाना पड़ा, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए बखूबी गेंद को लपक लिया इस वक्त वाइडिस लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर, और इसी के साथ यह विकेट नंबर 1 गिर चुका है। Hamid, the man dismissed, and the first wicket lost for friends Makyar. It's 8 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. We're just waiting for the number 3 batsman at the situation. Number 3 बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है। बहुत ही सुंदर सा विशाल सा फिजा मैदान इस मक्यार का, और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इन द नेम ऑफ BPL Season 5 2025 is now progressing, which is proudly presented by brothers Makyar, और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का, तो इस वक्त शाहिद का इस वक्त नए बल्लेबाज और सामना करने के लिए तैयार है इस वक्त इलियास की गेंदों पर। इलियास इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त, लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद विकेट कीपर हाथों को टकरा कर ऑटोमेटिकली गेंद इस वक्त स्टंप्सों पर टकरा चुकी है, लेकिन वहां पर बेल्स डिसलॉज नहीं हुए, और इस वजह से बल्लेबाज सुरक्षित था, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर। एक धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ फ्रेंड्स मक्यार, और इस बीच गेंदबाज इलियास एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज इस वक्त शाहिद का सामना करते हुए इलियास की गेंदों का। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बेहतरीन ओवर की समाप्ति, फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एन एंड फ्रॉम शाहिद, who conceded just 2 runs in this over after 2 overs. Friends Makyar still searching for the right track, just a single run conceded by Shaikh in this over, and a fantastic over came to an end from him. 2 overs completed, 8 on the board, 1 wicket lost, and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining. 3 ओवर का खेल बाकी, और 3 ओवर में चाहिए 31
बेहतरीन ओवर इस वक्त इलियास का समाप्त हो चुका है और जिसमें सिर्फ एक रन उन्होंने प्रदान किए और इलियास के इस बेहतरीन ओवर की बदौलत इस वक्त कुछ हद तक इक्वेशन कठिन इस वक्त होता हुआ फ्रेंड्स मक्यार के लिए। और देखना है कि क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज सुलेमान और शाहिक अपने टीम को मंजिल की ओर किस तरह अग्रसर करते हैं। तो गेंदबाजी शुरू करते हुए नौफल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है तो सुलेमान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और नौफल ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी करते हुए 18 गेंदें बाकी और 32 रन चाहिए। 32 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। नौफल ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त छोड़ दिया, ये देखते हुए कि ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रही है और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और इस बीच नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ऑन साइड पर उछाला सीधे फील्डर के हाथों में, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्डर ने इस कैच को बखूबी लपक लिया। ऑलमोस्ट फ्लैटर वर्षन पर गेंद आई थी उनकी ओर, लेकिन उतनी तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए गेंद को अपने दोनों हाथों में कैद कर लिया इस वक्त फील्डर ने डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर। और इस बेहतर कैच की बदौलत यहाँ पर विकेट इस वक्त गिर चुका है सुलेमान का और दूसरा विकेट इस वक्त खोने के बाद हालत काफी हद तक नाजुक से इस वक्त दिखाई देती हुई फ्रेंड्स मक्यार के लिए। 9 रनों पर 2 विकेट इस वक्त खो चुका है। दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन वापस लौट चुके हैं और एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी उनके लिए। नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पधारते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद का। तो नौफल यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। तो इस वक्त गेंदबाज जहां तक का सवाल है नफल नहीं आकाश है गेंदबाज जो कि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और महाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मुहाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। I request the extra player of friends Makyar as well as Monshu Talapadi please to be reported here to tell the player's name. और गेंदबाज ये गेंद है, इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडली हिट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। गेंद पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 अंकों पर। तो कृतिक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर इनटू द गैप एज वेल, इट माइट बीन कट ऑफ जस्ट इनसाइड द फ्रंट, दिस कुड बी ट्रबल, लेकिन थ्रो काफी वाइडर यहां पर गेंदबाज के पहुंच से बाहर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज शाहिक के बल्ले से और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और कृतिक एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शाहिक के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया, शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद और विकेटों पर उन्होंने निशाना जरूर दागा था, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ वाइड्स और वाइड के इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस वक्त गेंदबाज कृतिक जो है उनको इस वक्त टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। तो अंपायर ने इस वक्त इशारा किया है तीसरे अंपायर की ओर कि ये वाइड है या नहीं इसे परखने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर जो है क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन करने के बाद।
wide declared by the third umpire, and the scoreboard is now at 14 for the loss of 2 wicket with that couple of wide runs. और गेंदबाज कृतिक तो हर टीम के लिए एक रिव्यू यहाँ पर सिर्फ एक रिव्यू दिया जाता है और यहाँ पर अपना एक रिव्यू यहाँ पर ले चुके हैं। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त कृतिक का, तो कृतिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को उछाल दिया इस वक्त 4 रनों के लिए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। ऐसा कहना पड़ेगा डीप बैकवर्ड स्कोर लेकर डीप फाइनल के दरमियान जो खाली क्षेत्र है उस क्षेत्र से गेंद को इस वक्त उछाला था। फ्रंट फुट पर जाने के बाद कुछ हद तक स्ट्रेचिंग करते हुए घुटनों के बल बैठते हुए गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर पुल कर दिया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए मुहाज ने। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से चंद और चौकों की जरूरत है यहाँ पर कमबैक करने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स मक्यार के बल्लेबाजों को। तो इस वक्त काफी लंबा ओवर कृतिक का यहाँ पर प्रगति पर और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मुहाज इस वक्त सामना करते हुए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट कृतिक की गेंद, यह गेंद एक बार फिर से ऑन साइड पर उछाला 4 रनों के लिए। फैंटास्टिकली स्ट्रक और आई मस्ट से विद दिस 2 couple of boundaries they are back in the game. Fantastically struck came from the bat of Muhaz. इस बार भी फ्रंट फुट पर जाते हुए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हुए घुटनों के बल कुछ हद तक झुकते हुए गेंद को ऑन साइड पर पुल कर दिया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 22 on the board for losing 2 wicket and a fantastic 2 strikes came from the bat of Muhaz in the last 2 successive deliveries. और इन 2 चौके के साथ वो यहाँ पर फ्रेंड्स मक्यार के उम्मीदों को इस वक्त बरकरार रख चुके हैं। तो अब इक्वेशन की ओर अगर नजर फिराया जाए तो 13 गेंदें बाकी हैं, 13 गेंदों पर 18 रनों की दरकार। 18 runs to get from remaining 13 deliveries। और मुहाज इस वक्त काफी आक्रामक नजर आते हैं, 2 गेंदों पर लगातार 2 चौका इस वक्त झड़ चुके हैं। और कृतिक अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मुहाज के लिए। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए। 3 बाउंड्रीज इन ए रो, हैट्रिक बाउंड्री स्कोर बाय मुहाज। और इन 3 चौकों की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा दे आर स्ट्रांगली बैक इन द गेम नाउ। 26 on the board and now equation seems to be much easier for them. 14 runs required from last 2 overs, that means in remaining last 12 deliveries। 12 गेंदे 14 रन चाहिए और 3 बेहतरीन हैट्रिक चौके जो मुहाज ने लगाए हैं, उन 3 हैट्रिक चौकों की बदौलत इस मैच में शानदार वापसी कर चुका है यहाँ पर फ्रेंड्स मक्यार। 18 रन स्कोर फ्रॉम द लास्ट ओवर, 18 रन अंतिम ओवर में बने और इस ओवर की बदौलत अब मैच लगभग बराबरी पर आकर रुक चुका है। चिम्मी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करते हुए शाहिद का। और जहां तक का सवाल है इस वक्त इक्वेशन का, तो 12 गेंदें बाकी हैं, 14 रन चाहिए। मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर चिम्मी तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई काफी दूर दूर तक पहला क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्कोर लेग इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास तैनात। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। गली शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट इस बार कहना पड़ेगा कवर पॉइंट और मिड ऑफ इस वक्त मौजूद। सिली मिड ऑफ पर एक फील्डर तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर चिम्मी दाहिने हाथ राउंड द विकेट
यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर तेज, इस बार निशाना टकरा था तो निश्चित रूप से बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर इस गेंद पर मुहाज बाल बाल बचते हुए एक रन बाई के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका है और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 27 रनों पर, 27 ऑन द बोर्ड. दिस इज द मैच नंबर 1 ऑफ दिस prestigious cricket tournament. BPL season 5 2025 is now progressing here, which proudly presented by brothers Makyar. और दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद उछाला इस वक्त मुहाज ने डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मैच फ्रेंड्स मक्यार लुकिंग राइट ऑन टॉप. What a fantastic batting display coming from Muaz. इस बार ऐसा कहना पड़ेगा, just got that one right from the middle of the bat और गेंद को खूबसूरती के साथ उछाल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. साइम 11 ಹಾಗೂ ಸಿಜರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. इस बार हल्के से गेंद को चिप कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर मुहाज ने एक रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर, 34 on the board for losing 2 wickets. What a fantastic batting performance coming from Muaz. He is batting on 20 now including 3 fours and 1 6 और इस बीच चम्मी गेंदबाजी करेंगे शाही के लिए. यह गेंद बेहतर गेंद इस वक्त इस बार रनआउट का खतरा और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. He wanted unnecessary single at this situation. No response came from the non-striker and batsman और डायरेक्ट हिट इस वक्त लगता हुआ विकेट कीपर का स्टंप्स को बिखेर कर ले जाता हुआ और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. शाही is backing to pavilion after being playing a good supporting role and third wicket loss for friends Makyar at this situation is 34 for the loss of 3 wicket. ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೈಮ್ 11 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. मुजम्मिल नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. जहां तक का सवाल है इस वक्त मुहाज और मुजम्मिल दोनों भाई इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो चम्मी इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई लॉन्ग ऑन फील्डर को कुछ हद तक थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ड्राइव कर दिया सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करके थ्रो करे फील्डर गेंदबाज के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 35 रनों पर, 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. 7 balls left, 5 runs required. ये गेंद हल्के से सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, हल्के से गेंद को बल्ले पर आने दिया और गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग पर एक रन के लिए मुहाज ने. 36 on the board and 4 overs completed, 4 runs required from the last over, that means from the last 6 deliveries. So Muaz batting on 21 at this situation. He playing a sheet anchor's role at this situation for his team friends Makyar. निश्चित रूप से उनकी सब बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत यहाँ पर फ्रेंड्स मक्यार का तख्ता अभी भी भारी लगता हुआ उनकी पारी के अंतिम ओवर में अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट, उनके निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. 6 balls 4 runs required and the last over of the match is now going to begin. देवी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और देवी किरण जो कि जहां तक का सवाल है बल्लेबाजी का तो मुहाज जो कि एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. मुहाज 21 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए. मुहाज बैटिंग ऑन 21. फर्स्ट बॉल देवी
फुल टॉस स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को स्कूप कर दिया इस वक्त 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ फ्रेंड्स मक्यार registered their victory in the last over with 5 balls left against Moncho Talapali in the first match of this prestigious cricket tournament BPL season 5 2025 which proudly presented by brothers Makyar और इस विजय के साथ वो इस यहाँ पर परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका है. They bagged the complete points after defeating Monso Talapadi in the first match by brothers Makyar and with that victory, thrilling victory in the last over, they bagged the complete points. So match number 1 of this prestigious cricket tournament BPL season 5 2025 has been came to an end और match number 2 इस वक्त यहाँ पर शुरू होगा यहाँ पर चंद लम्हों बाद. तो अब तब तक एक छोटा सा ब्रेक अब लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त समीर मलार के साथ अंग्रेजी में जब यहाँ पर अगला मैच शुरू होगा. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. So man of the match of this match award goes to the man batted brilliantly, scored 25 in just 25 he scored in just 8 deliveries with a strike rate of 312.5. He edged the man of the match. 25 of 8 balls with a strike rate of 312.5 scored by Muhaz, and because of that fantastic knockoff for 25 runs of 8 balls he edged the man of the match. I request Muhaz please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests, Mr. Zubair. I request Mr. Zubair to please distribute the man of the match award for Muhaz for his fantastic knockoff for 25 in just 8 balls. And now we'll be back right after short break with Sameer Malar. Thank you. Dhanyavad.
So good morning all the cricket lovers. So we're in the day one, in fact, in this most prestigious cricket tournament, Sim 11 taking against Caesar Rockers. Sim 11 won the toss and they elected to field first. Akash, Aku. So Akku is the bowler and Irshad and Salim Madur to opening batter for Shizad Rockers. First ball. Dot to start here from young talented Akku from that King Sports cameraman in bowling over the wicket to right-handed batsman Irshad. Went for these favorite slog sweep. Missed the line completely. Good start here for team Sim 11. Very good start. Good serve for young man Akku. Oh, this time he connected properly. Couple of bounces into the deep mid-wicket boundary for 4. Irshad his favourite shots. He tried couple of times behind the square on the onside to play the shot. This time he connected very well. It went in front of the square on the onside into the deep mid-wicket for 4. With the help of that boundary, 4-4. Caesar Rockers and Irshad. 3 ball completed, 4 without losing any wicket. Once again went for the similar kind of shot. Little bit uphill came, ball just sliding down the leg side. Definitely leg by, yes it is. Leg by signal from the umpire Munirulal. Sriraj Kumpala, one more umpire, square leg umpire for in this match. With the help of that extra run score now 5. So heartily welcome to the finest commentator in South Canada district, Satish sir and Gopi sir. First time they are giving commentary in this wonderful Fizza ground, Makyar. This time Salim Madur, his favourite shot. Very strong on the onside of the wicket, especially. Look at that. That shot, favourite shot of Salim Madur. Oh, this time Irshad is best. What a lovely shot that. Absolutely magnificent shot from Irshad. Brilliant. So end of the over number 110 without losing any wicket. Excellent start here for Shizar Rocker. Rocking start from Irshad. Couple of boundaries. One in front of the square, one behind the square.
This time tried to go for the sweep the ball. Chance of run out. Appeal came that one, but batsman reaches home. Better throw required. Directed. Oh my goodness. Irshad departed. What a fabulous directed that one. One stamp to aim and he's gone. Oh, this time in the air. Just out of the reach of the fielder at mid-off. It went to the deep extra cover where the fielder collected the ball. Batter had enough time to take that single. At one moment in the air for some time, but fielder tried his best at mid-off to stop that one, but he could not do that. Nevertheless, he is off the mark. Shamir. So with the help of that single, score now moves on to 13 for the loss of 1 wicket. What a directed that one. Absolutely magnificent directed from the fielder at short mid wicket. Unlucky dismissal sometime for the wicket because that cross angle, one stump to aim. That's a fantastic run out. This time once again, he is in action. Can he get one more wicket? No, this time empty hand he has attempted. Ball not in a hand. If directed, Salim Maduru may be in a trouble, but they completed that run. Good running between the wicket in the end. They completed that risky one. Score now 14 for the loss of 1 wicket. Over number 2 in progress. 3 ball completed. Oh, this time reverse it very well. Long chase for the field at that 2-man converge. Oh, football goal. Oh, cricket and football, we watch it together. That into that post of dugout. But Paul tried it in the boundary line for 4. He tried his best to stop the ball. He stopped by one leg, pushed by another leg. Ball just went into the fence for 4. Last 2 ball remaining. Got a good shot from Shamir using the pace of the ball very well. Just play the reverse sweep very effectively in between the 2 fielders, short third man and gully. Ball races into the fence for 4. Once again, went for the reverse sweep. This time he played in front of the square in the offside and collected that single with the help of that single. Score now moves on to 19. Last 1 ball remaining. So far a good going here for team Shiza Rockers. 19 for the loss of 1 wicket. 5-over game, remember. This is a batting paradise, especially once after 11 a.m. But morning couple of matches definitely help for the bowlers. That historically happening in this ground. Salim Maduru just played the normal sweep just behind the square into that short fine left field. Stop that ball. Meanwhile, batter had enough time. Excellent start here for Shiza Rockers. Over number 2 completed. 20 for the loss of 1 wicket. Man got out a shot, run out at the non-striker's end. Over number 2 completed. 20 for the loss of 1 wicket.
So we need to remember our donors actually. Man the match for every match donated by Shaukin DXB. Best fielder donated by Shakir DXB. Catch of the tournament Ubbi DXB. Best bowler donated by Ubbi DXB. Best batsman donated by Ubbi DXB. And also best wicket keeper donated by Ubbi DXB. In fact, Ubbi supported very well for in wonderful cricket tournament. First trophy donated by Safwan DXB. Second trophy donated by Vintage Street. Thank you so much. First cash TM Ibrahim. Second cash Amir Makyar. Thank you so much. Your contribution and support are highly appreciated for in this wonderful cricket tournament. Imran Senior brought into the attack. Lovely ball just played on the offside wicket. Good placement. A long chase for the fielder. Good fielding. Good return. But he could not be able to stop the batsman to take in that 2 run. With the help of that 2 run, score now 23. 23 after the completion of 2.2 over. This time just played a vacant area. No one at mid on into that long gone. Good fielding that. Very good fielding. Last 3 ball remaining. 24 24. Oh, this time lovely shot, brilliant shot, equally well fielding, good fielding from Akku near the boundary line. Certain boundaries say that brilliant fielding, absolutely magnificent fielding that. Yes, clearly in a replay you can see that saved by the fielder. So with the help of that 2 run, score now 26 on the board. This time what a lovely shot behind the square in the onside. He's a very good player, especially on the onside the wicket, Salim Madoru, with the help of that single. Score now 27, last 1 ball remaining. Sanjay played back to the bowler, directed required, he missed the ball and completed that single. Shamir and Salim Maduru. Over number 3 completed. Good going here. 28 for the loss of 1 wicket. So Asif brought into the attack for the penultimate over at the first innings. So far good going here for team Caesar Rockers against Sime 11.
28 for the loss of just 1 wicket. Archie SR now brought into the attack from round the wicket. From that against Bob. Beautiful ball. Lovely ball. Shamir missed that one. Dot to start here. So dot to start here for Asif. Try to go for the sweep shot. Try to work on the offside wicket with that sweep shot, but ball at the backside of the bat. So they collected single with the help of that single. Score now moves on to 29. Fourth over in progress. So far good going for Shiza Rockets. Until Salim Madur is there, definitely they feel comfortable. This time just pushed the ball into that deep extra cover and collected workable single. Good over so far from Asif. 3 balls, just 2 runs conceded. Score now 30 for the loss of 1 wicket. Good bowling in the penultimate over from Asif. Went for the expansive drive. Once again dot ball that a little bit over pitch delivery in its last moment. But lucky for the bowler. Batter missed that one. Wicketkeeper collected cleanly behind the stump. No chance of any run. 2 balls remaining of the excellent over. That waiting for the umpire. Look like a wide outside off stump. Yes, it is. 31. 2 balls still remaining. So his shot looked very strong in that first over. Couple of boundaries, but unfortunate dismissal. Just played this time in front of the square. Bowler himself for a shot toward the ball. Collected that one. Meanwhile, batter had enough time to take that single. 32. Last 1 ball remaining of the penultimate over. Wicketkeeper missed that ball. Maybe slight inside edge of the bat. Thirty-three, 33 4 over ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ after the completion of 4 over 33 for the loss of 1 wicket. At least 12 run in the final over. Definitely good score, I feel. Who will go into ball that final over? There is a mini conference between the players of the fielding team. Who will go into that last over? Excellent over from Asif, batting 1 wide ball. He bowled really good penultimate over. Nizam, the favorite cricketer, one of the great cricket family actually. All his brothers are very good players. Good bowling, good leg spin started here. Nizam is a fantastic all-rounder from the side of Saim 11. So with the help of that single score, now moves on to 34 for the loss of just 1 wicket. 5 balls remaining against leg spin. Batsmen definitely try to take the chance. So this one just played in front of the square in the onside and collected that single. With the help of that single, scored moves on to 35. So this time just played in front of the square once again into the deep square leg, and Asif collected the ball. So far a good leg spin over from Nizam. 3 singles only came in this over. Score just showing here 36. 3 balls remaining. That far away outside of the man, white signal from the umpire.
Oh, this time edge of the bat, fielder there, and he bought the catch. Salim Madu departed, tried to go for the cross, bad shot, edge of the bat, good running catch from the fielder at long on. So wicket number 2 back to the pavilion. Last over in the progress, excellent bowling so far from Nizam with his leg spin. Lot of control with his leg spin actually for Nizam, his favorite home ground. So left hand Rashfaq into the middle. In fact, Shamir, the batter, got out, not Salim Madur. Shamir went for the big shot. So this is going to be good battle. Two brothers actually. Nizam versus Ashfaq. Younger brother versus elder brother. Two ball remaining of the innings. Oh, beautiful bowling. Lovely ball from Nizam. Exceptional leg spin bowling. Is on a hat-trick. Last one ball remaining of the innings. Even though Cesar Rocas did not lost many wickets, but they could not be able to find the big shot. On the big name Ibrahim in that side 11 with jersey number 01 at the square leg inside the circle. Last one ball remaining. Brilliant leg spin bowling. Absolutely magnificent leg spin bowling from Nizam. Lot of protection on the onside, especially in front of the square. Deep mid wicket, curve corner and long on. Long off and deep cover on the offside of the wicket. Short extra cover, cover point, short third man and short mid wicket. This is a field placement for the last ball of the first innings. Good delivery, just taken the outside of the bat and taken a single. This is the most prestigious Brothers Premier League 2025. We are witnessing here 4 teams participating in this most prestigious cricket tournament. 38-39 is the victory target to win this match. 5 over, 39 is the victory target to win this match. Yes, before going to start the exciting second inning, 39 is the victory target to win this match. For that, I heartily invite one of the finest English commentator in South Canada District, Satish Salyan sir, will join the commentary box once again. Heartily welcome sir for in this most prestigious Brothers Premier League 2025. Over to Satish Salyan sir.
Thank you very much, Samir Malar. The match number 2 is in progress of this prestigious BPL Season 5, which is proudly presented by brothers Makyar in this most beautiful Fiza Makyar cricket ground. And everything is ready here for the chasing and the total score, which is 39. That means 38 and 39 is the target for team Sime 11 against Caesar Rockers. Highlight of innings of Caesar Rockers and a good partnership for the opening wicket between Irshad and Salim for the first wicket. Then afterwards Salim and Samir is anchor the innings. They got a very good partnership and altogether they scored 38 valuable runs in the stipulated 5 overs. It seems to be a good total to depend. For that they need to bowl well and field well, and wait and see how well the team Sime 11 will going to get this total. And 12 runs each from Salim and Samir, the double figure the batter has got, and Irshad has scored 8 valuable runs and altogether some contribution in the some extras as well, and altogether 38 runs which is scored. Just waiting for the opening batters of Sime 11, and opening batters slowly walks towards the middle. The fantastic weather condition. The match number 2 is in progress. Time is exactly 11 o'clock, and the 4 teams were participating in this cricket tournament, and 4 teams will go into play the 3 matches in their league stage matches, and top 4 will go into enter into the semi-final. Of course, all the teams, in fact. Because the top team, the one team will going into that finals straight away, and the competition for another 3 places, and wait and see which team will going to get the place. And here is the first ball of the over number the first, and the power play is on right arm over the wicket, and first ball itself played it cross batted short. In fact, it was reverse sweep and played it down to short third man region, short gully region, in fact, for a single by opening batter Ibrahim is off the mark, and 1 without loss of an wicket. Sime 11 just need to chase 39 in the 30 deliveries, excluding wides and no balls. Short fine leg, short square leg in front of square, one fielder at mid on, deep mid wicket, the fielder down at deep long off, short cow point, short backward point, played it nicely in the gap between cow point and backward point, and before that backward point fielder will going to run across his right field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With the single, both the batters are off the mark, 2 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Bowler is in action, Akash. This time catch it is a call. Oh, that is a pretty ordinary attempt there by the fielder, isn't it? Ball is almost looks like will going to carry to that short third man fielder, but little bit late movement by the fielder. Ball just landed safely between gully and short third man. So 1 run scored between that, 3 without loss of an wicket. Quite dangerously played there by Ibrahim. Just wanted to guide the ball down to third man, but ball is absolutely taken aerial route. And luckily they didn't carry it to the fielder. Over the wicket, Akash. Pass umpire Munir. Lovely shot. Beautifully played it off the back foot down to deep cow point region. Its ball is in the off volley outside the line of off stump, and batter has got all the time in the world to drive that one up nicely down to long off region for a single. With that single, Skobanda moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Steady start from the race to opening batters of team Sime 11 against team Caesar Rockers. Akash again, 5th time in this over. 4 singles in 4 deliveries. And the batter will going to take the strike is Ibrahim. Again drives that one nicely, just right off the bowler. The mid-on fielder is up in the circle, so it's ample time for the batter Ibrahim to complete the single. 5 without loss of any wicket. 5 singles in 5 deliveries of Akash over. Shivab is a new opening batter. Will go into face. Shivab again looking for the expensive drive. Good piece of fielding there by the fielder, but not good enough to stop
The single ball is just deviating, isn't it? The good fielding actually by the fielder. Once it looks like he's misjudged that one, but he really kept the eye on the ball till the last moment. Fantastic work, but single taken, 6 singles in 6 deliveries of the first over, chasing a total score of 39 to win this match. That means in remaining 24 deliveries, they have to get another 33 runs to win this match. 24-33, the difference between run and ball exactly the 9. Of course, in present cricket, this can be manageable, and just under 8 runs per over is the required run rate. Now, because of that very good first over, the power play over, run rate, asking run rate is creeping up. And well, after that power play forwards, the field set, we can see that spread out so many bodies out there in the deep. The fielder going back to deep square, like one fielder behind the square, and one fielder at mid wicket and long on. The 3 protection in the deep in the onside region. 2 in the offside, that is long off, and a deep cover point. That might be the backward point, might be the only for the reverse stroke. In the present cricket, each and every batter loves to play the reverse stroke, so that they kept the fielder in the deep backward point region. Short third man gully, short mid off. The inside the ring, the one fielder down at short mid wicket, and one at short third man. And altogether 4 men in the 5 men in the onside and 4 men in the offside region. Wicket keeper well up to the stump, Irshad. Oh, lovely delivery indeed. Almost targeting in the midland leg stump in the negation. The batsman Ibrahim looking for the expansive drive in the negation, but beaten by the pace in the negation. Didn't got that much of timing enough. Just wanted to force the ball, and ball which is not really having a good part of the bat, inside of the bat. Second time in this over. Across the line, extra bounce in the negation. Defeats the bat of Ibrahim. The ball which is came along the carpet while the time of batter is going for the slog sweep shot. Shiab misses that one from his bat, and the wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Mushfiq. This time catch it is a call, but that is going and going for a long way. It's a huge one. Shiab just breaking the shackle as well as in the direction of the wind. He got that one right from the middle of the bat. Fantastically struck. Ball is in the slot. He just have to deliver that one right from the middle of the bat, and the wind will going to do the rest. And that ball gone many miles out of the boundary line. Huge 6 came from the bat of Shiab. So with that 6, Cobra jumps into 12 on the board, without loss of any wicket. This is what I'm talking about. The present cricket is all about. The 1 over is good enough for the chasing team to back in the game. And a very difficult game for the bowlers, in fact. With the small format of the game, very difficult to survive from the big strokes. It's 12 without loss of any wicket. Here this time, no ball. Looks like ball which is after hitting his left foot. And no ball called by umpire straight away. Even overstep as well. And first it was an overstep, then ball is gone outside the pitch. But first, in fact, which is overstep called by umpire Sriraj. So free hit delivery for the batter. The bowler is in trouble. 13 without loss of any wicket. Coming down the track, looking for the expansive drive, inside out cricketing stroke, deflected from his leg. This time Mushfiq survived from that free hit delivery, which is almost the batter just wanted to play the inside out cricketing stroke, and misses the bat, and the ball deflected from his leg. 1 run scored in the form of leg by 14 on the board. Drives that one. Oh, the fielder is at short mid wicket region, tried to stop that one, just moving to his left, but just a single here for the batter Ibrahim. With that single score, but Namuzan to 15 on the board for the loss, without loss of any wicket. Good going. (16) on the board. Little correction in the score. Oh, what a take from Ishad. Fantastic take, isn't it? And a wide throw coming from the field. Ishad is a very experienced campaigner, one who represents for NM Cricketers Bangalore for a long time. But it's an expensive over. In fact, it's comeback ball for the team
So 2 overs completed at 16 on the board. 8 runs per over run rate progressing here. So very good foundation laid by both the opening batters. Ibrahim not only is a player of the side, but he is the owner of the team Sim 11 as well, and one of the big supporter of this prestigious BPL season 5, and perfect ambassador for cricket. And thank you very much for him on behalf of organizers for his contribution for the success of this cricket tournament. Ashfaq brought into attack left arm. Switch it, played it into the hands of Deepak Cow Point. Well, nothing wrong with the stroke, but something wrong with that placement, isn't it? Sometime, most of the time we will see that the batters playing the switch it in the square of the wicket. Because of that low full toss, batter have to play that shot. No other option. The full toss, low full toss, and Sia played it one straight to the hands of Deep Cow Point fielder. And that's the end of the innings of Siab. After scored a valuable 10 runs with the help of 1-6, he is back in the pavilion. Now it's the right time for the team to back in the game. Caesar Rockets, absolutely they got opportunity here to back in the game, because danger man Siab is back in the pavilion. The new batter in with the jersey number 10, going to face Akhu is the batter, and that ball is just passing between his legs, so that no chance of to call that wide. Right call from umpire Munir, and score remains on 16 on the board. So far it's the best over. Ashfaq bowled 2 very good deliveries in this over, and bowling left arm round the wicket. Reverse sweep comes into play to pick the single down to a short extra cover region for the batter Akhu. He got his first run, and the first run of this over as well. It's 17 on the board. 22 more runs required for the victory in remaining 15 deliveries. This time Ishad even is fumbled in the first attempt, and quickly he's got the ball in his hand, and the batter is out of the crease. The wicket number 2 is back in the pavilion. Then all in sudden team Sim 11, they lost their momentum what they got in the second over, and once it looks like they are back in the game. But fantastic over is in progress from the point of view of team Caesar Rockets. Ashfaq back in the pavilion. Ibrahim back in the pavilion at the correction, and Ashfaq is the bowler. Got fantastic over so far. The new batter in is jersey number 12. The 2 fresh leg now in the middle. Rifaz is the new batter in. Straight to the answer fielder. My goodness, you can't play that stroke. We are playing a first delivery of your innings, and you are just trying to play the unorthodox cricketing stroke and pays the penalty for that. The wickets are tumbling like a house of cards here of the team Sim 11. And what a fantastic over is in progress. 2 wickets in this over. Altogether 3 wickets. 2 wickets in the account of Ashfaq, 1 in the form of run out. It's 17 for the loss of 4 wicket. 3 wicket. Jersey number 2. The new batter in. Ashfaq turning out to be a great over. Left arm. Balls, one more great delivery indeed. That defeats everyone. Beautifully bowled. Fantastic over which comes to an end. There might be little bit opportunities created for the stump out, but a great over there from Ashfaq, and just a single run conceded and picked up 2 wickets. 1 over, no maiden, 1 run, picked up 2 valuable wickets. That turning out to be a match changing over from Ashfaq. Now 17 is the score. 22 more runs required for the victory in 2 overs.
The run rate required is 11 runs per over. Seems to be a little bit difficult one, but difficult routes often leads to beautiful destination. And do or die situation here for the batters of Sim 11. Desperately required 2 to 3 big hits here for the team if they wanted to back in the game. The cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. First ball ball by Irshad, the inside edge of the bat. And before the fine leg fielder will going to run across to his left to field the ball inside edge of the bat off the batter with the 1 run taken with that single score, but moves on to 18 on the board. Irshad, the experienced campaigner, the good all-rounder, scored 8 valuable runs and did a good job behind the stump as well. That one more protection is given in the onside region. This time again, wicketkeeper missed it. Short fine leg fielder is also missed it. Leg by call by umpire, deflected from the leg of the batter, so that one more extra been added total with extra score, but now moves on to 19 on the board. 19 for the loss of 3 wicket. Irshad, right arm over the wicket, wanted to go for the switch, it missed it completely. Wicketkeeper missed it. Chance for run out, and as rightly said umpire, it's not out, and by call by umpire with that extra score, but moves on to 20 on the board. Still long way to go. 19 more runs required for the victory. Just like I mentioned about needed 1 or 2 big shots in each and every over if they wanted to win this game. Irshad knows that the match is not yet over. Have to get some good deliveries. This time far outside the line of off stump. Changing his the bowling action in the negation. Try to ball outside the line of off stump, and he just misses the line with that extra score, but moves on to 21 on the board. This time appeal for leg before wicket, but I think the ball will go into hit him into the back foot. Leg by call by umpire. No leg before wicket, so that no question of appeal for the leg before wicket. One more run with the addition of that single score, but moves on to 22. Again, they wanted to come back for the second, but very difficult, and Irshad will not going to bother about their singles. You know exactly how to restrict that big shots. So far it's a quite over is in progress. It's 23 on the board. 16 more runs are required for the victory. Irshad. Balled him, cleaned him up. So that's it now. 1 over remaining, last over remaining. The team Sim 11 required 16 runs to win this match. 16 required from last over for Sim 11. One more good over there from Irshad. Excellent bowling performance. .16 to get from last over, and the batter out there in the middle, Aku is a man, the young full batter for the side. The candy is on cycles, and a new batter came into middle. So last over, first ball. Oh, what a shot! Magnificent struck. Just like I mentioned about, he is a man, Aku is a very talented young man. And he played it exquisite, lofted on drive. Right from the middle of the bat. Nothing wrong with that line of the ball, which is on the middle stump. But the do or die situation here for the teams. Sim 11, and that 6 will brought strongly back in the game. It's 29 on the board. That means 10 required from 5 balls. Again he lofted and straight to the... Oh, he dropped the catch. Well. Hakku, now they're coming back for the second. Really, the Caesar Rockers are
dealing with a bad time, isn't it? Not only drops the catch, but one more opportunity is created for the run out. Again the wide throw coming from the fielder. Now 4 balls and 8 runs required for the victory. This is what the beauty of cricket is all about. You can't say anything in cricket until you are going to ball the last delivery. Who will going to win this match? Akku's man is the battle is on from his bat to take his team safely to home. 4 balls 8 required. Salim round the wicket, right arm. Balls, pressure. The pressure straight away into the bowler. The first time you are seeing 7 required for 4 balls. Salim have to re-ball that one. What a match. Fantastic match is in progress. Salim again, third time in this over. Reverse stroke comes into play. They wanted to come back for the second. Yes, Dad, I misfield there by the fielder. Now have a look at the fielding team. First time they are feeling the pressure. Easy fielding for that extra cover fielder. Misfielded it. That was the pressure. Surely the pressure. This is what the cricket is all about. Handling the pressure is very important. Now 5 required from 3 balls. It's going to be anybody's game. Akku, the man, can be a hero in this match, but job which is not yet over. Salim, right arm over the wicket. Akku lofted, and it's going to be a huge one. He finished the match in style for his team. What a fantastic batting performance here from Akku. Unbelievable. 16 to get from last over, and man finished the match is Akku. Definitely will going to be the hero for the next day in the social media, surely, because the way that he's been batted is absolutely astonishing. The brave and gutsy batting, and that takes the match away from the opposition, and a drop catch by the fielder at deep long on. It might be the big miss. It is definitely going to be a huge miss. Not only he dropped the catch, but he dropped the match for his team. And this is what cricket is all about. You can't say anything in cricket. And a fantastic victory. And man of the match, undoubtedly the man is changing the complexion of the game. Scored 17 valuable runs. It is certainly is Akku is the man. It deserves the man of the match award. I request Mr. Akku, please collect your man of the match award in our main stage from our chief guest. ಸೈಮ್ 11 ತಂಡದ ಅಕ್ಕು ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮ್ಯಾನ್ಶೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈಮ್ 11. The same Sime 11 going to take Manshaw. I request the two teams captain please be reported here immediately for the tossing ceremony. And before that match will going to start here. The match number 3. I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. Thanks a lot.
So Sime 11 after 1 toss, they elected to field first.
धन्यवाद सतीश. So the match number 3 of this prestigious cricket tournament, BPL Season 5 2025 is now going to start. Mancho Talapadi versus Sam 11 Makyar. तो Sam 11 ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मानशो तलपाड़ी का, तो आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त मौजूद चम्मी और सफवान, और अक्कू इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए. तो ओवर की पहली गेंद लेकर अक्कू इस वक्त तैयार. चम्मी सामना करते हुए. दाहिने हाथों पर विकेट. पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद इस वक्त, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका. एक रन बिना किसी नुकसान के. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त मानशो तलपाड़ी का, तो इस वक्त उनके दोनों सलामी बल्लेबाज मौजूद. गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन की दिशा में. नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को इस वक्त मिड ऑन पर फील्ड किया जा चुका है. और जहां तक रनों का सवाल है तो रन्स इस वक्त नहीं मिला. तो सफान जो कि नॉन स्ट्राइक पर मौजूद थे काफी आगे निकल आए थे, लेकिन एन मौके पर अपने क्रीज पर वापस लौटते हुए, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला. तो अक्कू फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथों पर द विकेट. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, दो फील्डर सिर्फ 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. और ओवर की अगली गेंद लेकर अक्कू इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए. और इस बीच रन के लिए दौड़ पड़े, और रन तेजी के साथ इस वक्त पूर्ण करते हुए. 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और अक्कू इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार. अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त गेंदबाज अक्कू इस वक्त तराशते हुए, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद. इस बार पैरों पर गेंद टकराई, और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर. 1 रन का इजाफा हो चुका लेग बाई के रूप में. और लेग बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. और अक्कू ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस बार गेंद को उछालना चाहता, लेकिन अंतिम क्षण में ठीक तरह से गेंद को उछाल नहीं पाए. और जहां तक रनों का सवाल है, 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके. 6 ऑन द बोर्ड, ये टू लूज एनी विकेट, एंड दिस इज द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस ऑफ देयर इनिंग्स. और इस बीच अक्कू गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. इस बार लेफ्ट एंड इनटू द हैंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर फील्डर. और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका. जस्ट ट्राइंग टू गो ऑन फॉर अ बिग वन दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड, एंड द बॉल गॉट इज ऑफ द टॉप ऑफ द बैट. The ball straight went into the hands of extra cover fielder, and he made no mistake. So that is the wicket number 1, 6 for 1 in the over number first, and the man Safwan departs. Six. तो अब वो इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अक्कू की गेंदों का. तो अक्कू अब्बू के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. एक्स्ट्रा क्विकर मच स्ट्रेट लाइन, और गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार अक्कू गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए.
इस बार गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑफ पर एंड फील्ड क्लियर करते हुए, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाते हुए, और जहां तक सवाल है पीछे की ओर दौड़ लगाते हुए बेहतर फील्डिंग के जरिए गेंद को जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड अ मिक्स स्टार्ट फॉर Manshu Talpadi. It's 8 for the loss of 1 wicket after the first over. Niaz, the bowler, is now brought into the attack. The first session of the match number 3 of this prestigious cricket tournament, BPL season 5, which proudly presented by brothers Makyar, is now progressing here. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नियाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए, और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज नियाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की पहली गेंद, रिवर्स शॉट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल. दिस इज एन एब्सोल्युटली एक्सक्विजिटली स्ट्राइक with a twisted bat at the last moment by the right-handed batsman. रिवर्स शॉट के जरिए खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त उछाल दिया, गली फील्डर की दाईं ओर से गेंद इस वक्त होते हुए सीधे डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज चिम्मी के बल्ले से, और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और नियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद एक बार फिर से, दिस टाइम इवन स्ट्रेटर. Just wait for the umpire decision. It's a biggie. This is an outstanding strike. He just got that one right from the twisted bat and lofted that one in a style over a deep backward third man fence. Much straighter comparing to the previous shot. And he's got a maximum for that. And with that 6, the scoreboard moving up to 18 now for the loss of 1 wicket. 18 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका, और बेहतरीन छक्का इस वक्त झट चुके हैं चम्मी, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और नियाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए चम्मी इस वक्त काफी आक्रामक रवैया यहाँ पर अपनाए हुए, और नियाज अगली गेंद, यह गेंद ड्राइव कर दिया. इस वक्त गेंद पहुंची मिड ऑन फील्डर के हाथों से, गेंद चूकी इस वक्त लॉन्ग ऑन पर गेंद को बैकअप किया जाता. 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 19 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और नियाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकली, बल्लेबाज के पहुंच से बाहर. वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. ब्रदर्स मक्यार ने शानदार तरीके से श्रृंखला का आयोजन किया है बीपीएल सीजन 5 2025-2025 के नाम पर. यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर इनटू द गैप एज वेल. ओह ब्रिलियंट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग मेड बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर. अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए इस वक्त गेंद जैसे ही सीमा रेखा को पार करे, अपने बाईं ओर झुकते हुए गेंद को ढकेल दिया खूबसूरती के साथ, और बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच. तो इस वक्त जहां तक सवाल है, देखना यह है कि फील्डर जो खड़े हुए थे वाइडिस लॉन्ग ऑन पर, क्या वो सीमा रेखा के अंदर गेंद को ठीक तरह से ढकेल चुके हैं या नहीं. तो यहां पर परिशीलन करते हुए इसका, तो अंपायर ने इस वक्त तृतीय अंपायर की ओर इशारा किया कि क्या वो फील्डर है जो कि सीमा रेखा के अंदर गेंद को ढकेलने के वक्त उनका शरीर का कोई अंग सीमा रेखा को टकराया था या नहीं. तो इस बीच देखते हैं तृतीय अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन न करने के बाद.
So perfectly saved by the widest long on fielder. This is an outstanding fielding made by the long on fielder. और इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत इस वक्त बल्लेबाज को प्राप्त हुए सिर्फ 2 रन और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 22 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. This is an absolutely fantastic progressing year now for मंशू तलपाड़ी और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार नियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद इस वक्त फेंकी थी गेंदबाज ने और आखिरकार गेंद को सीधे छोड़ दिया था बल्लेबाज ने विकेट कीपर के हाथों में जाने दिया वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 23 रन पर और नियाज अगली गेंद ये गेंद bowled out just gone for a big one and lost his middle of stump bills are disturbed और ऐसा कहना पड़ेगा परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद इस वक्त की थी और इस गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए गेंद को साइड पर उछालना चाहा गलत लाइन पर खेल गए और बल्लेबाज के बल्ले को गेंद वंचित करते हुए सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराते हुए और इसी के साथ विकेट गिर चुका है तो आउट होने वाले बल्लेबाज अब 4 रन बनाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है मंशू तलपाड़ी 23 रनों के ऊपर इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और नंबर 4 बल्लेबाज तैफ का आगमन यहां पर होता हुआ तो तैफ इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर मौजूद और नियाज अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद स्वीप किया इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का तो रन से इस वक्त नहीं मिलेंगे और ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद एक बेहतर स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ मंशू तलपाड़ी इस वक्त 23 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स एक्सेप्ट दे लॉस्ट their 2 wicket मंशू तलपाड़ी लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन तो इमरान गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और नया ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ चम्मी के लिए गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ चम्मी ने डीप मिड विकेट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस गुड गोइंग ऑन हियर फॉर मंशू तलपाड़ी इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया तैफ ने लेकिन फील्डर मौजूद नॉट मोर देन अ सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर 26 ऑन द बोर्ड for losing 2 wicket in the over number 3 in progress. ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त चम्मी के लिए गेंद को साइड पर उछालना चाहा चूंकि डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ और इस डॉट गेंद के साथ स्कोर इस वक्त रुक चुका है यहाँ पर 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 3 बेहतर गेंदें इमरान इस ओवर में फेंक चुके अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार ये गेंद उछाला इस वक्त चम्मी ने और गेंद लंगो फंसी मारे गज बाहर 6 रनों के लिए fantastically struck came from the bat of Chammi 6 number 2 came from the bat of him और लॉन्ग ऑफ पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर खड़े हुए थे जिन्होंने जीतोड़ कोशिश जरूर की गेंद को लपकने की अपने ऊपर की ओर छलांग भी लगाया लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर आउट ऑफ द फील्डर्स रीच एट वाइडिश लॉन्ग ऑफ इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ मैसिव वन केम फ्रॉम द बैट ऑफ चम्मी और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर एक बार फिर से बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में पैरों के जरिए गेंद को रोका इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर फील्डर ने और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का 33 ऑन द बोर्ड
दिस इज द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. इमरान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. इस बार रिवर्स शॉट डाउन टू बैकवर्ड थर्ड मैन. इन फैक्ट has got only a single for that stroke और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 34 रनों पर. 34 for the loss of 2 wicket. One more good over in Manshow's Talapadi's point of view came straight, and after 3 overs they are looking in a commanding situation. It's 34 for 2. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 33 the score. In fact 33 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 33 the score. 3 overs completed. इमरान पहली गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची. इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा तैफ ने उसे जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर. 34 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट फ्रॉम द विकेट. इस वक्त आसिफ गेंदबाजी करते हुए ये गेंद तैफ के लिए एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा. वाइड का इशारा. 2 लगातार वाइड इस वक्त आसिफ फेंक चुके हैं और अभी निश्चित रूप से अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त नहीं ऑफ स्टंप से बाहर रहा. काफी बाहर रहा. थर्ड वाइड कंसेक्यूटिव थर्ड वाइड फ्रॉम द बॉलर और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर. 36 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट. आसिफ इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को. गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर. एक रन मिलेगा. क्लीन पिकअप नॉट मोर देन अ सिंगल और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर. 37 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. और आसिफ अपनी ओर की अगली गेंद. यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक. एक और छक्का नंबर 3 चम्मी के बल्ले से लगता हुआ. ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट स्टैंड एंड टेल यू वर्ल्ड एंड आई गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट. 43 on the board. Manshu Talapadi looking in a commanding situation. और आसिफ इस वक्त अब गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ ओवर द विकेट चम्मी के लिए. यह गेंद ड्राइव कर दिया चम्मी ने. गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर. थोड़ी सी मिसफील्ड और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को दोबारा रोकने में सफल फील्डर. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. तो couple of runs added to the total. It's 45 on the board. इस बार चम्मी ने गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर. मौका जी नहीं. गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे. After couple of bounces collected by the feeder at long off और बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. 46 on the board. Runs are coming quite easily now for the batsmen of Manshu Talapadi and they are now heading towards to their huge total. Lofts it and finds the gap as well. 6 runs. Outstanding strike. This time comes from the bat of Taif. और ताइफ का ये छक्का उनके कुल रन संख्या को 50 के पार पहुंचा चुका है. 50 comes up for Manshu Talapadi. 52 on the board for losing 2 wicket. After the completion of 4 overs, they are looking in a commanding situation. 52 for the loss of 2 wicket. 4 overs completed and now just a last over remaining in their innings. And a fantastic partnership is now building up here between Chammi and Taif. और जहां तक व्यक्तिगत स्कोर का सवाल है इस वक्त चम्मी बल्लेबाजी करते हुए 29 रनों पर. चम्मी बैटिंग ऑन 29. Meantime Taif बैटिंग ऑन 9. And the last over of their innings is now going to begin. निजाम लेग स्पिन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और चम्मी who is batting on 29 is now going to face निजाम. और अंतिम ओवर की पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. वाइड का इशारा
गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 53 रनों पर 53 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ एंड लास्ट ओवर। और गेंदबाज निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। चम्मी के लिए उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 54 रनों पर 54 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर फिफ्थ एंड लास्ट स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले गो। और निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। तैफ के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी चूंकि इस वक्त और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। निजाम दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को उछाला इस वक्त इनटू द वेकेंट गैप। ही हैज गॉट अ सिंगल, दे लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दे कम बैक फॉर द सेकंड रन क्वाइट कंफर्टेबली एट द लास्ट मोमेंट। और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 56। अब तक 56 रन बच चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें बाकी उनकी पारी में। इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद। collected the ball after first bounce by the fielder just inside the fence at long off। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 57 रनों पर 57 ऑन द बोर्ड। 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में और निजाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए चम्मी के लिए। ये गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंचे इस वक्त स्लिम डाउन पर और यहां पर चम्मी का विकेट गिर चुका है। तो एट लास्ट a fantastic innings of 30 runs came to an end from Chammi. He scored 30 runs including 3 massive sixes and 1 boundary, and after being playing a fantastic knock of 30 runs, Chammi is back into pavilion and the 3rd wicket lost for Mancho Talapadi and the total of 57. It's 57 for 3 with just 1 ball to go in their innings. तो अंतिम गेंद इस वक्त बाकी और उस अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार तैफ, जबकि निजाम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। निजाम तैफ के लिए अंतिम गेंद फुल टॉस टॉप एज एंड दिस टाइम टेकन कंफर्टेबली इनसाइड द फेंस एट डीप बैकवर्ड थर्ड मैन। तो यहां पर फुल टॉस गेंद को रिवर्स शॉट जरूर खेला था, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं है। टॉप एज पर गेंद टकराई और आखिरकार डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपक ले गया। सो द इनिंग्स इज ऑफ Mancho Talapadi started well, progressed well and finally finished well with 57 for the loss of 4 wicket after the completion of their 5 overs. And now the target for Sam 11 Makyar is 58. 58 Sam 11 Makyar have to score and they stipulated 5 overs with the requirement of exactly 11.60 runs per over, which set by Mancho Talapadi. 50 at the target for Sam 11 और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल यानी छोटे से ब्रेक के बाद। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर Sam 11 की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Thank you very much, Gopi. And huge target set by the team Mancho Talpadi, and the man who shows his talent in the second match. Of course, in the first match, Chammi is absolutely without facing deliveries back in the pavilion in the form of run out. But in this particular match, Chammi showcased his original potential of his batting and scored fantastic 30 runs in with the help of 3 sixes, massive sixes and 1 boundary. And because of his fantastic knock, and Taif is once again the man scoring some runs from his bat, scored 12 valuable runs. Altogether, they got huge total on the board. 58 runs they scored and set a target of 57 they scored and set a target of 58 to win the match. So opening batters Shiab and Ibrahim, the successful opening pair, and the team Sim 11 Makyar. In the first match they won the match quite dramatically, and wait and see how well they will go into chase this huge total. So Shia will go into face Taif. First ball, wanted to go for the expansive drive, got outside the match, chance of run out. Direct it might be that curtain in the innings of team for the batter Ibrahim. So Anchu Mancho announcing ₹1,000 for Ibrahim for every 6,000 rupees. Here is outside the line of leg stump, but batter already made his mind that he wanted to go for the reverse sweep, so that quite cleverly the bowler bowls that one outside the line of leg stump, and no run scored. So 1,000 rupees for every 6 here for batter Ibrahim, announced by Anchu Makyar and Brothers Makyar. One more delivery which is far outside the line of off stump, and wide call by umpire. With that extra scoreboard now 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. So long way to go, but I think needed some good start here. Explosive start is required for the team. Sim 11 outside the line of off stump, beautifully bowled, just around outside the line of off stump. Batter just to try to get that one in the offside region. Again a little bit movement of his feet, and beaten by that fantastic line. Wicketkeeper behind the stump did rest back to bowler. Taif again. Right arm over the wicket. Balls lofted, and it's going to be a 1 bounce into the fence for 4 runs. Just a kind of cricketing stroke which is required in the first over. Ibrahim got a boundary just short of that boundary line, and he just short of 1,000 rupees as well, because the ball landed inside the boundary line. Otherwise he will going to get 1,000 rupees for 6, but it's a boundary. 6 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Taif again, right arm over the wicket, balls this time outside the line of leg stump. White call by umpire, and with that extra scoreboard now moves on to 7 on the board without loss of any wicket. White call by umpire. So third umpire which is given for the wide, the fielding team asking that DRS decision review from the umpires, not the umpires, from the fielding team for that wide. Wait and see will it go into wide or not. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, FZ ಬೈಕ್ನ ಒಂದು ಕೀ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So this is a fantastic tournament is in progress in the name of BPL season 5. The man of the match, it's a fair delivery, right delivery. Man of the match which is donated by 10 Saukin DXB. The best bowler which is donated by Shakir DXB. The catch of the tournament which is donated by Ubi DXB. We are coming to the more donors name afterwards, and here is the bowler will going to continue. It's a no white, so fair delivery. Score remains on 6 correction, 6 on the board without loss of any wicket. Taif, right arm over the wicket to Ibrahim.
Ibrahim lofted straight down the ground, but protection is there in the deep long off, so that he has to settle for a single. And with that single, Scoobert moves on to 7 on the board. So first over completed, tidy over. In fact, because they're chasing a huge total of 58 to win this match. 7, it's not good enough, but still a long way to go. 4 overs remaining, 24 deliveries remaining, and they have to get another 51 runs to win this match, and a lot of hard work is required from the batting side. Meanwhile, coming to that Donner's name, the best bowler, which is donated by Ubi DXB. The best batsman is also donated by Ubi DXB. The best wicket keeper, and also donated by Ubi DXB. Thank you very much, Ubi, for your the contribution for the success of this cricket tournament. And first trophy, which is donated by Safwan DXB. Second trophy, which is donated by Vintage Street. The first catch, which is donated by Ibrahim. TM Ibrahim. Second catch, which is donated by Amir Makyar. So, Ilyas will go into ball the second over, the first delivery. Right arm over the wicket to the right-hand batsman Ibrahim. And needed some big shots here. And wait and see how well the second over they will go into capitalize. A long way to go. Ilyas taking his own time to deliver the first delivery. Right arm over the wicket past the umpire. Going for the expansive drive. Missed it completely. Dotted delivery. And a lot of contribution for the success of this cricket tournament. And we are talking about one more organization with their contributed for the success of this cricket tournament. FIDA guys. The FIDA guys is the one really they contributed for the success of this cricket tournament of BPL season 5. We are grateful and thankful for FIDA guys for your heartfelt contribution for the success of season 3 BPL season 5, little correction, and which is proudly presented by brothers Makyar in this most beautiful FISA ground. Makyar lofted down to deep long on, but straight to the hands of fielder. That's end of Ibrahim. Just he wanted to go for the big shot, no other option at all. He had to get the big shot. By doing that, I think the ball, which is almost looks like there's not enough power behind the stroke, no timing whatsoever, landed safely to that deep long on region fielder. Wicket number first back in the pavilion. Ibrahim departs after scoring 5 runs, and it's 7 for loss of 1 wicket. Hello. So new batter in is Akku came into middle. Akku, the man who really changing the complexion of the game in the previous match, and fantastic knock, 17 unbeaten against Caesar Rockets when the match which is out of their hands. This man is in the last over especially played a fantastic knock for his team. So he's got a promotion up in the order, and Akku will go in to take the strike of the bowling of Ilyas. Again, though, they're going to be a wide, far outside the line of off-stump, and wide signal by umpire with that extra score, but moves on to 8 on the board. 8 without 8 for the loss of 1 wicket. Ilyas taking his own time, bowling with a short run up. Right arm over the wicket delivers. This time, my goodness, ball is definitely going to land it safely to the hands. Down to deep square leg. Well. Akku is a man who thought it might be a maximum, but he played that one very high. He's not really got that much of connection what he's looking for. He's just not a sweet part of the bat. But unfortunately, the man who really changed the game in the previous match is back in the pavilion. And nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. Even it's a timing which is not came proper from his bat. He's back in the pavilion. That means the team was strongly back in the game. Mancho, and after losing their first match, they know exactly they have to come back with the victory, and this victory will going to give them a lot of confidence. But a match which is not yet over, but a lot of hard work required here from the batters of team Sim 11. So last match hero
He is back in the pavilion scoring 0 in this match. So we are thankful and grateful for the Fida guys, Fida Zafar, Shafi Kesi Road, all Ayan Fayaz, Sattar Makyar, Salam Makyar, Bashir Makyar, and thankful to BM Farooq for your contribution for the success of season 5 of BPL cricket tournament, which is proudly presented by Brothers Makyar. Ilyas, right arm over wicket balls outside the line of off stump, and it's going to be a punishable from the umpire. Wide call by umpire. Wide plus 1, 2 wide added to total with that addition of the 2 wide. Scoba Namuzan to 10 on the board. Dorish is a new batter is in non-strikers end, but here the batter will going to have the strike in the strikers, and the opening batters, batter Siab will going to take the strike. Ilyas, right arm over the wicket to Siab after losing a wicket of Akku and Ibrahim. This man have to take the responsibility. Siab is a good striker of the ball. Right arm over the wicket. This time a lovely delivery, good wicket keeping as well by the behind the stump, but I think it's going to be a wide, the far outside the line of off stump. We are not just having an angle. It's a community box in a square angle, so that's not so easy for us to judge the line of the ball, to see the line of the ball. And wide outside the line of off stump with that extra scope. Namuzan to 11 on the board for the loss of 2 wicket in the over number second is in progress. The long way to go, and batting display which is came from Chami. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಾಸೀರ್ ಕುಚಿಕಾಡು ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ನಾಸೀರ್ ಕುಚಿಕಾಡು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ BPL season 5, which is proudly presented by Brothers Makyar in the beautiful cricket ground here in Makyar Fizza ground. Right arm over the wicket, balls. Switch it, no need to run for that. Ball went towards a deep backward point boundary for 4 runs. Lovely shot. The need to have to take the initiative of getting some acceleration. No other alternatives here for the batters of team Sime 11, and the batter in delegation Shiab played that very nicely. One of the most difficult stroke to play in the book, especially against the pace bowling. At time some kind of exquisite footwork which is required, and even the bat speed is also so important while you try for that switch it. So with that boundary scored Namuzan to 15 on the board for the loss of 2 wickets in the over number second is in progress. Ilyas again short run up, just 2-3 steps away from umpire Munir. Right arm over the wicket balls, and I wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold of that improperly, but good enough for Siab to rotate the strike. It's one more single, with that single Skoba Namuzan to 16 on the board for the loss of 2 wickets. It's a prolonged over. The over which is inclusive of 3 wide deliveries, so that the over of 9 deliveries bowled there by Ilyas. But the team desperately wanted some runs. They are not really bothered about how the runs are coming here for the team Sime 11, but they just wanted to get a huge to get the target at any cost, and along with some big shots, some extras will definitely going to help the team to get into that total of 59-8 to win this match. Ilyas again, right arm over the wicket balls. This time one lovely delivery, slower one, change of pace in the relegation. Batsman Nourish early into the stroke, beaten by the pace, and one more over completed, 2 gone after completion of over number 2, chasing a total score of 58. The team Sime 11 are 16 on the board. Another 42 more runs required for the victory in 3 overs. 18 ball and 42 runs required for the victory. One of the good organization, Brothers Makyar in this region, not only in the form of sports and games they will go into support, but they are contributing for the society as well
by doing some very good social work, and the organization which is organizing this cricket tournament with the cause of social service as well, so that this is going to be one of the most prestigious cricket tournament and opportunity for the talents which belongs to UCA to come and perform in this most beautiful venue and full ground. We can see that the ground which is covered with a beautiful nature here in Makyar, KC Road. Shami brought into attack and starts with the warm-up delivery, the wide outside the line of leg stump, and with that extra score, but moves on to 17 on the board for the loss of 2 wickets. Shami, the most popular name in South Kendra and Kasaragod district. So man who is knowing for big innings and even from bowling as well. Good all-rounder. Again outside the line of off-stump. Wicketkeeper actually no idea where the ball is after the ball is deflected from his hand. But ball is almost near to him, so batters are not interested for any run. Each and every dot ball will going to create the problem for the team, and Siab is the one just has got opportunity to do something special for his team. Chami again got outside edge of the bat, ball almost traveling down to short third man region. Abu, the fielder down at short third man, fields the ball, and opportunity for the batter to complete the single. With that single, score moves on to 18. Another 40 runs required for the victory, and remaining 16 deliveries. 16 deliveries, 40 runs required for the victory. Changes in the field. The square leg fielder going back to deep square leg. The deep backward point fielder coming inside the ring here for Nourish of the bowling of Chemi. This time I wanted to go for the switch, it missed it completely. Wicketkeeper missed it, but Abu down at short third man region fields the ball, and no chance of any run for both the batters. One more dotted delivery, and playing the dotted delivery means you are making this target tougher and stiffer. And one more dotted delivery. Chemi balls going to be a wide, one more extra. Too much experiment here from Chami. Just wanted to ball that one out of the reach of the batter, but ball further moving away from the right hand batsman. Wide call by umpire Sri Raj. With that extra score, but moves on to 19 on the board for the loss of 2 wicket. Bright and sunny afternoon. Time is exactly 12 past 15. And condition is looks so hot here. Again chipped it away. Chance here for the fielder, and both the fielder misunderstanding. Mid-wicket fielder thought that the square leg fielder will going to come, and but because of that the wind which is flowing against, and that's what sometime the nature of some cricket ground. When time progress, the direction of the wind is also changing here. That if beginning it was towards the commentary box, now it's against the commentary box, and it's going to be offside. They will going to get some distance again. Wanted to go for the switch, it missed it completely, and no signal means dig by call by umpire. With that extra score, but moves on to 21 on the board in the over number 3 is in progress. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಜರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸಿಜರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Wanted to go for the switch it, and Norris didn't got that much of enough bat onto that, but good enough for him to rotate the strike. Just a single. Single will not going to help the team to win this match, as 22 on the board. The over number 3 which is comes to an end. 22 means another 2 overs remaining. They have to get 36 runs to win this match. 18 runs per over, the required run rate for team Saim 11. So far it's a disciplined performance here from the bowlers of the bowler Mancho Talpadi. Friends Makyar captain won the toss for the next match. The decision they made, they wanted to field first. Cesar of course will go into bat first for the next match, and because of captain of Friends Makyar winning the toss, elected to
field first. So fourth over, and Safwan will going to bowl that penultimate over and decided over. The team Sim 11, at least they have to get 18 to 20 runs in this over, and then only the gate will going to open for them to win this match. Safwan to Nourish. Again, Nourish wanted to go for the drive, doesn't get hold up that one properly, got outside edge of the bat. And before that, third man fielder will going to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 23 on the board. 35 required from 11 balls. Siab is on strike. Drives that one down to deep long off. Again, they will going to settle for a single, not more than a single. So already mentioned about the single will not going to help. Along with the single, needed 1, 2 to 3 big shots in the remaining deliveries, and wait and see. 24, 34 more runs required for the victory. Safwan this time wanted to go for the switch it. Again, didn't got that much of proper connection. Just a single taken, and the bowler Safwan will going to not bother about these singles. You know exactly how to protect the boundaries. 25. $33 required. Right arm over the wicket. Siab lofted that one into the mid wicket. Again, just for a single. And mid wicket fielder just lost his concentration at once, but he recovered quickly. One more single. With that single, scoreboard moves on to 24 on the board, 26 on the board. 32 required. Went for a huge switch it, missed it completely. His off stump is uprooted. Middle stump might be uprooted from the ground level. Off stump, and wicket number 3 is back in the pavilion. And now Rish struggled innings, which is comes to net, and quite understandable when you are chasing a huge total like 58 to win this match. It's not so easy to handle the pressure, because every ball they needed some big shots. Now onwards, I think looks like the difficult task in front of the team Sim 11. 26 means another 30 required. 5 sixes out of remaining 7 deliveries. They have to get that one. Rifaz, tall man, will going to take the strike, and the bowler so far bowled a tidy line. Safwan continues final time in this over. This time, what a shot, magnificently struck, and I think this man is needed a little bit early stage of the innings. Fantastically struck, and that one stroke will take this match slight a bit of interesting, because 24 required in last over. Scoreboard is 33, 26 required in last over. (32), which is the total score. That means 26 required from last over. Rifaz might be now out of the strike now. Fantastic switch it, isn't it? Got that one right from the middle of the bat. Played it very fine down to between fine third man and the gully. The last over, just number 333. Naufal to bowl the last over. So Naufal, brother of Irshad, is also a very good commentator, and Naufal right arm round the wicket bounce. This time lofted beautifully
No need to run for that. Stand and delivered. So at last Siab breaking the shackle, and from his bat he got the boundary for that. With that boundary, scoreboard jumps into 36, and that means 22 required from 5 balls. Now foul. Right arm around the wicket. Again Siab drives that one, but not more than a single. They wanted to come back for the second. Very good running between the wicket. Couple of runs. Interesting now. 2 more runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 38. 20 required in 4 deliveries. 1 or 2 6 can change the complexion of this game. Now foul balls. Shiab lofted that one, and he will going to get the distance. Fantastically struck. Even he played it and slide a bit of against the direction of the wind, and he got the distance as well. What a fantastic struck. Magnificently played. Off the toes, and time exceeds the fielding team. How to bring one fielder inside the ring. Scoreboard jumps into 44. 14 required. 3 balls remaining. All the matches we can see today is absolutely the last over stunner. And great to see here that the V1 chasing team are chasing a huge total, but they are not given up. This is what the attitude, the body language required from the team. Winning and losing is a part of cricket, but you need to see that they have to try for everything. 5,000 announced by Jafar Filukur. If Siab will going to win this match for his team, he will going to get a 5,000. Decider delivery. Now fall. Balls to Siab. Wide outside the line of the leg stamp. Going to be a wide. Now fall under pressure. Total score now moves on to 45. 13 required. 3 balls remaining. One big shot will going to make this match more interesting. The team Siam 11 quite dramatically they back in the game. This time he lofted inside out cricketing stroke, played it over that of the fielder, ball running down to deep longer boundary, and very good stop by the fielder, and they wanted to go for the third, but Siab is not interested. 2 runs taken, that means 11 required from 2 balls. 2 maximum required here from the bat of Siab. Naufal have to deliver 1 good delivery out of that 2, but Siab have to deliver 2 out of 2 out of the park. 1 boundary and a 6 will going to tie the match, but 2 sixes will going to make team Siam 11 to win the match. ಎರಡರ ಮುಂದೆ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 10 run. The match will go into tie. So now 11 required, 2 balls remaining. Match decider delivery. Now fall. Right arm around the wicket to Siab. Balls this time drives that one down to long on. Will it going to be a boundary? If this is not a boundary, I think it's all over. It's all over. Now I think 9 to get from 1 ball. I'm not saying it's all over, because if you review the pages of history, it's very difficult to tell anything. And 11 to get, 9 to get from 1. If the bowler will go into make any stupidity of bowling a no ball boundary and no ball 6 will going to take the match score more interesting. But I don't think he will going to do anything stupidity or bowling wides and no balls. Naufal is a young man, you know exactly what to do in this last ball. But Siab, I think he knows that 6 will not going to help him, but only the luck will going to help the team Siam 11 to win this match. But a fantastic comeback here by Siam 11, even though it's difficult to get 9 in 1. Naufal round the wicket. Balls. This is what I am talking about, the stupidity. One stupidity here from the bowler, as the balls are wide delivery.
The 8 to get from last ball. Another wide. Then it's going to be 7 from the last, and the batsman will going to hit the 6. Then match will go into tie. But I don't know why the bowler are doing that much of effort. At least a simple one delivery have to deliver, isn't it? But all we can see that the cricket is unpredictable game. 8 to get from 1. Luck, fundamental ingredients in success. Another luck, another extra delivery will going to make this match very interesting. Now fall. Have a look at Siab. He is where he was standing. That's it. That's a good delivery. Good thinking there by young man. So that's it. The team won this match by just 7 runs. But Sim 11 did a great job. They fought back. And winning and losing is a part of cricket. But I think the team Sim 11, they won the art of cricket lovers. Especially the batter Siab and Rifaz. They played an excellent knock for his team. Even Ibrahim is also. They are tried their level best to win the match. But at last they just got 7 short of the target. 8 short of the target and 7 runs victory for team Mansho Talpadi. The 25 runs unbeaten for the batter Siab. Now it's a time to announce the man of the match. It's none other than one and only the one-man show, the man who really displayed a fantastic batting performance. It's none other than Chammi of team Mansho Talapadi, who judged as a man of the match. So that I request Chammi. Nasir Udex ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚಮ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Nasir Udex be the chief guest for the presentation of man of the match award. Chammi, one who scored 30 runs in just 14 deliveries, will go in to receive the man of the match award. And he bowled 1 hour. Didn't pick up a wicket, but bowled a very tidy over. So much deserved man of the match award here for Chammi of Mansho Talapadi. Will going to receive the man of the match award from Nasir. In our main stage, the presentation dies. Chammi, what a player he's been. Long decades, he's got a good career, cricket career, more than 25 years of career. He's in the heart of all cricket lovers of South Kent district and even Kasaragod district. Congratulations, we are going to the one more good match here. And for that match, I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you, thanks a lot. Makyar elected to field. Shiza Rockers. धन्यवाद सतीश. सो जहां तक सवाल है इस वक्त मैच नंबर 4 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर शुरू होता हुआ. द मैच नंबर 4 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट. BPL season 5 2025, which proudly presented by brothers Makyar in this beautiful Fizza ground, KC Road. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त संघर्ष मैच शुरू होने जा रहा है शीजा रॉकर्स और फ्रेंड्स मक्यार के बीच. और फ्रेंड्स मक्यार ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है. और इस वक्त उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए और बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है. दोपहर के 12:30 इस वक्त बज चुके हैं. 12:35
और जहां तक सवाल है इस वक्त तो भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए और इस भीषण गर्मी तले इस वक्त एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई बीपीएल सीजन 2025-2025 विच प्राउडली प्रेजेंटेड बाय ब्रदर्स मक्यार और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त मौजूद शिजा की ओर से इरशाद और सलीम। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। श्रीमान बदरुद्दीन इनके सारथ्य में और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा इस फिजा मैदान पर ये श्रृंखला ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए इरशाद एनएम और सलीम माडूर आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर मौजूद, जबकि अजीज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और मैच की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त अजीज तैयार है। इरशाद एनएम के इरशाद है जो कि इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद अजीज ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, सिर्फ दो मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लंगॉन और डीप मिड विकेट ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त अजीज गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इरशाद एनएम के लिए। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। अजीज टू इरशाद एनएम। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट, पहली गेंद को खेलना चाहा था चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, वाइड का इशारा अंपायर का और इस वक्त वाइड को रद्द कर दिया गया है और कंफ्यूजन इस वक्त हुआ था अंपायर को, तो कोई वाइड नहीं, सही गेंद घोषित और गेंदबाज अजीज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इरशाद एनएम इस वक्त सामना करते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। अजीज इरशाद के लिए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। सिर्फ एक रन मात्र यहाँ पर बन चुके हैं उनकी पारी में और अजीज फिर से एक बार तैयार है। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहे एक बार फिर से इरशाद ने, लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए और आखिरकार सीधे पहुंची विकेट कीपर के शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो जहां तक का सवाल है इस वक्त एक वाइड फेंकने के बाद दो पहली गेंद सही फेंकी थी, दूसरी गेंद वाइड थी और तीसरा गेंद इस वक्त उन्होंने सही फेंका है और अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए अजीज की गेंद बेहतर, फैंटास्टिक वर्क, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन विकेट जरूर उन्होंने उखाड़े थे तुरंत गेंद को कलेक्ट करते हुए विकेट कीपर ने, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वक्त सब कुछ सुरक्षित उनके लिए और रन इस वक्त रुक चुके हैं कुल मिलाकर एक रन पर, वन विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अजीज और इस वक्त इरशाद सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर था विकेट, लंबे रन अप इस वक्त अजीज का 8 से 10 कदम इस वक्त ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछालना चाहा, गेंद इस वक्त समचों पर टकरा चुकी है और एक बेहतर गेंद के जरिए यहां पर वो विकेट प्राप्त कर चुके हैं इरशाद का।
तो इस वक्त पिछले गेंद के मुकाबले परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद फेंकी थी और इस धीमेपन पर चकमा खा गए। गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे लेग स्टंप को टकरा कर निकल गए, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है इरशाद नैम का और अजीज एक बेशकीमती विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं इरशाद का। और पहला विकेट इस वक्त खो चुका है शिजार रॉकर्स 1 रन पर। इट्स 1 for the loss of 1 wicket and Irshad NM is now departs. तो उनका विकेट का पतन होने के बाद नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए शमीर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। अजीज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शमीर के लिए अगली गेंद। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर और इस बार रिटर्न आ चुका है लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल विकेट कीपर अंतिम क्षण में। हालांकि थ्रो काफी धीमी गति से आई थी, थ्रो को अगर कलेक्ट कर लेते सही तरीके से तो शायद वहां पर रनआउट की संभावना हो सकती थी लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटी विकेट कीपर के हाथों से और बल्लेबाज 1 रन सुरक्षित तम्मा यहां पर पूरा करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। 2 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अजीज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए और इस वक्त रिव्यू लिया गया यहां पर और देखते हैं यहां पर तृतीय अंपायर इसका परिशीलन न करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। सो इट्स अ फेयर डिलीवरी और सही गेंद इस वक्त घोषित। और जहां तक सवाल है इस वक्त रन्स का, रन इस वक्त 2 रनों पर रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। और अजीज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सलीम माडूर इस वक्त सामना करते हुए अजीज की गेंदों का और अजीज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार गेंद को सलीम के लिए, गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद उनके पैरों पर टकराए। 1 रन लेग बाई के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद।
So second over starts in the innings और गेंदबाज पहली गेंद उछाला इस वक्त गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर फॉर शिजा रॉकर्स। और गेंदबाज बशीर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, लगभग गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची अंतिम क्षण में चूके और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ बेहतर 2 गेंदें इस वक्त फेंक चुके हैं बशीर अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया इस वक्त, लेकिन स्ट्रोक्स में उतना दम नहीं और जब तक गेंद कवर पॉइंट पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इरशाद नाम का विकेट गिर जाने के बाद सलीम माडूर और शमीर जो कि दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, उनके सामने एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है इस वक्त एक बेहतर साझेदारी निभाने की और उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 6 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। बशीर दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गैप चुनते हुए गेंद जाती हुई डीप अक्रॉस स्क्वायर लेग पर बेहतर फील्डिंग दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतर फील्डिंग बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ते हुए और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज बशीर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम माडूर सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में और आखिरकार बल्ले पर ठीक तरह से नहीं है। यह रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार गेंदबाज बशीर अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए निसंदेह यहाँ पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज बशीर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपने ओवर की अगली गेंद यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया। गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर और जब तक गेंद को वहां पर डीप मिड विकेट पर फील्डर अजीज फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था, जब तक अजीज का थ्रो पहुंचे 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके। 2 ओवर के समाप्ति 9 रन बन चुके हैं। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs. Still the batsmen of Shiza Rockers just searching for the right track. 3 overs to go in their innings in overall calculation. और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज मुआज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करते हुए इस वक्त सलीम सामना करते हुए इस वक्त मुआज की गेंदों का फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर मुआज ये गेंद सलीम के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद को चलो फील्डर गेंद के पीछे जाते हुए लगभग ऐसा कहना पड़ेगा सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोकने में सफल जो फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर से दौड़कर आए थे और जब तक वो दूसरे फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे नॉन स्ट्राइक रन पर गेंदबाज के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को उछाला था इस वक्त बल्लेबाज सलीम ने और आखिरकार 3 रन न बटोरने में सफल और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लंबा ऑफ पर और गेंद तक फील्डर आखिरकार नहीं पहुंच पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त शमीर के बल्ले से लगता हुआ लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान गेंद को खाली क्षेत्र चुनते हुए उछाल दिया था इस वक्त खूबसूरती के साथ और लॉन्ग ऑन से फील्डर ने जीतोड़ कोशिश की दौड़ कर आकर गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने के लेकिन नाकामयाब और यहां पर चौका प्राप्त करते हुए बल्लेबाज। बेहतर स्ट्रोक शमीर के बल्ले से लगता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर
16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है शीजा रॉकर्स के बारे में, जिसमें पहले 2 गेंदों में 7 रन अब तक बन चुके हैं। तीसरी गेंद लेकर मुआज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शमीर के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद उनके पैरों पर टकराई, 2 कदम आगे जरूर इस वक्त बल्लेबाज ने बढ़ाया, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया। देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड कर रहे हैं, विकेट कीपर अपने आगे की ओर आते हुए अपने निर्धार को बदला और स्वयं वापिस अपने क्रीज पर, और फिर से एक बार मुआज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यह गेंद इस बार शमीर के लिए, गेंद को उन्होंने खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 17 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और एक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज, इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर फील्डर इस बार कैच को लपकने में असफल। Absolutely fantastic effort made by the long off fielder। करीबन 12 से 15 कदम अपने आगे की ओर दौड़ कर आए, गेंद को लपकना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथ में आ भी गई थी, लेकिन गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज इस मुश्किल से मौके पर बाल बाल बचते हुए 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका और मुआज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, फील्डर वहां पर गेंद का इंतजार करते हुए थोड़ी सी मिस फील्ड, बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते लेकिन नहीं मिलेगा और थ्रो यहां पर पहुंच चुका और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 19 रनों पर। बेहतर ओवर रहा अगर शीजा रॉकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसमें 11 रन बने, 11 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs they are recovered a little bit after being a slower start. It's 19 for 1 after completion of 3 overs for Shiza Rockers. Match number 4, the first session of the match number 4 of this prestigious cricket tournament, BPL Season 5 2025 is now progressing here, which proudly presented by Brothers Makyar. और निश्चित रूप से इस फिजा ग्राउंड मक्यार के इस सुंदर और विशाल फिजा ग्राउंड पर, फिजा मैदान पर ये श्रृंखला, ये मेगा श्रृंखला एक बेहतरीन एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए मुजम्मिल गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद उछाला, इस वक्त लंगोन के दिशा में गैप चुनते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ। बल्लेबाज जिन्होंने 4 रन इस वक्त लगाया है समीर ने माफ कीजिए, काबिल तारीफ स्ट्रोक इस वक्त लंगोन और मिड विकेट के दरमियान खाली क्षेत्र चुनते हुए इस वक्त गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, 4 रन इस वक्त बटोरने में सफल और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर, 23 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। निश्चित रूप से रन इस वक्त चाहिए बल्लेबाजों को शिजा रॉकर्स के, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है और अब फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान यहाँ पर फ्रेंड्स मक्यार के और काफी दूर दूर का फैला हुआ क्षेत्र यहाँ पर सजाया गया है और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर मुजम्मिल इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, जबकि सामना करते हुए इस वक्त शमीर जो कि एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए मुजम्मिल। यह गेंद इस बार स्क्वायर होता विकेट, गेंद को उछाला गेंदबाज के इस बार फील्डर के सिर के ऊपर से डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा की और गेंद बढ़ते हुए और इससे पहले की गेंद को काफी लंबा दौड़ लगाते हुए डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर रोका जाता। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, लिटिल बिट ऑफ विड्थ फॉर द बैट्समैन और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को स्कूप कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप कवर पॉइंट पर 2 रनों के लिए बल्लेबाज शमीर ने और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, ऐसा कहना पड़ेगा, just caught that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style of a deep mid wickets for a fence for a massive one. Fantastic struck came from the bat of Shamir और इस छक्के के साथ रनों के औसत में काफी हद तक बढ़ोतरी इस वक्त आते हुए 31 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 31 ऑन द बोर्ड इन 4th ओवर। इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफी आगे निकला, इस वक्त सलीम
लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए देखा कि काफी तेजी के साथ गेंदबाज गेंद पर लपक रहे हैं और अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर, 31 ऑन द बोर्ड। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। मुजम्मिल फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद उछाला इस वक्त लंग ऑन पर, जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन बैकअप होता हुआ दूसरे फील्डर के जरिए। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था यहां पर 2 रन प्राप्त करने का और गेंद इस कैच को लपकने की जीत और कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। गेंद उनके आगे टिप्पा खाते हुए, थोड़ी सी मिसफील्ड और दूसरे फील्डर जब तक बैकअप करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और मुजम्मिल, यह गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया, अपना संतुलन खो बैठे, रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूक चुका है और बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। आसान सा रन आउट, इत्मीनान के साथ रन आउट कर सकते थे थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट कीपर, लेकिन अंतिम क्षण में थ्रो को गैदर करने में सफल है और जब तक दोबारा वो गेंद को अपने पीछे की ओर जाकर फील्ड करे, बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर वापस लौट चुके थे। तो रन आउट का मौका इस वक्त विकेट कीपर गंवा चुके हैं और ओवर नंबर 4 की संपूर्णति हो चुकी है। 4 overs gone, 33 on the board, 1 wickets lost. Now just a last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में और कितने रन शीजा रॉकर्स के क्रीज पर ये मौजूद है दोनों बल्लेबाज बटोर पाते हैं। और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ हमीद नित्तू इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सलीम जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन शिजा रॉकर्स इनिंग्स। 33 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए हमीद नित्तू ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फर्स्ट बॉल ऑफ इस फ्रेश ओवर इज नॉट कमिंग अप। इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, वाइड इज लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। इन फैक्ट जस्ट 5 balls रिमेनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। हमीद नित्तू इस वक्त शमीर के लिए, जो कि इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा 22 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। शमीर इज बैटिंग ऑन 22, नाउ ही इज मूविंग अप टू 23 नाउ विद दिस सिंगल। इन फैक्ट दे आर लुकिंग फॉर दिस सेकंड बट वोंट गेट इट और आखिरकार दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट यहां पर हो चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 35 रनों पर, 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। हमीद नित्तू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम के लिए यह गेंद उछाला इस वक्त सलीम ने मिड विकेट पर और गेंद इनटू द गैप एज वेल, 4 रनों के लिए। और डीप मिड विकेट फील्डर ये सोचते रह गए कि लॉन्ग ऑन फील्डर गेंद तक पहुंचेंगे और लॉन्ग ऑन फील्डर ये सोचते रह गए कि डीप मिड विकेट फील्डर गेंद को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों ने भी प्रयत्न नहीं किया और खड़े खड़े देखते रह गए और गेंद उनके बीच से सीधे सीमा रेखा के पार चले गए। पार गेंद सीमा रेखा के पार होने के बाद दोनों फील्डरों ने एक दूसरे का मुंह जरूर देखा, लेकिन वक्त इस वक्त बीत चुका था और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी थी 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ 39 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 39 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस एंड बाउंड्री एडेड इनटू द अकाउंट ऑफ सलीम माडूर राव। तो इस बीच फिर से एक बार गेंदबाज हमीद नित्तू गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, इस गॉट इनसाइड एज ऑन दैट, गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉर्ट लेग क्षेत्र पर, 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर, 40 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन द इनिंग्स। सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में और विकेट कीपर इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और गेंदबाज हमीद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस वक्त शमीर सामना करते हुए ये गेंद समीर के लिए टॉप एज, मौका हो सकता है लंबा फील्डर के लिए और इसी के साथ अपने दूसरे प्रयत्न में इस कैच को लपकने में सफल और एक बेहतरीन पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है शमीर का। He scored 23 runs into his credit and after playing the fantastic knock of 23 runs, Shamir is backing to pavilion and a vital wicket lost in the second last ball of their innings for Shiza Rockers. And now they are exactly 40 on the board for losing 2 wickets and now just a last ball left in their innings.
Ashfaq, the number 4 batsman, is now comes out to the middle to face the last ball of their innings. और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त अशफाक का क्रीज पर मौजूद और हमीद नित्तू इस वक्त गेंदबाजी करेंगे. अंतिम गेंद अशफाक के लिए. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज हमीद और काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. और हमीद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. लेफ्टी बैट्समैन अशफाक इज नाउ गोइंग टू फेस द लास्ट 11 ऑफ द रिंग्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हमीद नित्तू. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. इस बार लेग स्टंप से बाहर और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर. नो बॉल का इशारा और 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल. ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त गेंदबाज के हाथ से गेंद फिसल गए थे और लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर की उन्होंने गेंद फेंकी और आखिरकार 2 रन इस वक्त टीम के खाते में जुड़ता हुआ शीजा रॉकर्स के. 42 ऑन द बोर्ड एंड अ फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन. और अंतिम गेंद फ्री हिट गेंद इस वक्त. अब देखना है कि इस फ्री हिट गेंद का बल्लेबाज सलीम किस तरह फायदा उठाते हैं. और हमीद नित्तू दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सलीम के लिए यह गेंद इस बार उछालना चाहा. विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े और आखिरकार यह विकेट यहां पर गिर चुका है. इस बार वाइड का इशारा. तो इस वक्त फनी थिंग्स इज हैपन देयर. बिल्स इस वक्त उखाड़े नहीं थे, सिर्फ समझो पर गेंद को लगा दिया और चुप रह गए वहां पर. तो दूसरे खिलाड़ियों ने उन्हें आगाज किया कि वहां पर बिल से उखाड़ना जरूरी है. तो इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है वाइड के लिए. और देखते हैं यहां पर तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं. तो यहां पर यह विकेट गिर चुका है और अशफाक की पारी समाप्त. एक गेंद अभी भी बाकी. तो इस वक्त एक रन जुड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा इस गेंद पर. और तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करते हुए कि यह वाइड है या नहीं. वाइड डिक्लेयर्ड बाय द थर्ड अंपायर और इसी के साथ एक रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा. 43 ऑन द बोर्ड एंड रन आउट आल्सो हैपेंड एट द नॉन स्ट्राइकर एंड. तो अंतिम गेंद अभी भी बाकी और नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर और सलीम माडूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार उनकी पारी की अंतिम गेंद का. और हमीद नित्तू तो इस वक्त गेंदबाजी यहां पर लेकर तैयार. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. हमीद नित्तू सलीम के लिए अंतिम गेंद. यह गेंद उछाला इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट सीधे कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में. लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम गेंद पर आफ्टर फर्स्ट बाउंस इस वक्त कलेक्ट किया था कवर पॉइंट के फील्डर ने. सो अ सिंगल रन एडेड इन द फाइनल डिलीवरी ऑफ देयर इनिंग्स एंड विद दैट run the stipulated 5 overs completed and after 5 overs Shiza Rockers started pretty slowly. They managed to score only 8 runs on the board for losing 1 wicket after completion of 2 overs. And after that in the next 3 overs in the last 3 overs they added 36 runs and because of that they finished respectively with 44 for the loss of 3 wicket in the stipulated 5 overs. And now the target for the friends Makyar is 45 exactly they have to score for victory. 45 they have to score for victory in the stipulated 5 overs with a required run rate of exactly 9 runs per hour. देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स मक्यार के बल्लेबाज इस 45 रन के स्पर्धात्मक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस तरीके की बल्लेबाजी में रणनीति टैक्टिक्स यहाँ पर अपनाते हैं. फिलहाल फ्रेंड्स मक्यार की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब फ्रेंड्स मक्यार की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद.
Thank you, Gopi, and a very good recovery there from the team Caesar Rockers. After that, they got a shackling start in the first over, and the 2 overs they are really struggling to get the runs. But the Samir has played an outstanding innings, and a partnership between him and Salima, Madur, and Shamir are really contributed. Very good runs from the batter, especially the Samir is looking so aggressive. Scored a 22 valuable runs in 15 deliveries with the help of 2 boundaries and 1 6. And then Salima Madur has also scored some good runs, 13 runs with the help of 1 boundary. So altogether, it's a very good total on the board. The fighting total on the board, 45 will be the target for team of Friends Makyar, and opening batters Suleiman as well as Amid will be the 2 opening batters for the side. Hamid Nitu is in non-strikers, and Akash, first ball, right arm over the wicket. Asha Irshad is celebrating. He is celebrating, and both the umpires are unmoved in that occasion, and very, very interesting. And the wicket keeper Irshad is so confident, and umpire maybe just the Ishad is asking for umpire to give it to the third umpire, but both the umpires are unmoved. There will be no third umpire maybe for the caught behind, but only for the wide deliveries they can ask for the third umpire. Well, the first delivery, which is outside the line of off stump, the umpire has got enough evidence to see that ball, which is maybe is but sometime it's happening in cricket. Anyhow, Akash will going to continue. Then right arm over the wicket to the right-hander batsman, second time in this over. Again, wanted to go for the expansive drive. They wanted to go for the single in that occasion, and they completed as well. Short mid-wicket fielder feeds the ball, returns the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, the batter Sulaiman has got his first run, and for his team as also they got a first run. 1 without loss of any wicket. 45 will be the target. And the battle is really, we can understand that Prince Makyar, they got a victory in their first match quite dramatically. And but the team Caesar Rockers have to get their first victory, so that they wanted to put their 100% in this game. Akash, third time in this over. Right arm over the wicket to Amid. This time down the leg side, but might be the ball very within the reach of the batter. Then wicket keeper gathers the ball back to bowler. Now they are asking for the third umpire. No, they are not asking for third umpire. It's a fair delivery. The even non-striker Suleiman knows that, so that he is not interested. He's an experienced campaigner, Suleiman, and a very good striker of the ball. There's so much experience behind him. Right arm over the wicket bounce. This time, oh my goodness! I thought instead of the ball will need to get into the fielder, but ball which is went into the fielder, short mid-wicket. It's all happening in cricket when you are trying to put some extra power to get the ball for a big shot. So he's just lost the grip over the bat, and the wicketkeeper behind the stump uprooted the stump, but no damage done. Batter still inside the crease. Amid Nithu. Well, all we can see in the drama in the first over itself. Ball went towards short mid-wicket region. Still Irshad is having some healthy argument with the square leg umpire about that they caught behind appeal. 1 without loss of any wicket. Akash to bowl right arm over the wicket to Amid Anitu. The time is exactly 1:15 in the afternoon. The bright and hot condition, and with this most beautiful and prestigious cricket tournament. Chance of run out in a non-strikers, and wide throw coming from the fielder, so that it's going to be a one more opportunity for the overthrow.
but both the batters are coming completed a single. 1+1, 2 addition added to total extra runs, bonus run. With that 2 addition of that extra run score, but moves on to 3 on the board without loss of any wicket, chasing 45 to win this match in 5 overs. 9 runs per over, the required run rate for team to win this match for friends Makyar. And playing with their local condition. They know exactly the condition of this game. Batter is not interested, not ready for to face the delivery, and that's why they are going. Now we get ready to face the next delivery. Lovely. This time going to be one more delivery. Wicket keeper behind the stump. Uprooted stumps. There is a flies the stumps. Is shot. This is a very good wicket keeper. Experienced campaigner behind the stump, and immediately it's not so easy to gather the ball when it was outside the line of leg stump, and only the good keeper can collect quite neatly when the ball is outside the line of leg stump. And that's the reason that why he was talking that the gathering the ball is so difficult for wicketkeeper, because he's not really having a good view of the direction of the ball, because the batsman definitely right in front of the line of the ball when the ball is just passing around the legs. At that time I think accuracy, the judgment is so important for the wicketkeeper. The line where the ball is coming, you need to keep his both hands to the line of the ball. And here again right arm over the wicket bounce. This time he played it very nicely. Down to field. Oh my goodness. Very unlucky. Very unlucky for Suleiman. Might be some part of the ground. Maybe the ball hitting that the little bit part of anything. I don't know what really. That up and downs in the ground. Maybe stops that stroke after hitting that upper part of that ground. Ball is slower down. Otherwise that was a certain boundary, isn't it? That's why always I am telling that at least 5% of his luck required for anyone. And that was not in the favor of Suleiman, but for the fielding team and for the bowler, that luck. And first over completed, tidy over there from Akash. 4 runs came from that over, 41 required in 4 overs. 4 overs 41, 10.25 runs per over required run rate now for the team to get this total. Not an impossible, even it's a difficult one, but in this first 3 matches we are witnessed some unbelievable chasings. Even some teams are defeated, but they are absolutely, they played a very good game of cricket. They came near to the target. Even they lost the match, but they came very near to the target. The previous match also, Sime 11 chasing a huge total of 58. They lost the match by just 7 runs. Again, single-handed reverse sweep. Quite beautifully played there by Suleiman. Intelligent cricket and delicately played. Not really putting any power behind the stroke, but you know exactly the third man is inside the ring. He just wanted to get the ball into his bat by closing the face of the bat. Single-handed reverse sweep, played it very fine down to third man boundary for 4 runs. With that boundary score, but moves on to 8 on the board without loss of any wicket. Suleiman considered to be one of the great player and experienced player as far as UCA is concerned. Even he's got experience of playing in a huge big tournament at lots of underarm cricket UCG. Again played it very nicely down to deep cow point boundary for 4, and this is what I'm talking about. The experience is all about. Suleiman knows that where the fielder is, and you know exactly the great idea of this particular cricket ground, where the wind is flowing. There is no deep cow point, and once he got the wind quite beautifully, and the poetry in the motion, that stroke which is played by Suleiman, perfectly driven. Suleiman usually is playing for Shining Ulal, his home team, and scoreboard now moves on to 12 on the board. This time again switch it, and oh, the fielder is not trying for the catch. Maybe he was in a little bit defensive frame of mind, not to take any risk here. Rightly so, sometime if you wanted to protect the runs, he need not look for the wicket. The one more single, with that single score, but moves on to 13 on the board for the loss without loss of any wicket.
Mushfiq, tall man, right arm over the wicket balls. Got outside edge of the bat. Quickly they're going for the single there. Outside edge of the bat. The little bit extra bounce in the relegation defeats Amid's middle of the bat. He got outside edge of the bat. And one more single. With that single, Skobana moves on to 14 on the board. 31 more runs required for the victory in remaining 20 deliveries. Still a long way to go, but not impossible in cricket. Anything can be happened. Mushfiq, fifth time in this over. Played that reverse sweep. This time he didn't got enough pat onto that, but good enough for Suleiman to rotate the strike. With that rotation of strikes, Skobana moves on to 15 on the board. 30 more runs required for the victory in 19 deliveries. Mushfiq. Balsa, exquisite cricketing stroke. Even the fielder has got a hand onto that. But still what ball is going towards a deep gully region, deep backward point region. Before the fielder from the deep cow point will going to run across this to left to field the ball. Ample time for the batter Amit to complete the two valuable runs. So the first productive over from the point of view of friends Makyar came in this particular over. Altogether 2 boundaries and 13 runs came from this over. 17 on the board without loss of any wicket. 28 required in 3 overs. 18 ball 28 and 9.33 runs per over the run rate required. And this is because of the previous over, the productive over from the point of view of friends Makyar. So next match will be played between Scissor Rockers versus Mansho Talapadi. So that I request both the captains please be reported here for the tossing ceremony. Friends Makyar, they defeated Mansho in the opening match with that fantastic chasing. And they're playing their second match. As far as the Scissor Rockers is concerned, they lost their first match against Sam 11. They had to open the account in a points table. Left arm bowler brought into. Oh, opportunity missed out by Irshad, isn't it? Sulaiman almost struggling in his crease after he's just tried to drive the ball. He's out of the crease and wicketkeeper Irshad, slight bit of fumble, allow the bowler batter to back into his crease. So good delivery to start with. Second time in this over. Left arm round the wicket he balls. Going for the expansive drive. Sulaiman didn't got that much of enough bat onto that. He's a single for him with that single. Skobana moves on to 18 on the board. Ashfaq the bowler, the left arm bowler. Always they are very effective, the left arm bowlers. Third time in this over. Again played it nicely down to deep long on region for a easy single. So Ashfaq will not going to bother about the single. You know exactly they need to protect the boundaries. Scissor Rockers and Mansho. Scissor Rockers are in a fielding, so that no question of calling the captain for the toss because they are going to play the next match after this. They are on a field. Scissor Rockers searching for the first victory. The battle is on. Ashfaq will go into ball fifth time in this over. Left arm around the wicket balls. Oh, that will going to be a wide. That will definitely going to be a wide. One more extra. With that addition of that extra score, but moves on to 21 on the board. 24 more runs required for the victory. Ashfaq balls. It's going to be one more wide delivery. These all runs are bonus. The making a mistake in this situation, you are making a crime. 22 on the board. 14 ball and 23 runs required for the victory. Ashfaq, left arm. Oh, lovely delivery. Going for the expansive drive. Just getting his pen put out of the line to get that off drive. Missed it completely. Good bowling there from Ashfaq in the relegation. After that, 2 wide. He back
with a stronger line. Left arm. Balled him, cleaned him up. At last, the batter lost his patience, just wanted to go for the expansive drive, expose this all stamp. And Ashfaq bowled a beautiful delivery which is coming into the batter, left arm bowling. Even they bowled the leg cutter, but coming into the batter for the right hander. And ball which is hits the stumps. To good bowling here from the bowler Ashfaq. The 3 gone after completion of over number 3. Chasing a total score of 45. Still a team. Friends Makyar are searching for the right track. It's 22, means 23 required in remaining 2 overs. 12 balls, 23 required. Having Suleiman in the strike and a new batter coming to the middle. The game changer is the game changer. The man who really played a match-winning knock in the first match for Makyar. Muaz came into middle. He played one exquisite switch hit in the previous match and one lofted drive to mid-wicket for a 6 and changing the complexion of the game. Now having him, the match which is not yet over. Irshad is experienced campaigner. Brought into attack. This time Suleiman lofted at one. Down to deep longer. Cover point region. Misjudgment by the fielder, but he managed to get the ball inside the boundary line and a couple of runs. Now any confusion there here for the umpire? Just they are asking for the third umpire to see whether the fielder is crossed the boundary line, whether he has got any contact with the ball when he was, whether he was touched the rope or not. The umpire has got a doubt in the mind. Always umpires can ask for the third umpire. So just like umpire, yes, it is a 4, and he's got a contact with the ball when he was, yes, the boundary signal by umpire, and he's out of the boundary line. With that boundary score, and moves on to 26 on the board. This time Suleiman lofted, chance here for the fielder. No, ball is landed safely, 1 bounce. Collected by the fielder from deep extra cover. Longer fielder have to run across his left to field the ball, couple of runs. So match which is not yet over, and Suleiman, what an innings he's playing for his team. And scoreboard moves on to 28 on the board. 17 required. Catch, it is a call. The midfielder taken that catch comfortably in the end. That's the end of Suleiman's innings. Again, he just wanted to go for the expansive drive. Lofted a drive towards extra cover, but doesn't get hold of that one properly. Ball went high up in the air, but midfielder making no mistake at all. Irshad got a vital breakthrough for his team. After he conceded 6 runs in 2 balls, then he bowled a very good delivery to receive the wicket of Suleiman. Without completing the job, Suleiman back in the pavilion, but he played a very good fighting knock for his team. Scored a valuable 20 runs from his bat, and he played 2-3 delightful boundaries for his team. 3 delightful boundaries. Muaz is in non-strikers and the new batter just in number 17. Muzamil played it and down to extra cover region. Will they come back for the second? Yes, it does. Couple of runs has been taken and scoreboard moves on to 30 on the board. 15 required for the victory. 2 brothers are in the middle for friends Makyar. They were attempting to put a switch it. Went in the air but safely landed. One more single. With that single, scoreboard moves on to 31. 14 required and 7 deliveries remaining. Every ball is required. 2 runs. Irshad. This time, what a switch it. What a batsman he's been. Muaz, absolutely you are a beauty. Fantastically struck. Doesn't look like the right-hander batter hit that ball. It looks like even for the left-hander also it's not so easy to hit so sweetly. My goodness, can you believe this? Have a look at that footwork and exquisite timing. The moment that ball left the bat of Muaz, unbelievable. The ball is racing towards the fence.
with the direction of the wind, that ball gone a long and many a miles out of the boundary line. So with that, 6 over jumps into 37. That means 8 runs required from last over. A quite expensive over which is comes to an year of his shot. 15 runs came from this over. It's very expensive indeed for the condition of the game is concerned from the experienced player Irshad. Now Salim Madur have to do the magic in the last over. The brothers are in the middle for friends Makyar. 8 runs required in last over. 6 and 8 required. Fantastic chasing is in progress, but job is not yet over. 8 required from 1 over. First ball, lovely collection behind the stump. Chance of Mohas gone, my goodness. Why to take that much of risk, isn't it? Of course, the one delivery, which is slight a bit of extra bounce here for Muzamil, but no excuse at all. Good thinking by Irshad, presence of mind, seeing that Muaz is out of the crease, quickly returns the ball to the hands of the bowler, and bowler absolutely knows that we are going to catch big fish in the net, not to give up this opportunity. So danger man Muaz departs. It's not a time for Muaz to back in the pavilion. This is a time for Muaz to finish the match. But unfortunately, the brothers having no understanding, of course, in that middle of the pitch. It's not a big mistake of both, because Muaz desperately wanted to get back into the strike. Muzamil knows that there's no chance at all for any run, no chance of responding for that run. The mistake of Muaz that he need to be little bit patient. Now 5 balls remaining and 8 runs required for the victory. Salim again played it down to mid-on, not more than a single. With that single score, but moves on to 38 on the board. 7 required. 4 balls remaining. Shahik. Oh, what exquisite shot! What a fantastic strike! The match, the scores are leveled. Unbelievable switch it. My goodness, Shahik. What a fantastic strike. 2 sixes really changed the complexion of the game. What a brave and gutsy batting, isn't it? Facing his first delivery, hitting a 6 mid is not so easy. Against the pace, playing such a exquisite switch it. Outstanding stroke. Just a single run required. This is going to be a winning run. The run out will not going to do anything here. They won the match. Because there is no run out, I will tell you, because the match which is finished in first decision of wide itself. So no question of giving run out here. They got a run what they were really wanted. Fantastic chasing again from friends Makyar. What a fantastic match is when it comes to an end. Even the team Caesar Rockers are can't believe their eyes how the match which is slipped out of their hands. That might be the big problem here, that the team is really having some shortage of the bowlers in this side. The man of the match goes to the man who played a responsible and experienced innings, the Suleiman of team Friends Makyar, who is judged as the man of the match. So I request Suleiman to go and collect your man of the match award, because he is the one who opened the gate for the team.
We have scored a very important 20 runs from his bats. My request, Suleiman, please go and collect your man of the match award from our chief guest in our presentation dais. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಸುಲೇಮಾನ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸುಲೇಮಾನ್ of Friends Makyar for his fantastic knock of 20 runs from his bat. Congratulations and better luck for remaining matches. Cesar Rocos takes on Mancho in the next match, the match number 5 of this prestigious BPL season 5, which is proudly presented by Brothers Makyar. One more good match which is comes to an end. All the matches absolutely the great matches. We'll take a short break here, and after a short break my friend Gopi will going to take over the microphone. Before that, I would like to give special thanks to the donors and sponsors, those who are directly contributed for the success of this cricket tournament. The man of the match which is donated by 10 Shaukin DXB. The best fielder which is donated by Shakir of DXB. Catcher of the tournament which is donated by Ubi DXB. Catch of the tournament, best bowler, best batter, best wicket keeper, all donated by Ubi DXB. And first trophy which is donated by Safwan of DXB. Second trophy which is donated by Vintage Street. And first cash which is donated by TM Ibrahim. Second cash which is donated by Amir Makyar. We are thankful and grateful for your contribution for this success of season 5 of BPL. We are thankful and grateful to all the supporters, Fida guys and Fida Zafar, Shafi KC Road, all Ayan Fayaz, Sattar Makyar, Salman Makyar, Bashir Makyar and BM Farooq. Thank you. We are going to take a short break. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ರೆಹಮಾನ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಮಕ್ಯಾರ್.
Shiza Rockers will take over Mansho Talapadi in the match number 5 of this prestigious cricket tournament. BPL season for 2025 is now coming up, which proudly presented by brothers Makyar in this beautiful Fija ground Makyar. And the news is from the center that the captain of Mansho Talapadi, after won the toss, he elected to field first, and because of that, the openers of Shiza Rockers are the crease are Irshad NM versus Salim Madu. This is the second consecutive match for Shiza Rockers, and they lost their first 2 matches. And this is the most important match for them as far as the victory is concerned for Shiza Rockers. और उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज इरशाद एनएम और सलीम माडूर मौजूद, और तैफ उल्लाल इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेल दिया इस वक्त डीप थर्ड मैन सी मारे का बाहर 4 रनों के लिए। इरशाद अन्नम के द्वारा ये स्ट्रोक लग चुका है इस वक्त। जस्ट प्लेड दैट वन विद अ रिवर्स शॉट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल, जस्ट वाइड ऑफ द शॉट थर्ड मैन फील्डर। और इस चौके के साथ बेहतरीन तरीके से पारी की शुरुआत इस वक्त कर चुके हैं। और तैफ एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहे इस वक्त, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन मिलेगा इस वक्त बल्लेबाज को। और इसी रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निश्चित रूप से जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त शिजा रॉकर्स के लिए इस मैच को जीतना बेहद जरूरी बन चुका है। अगर उन्हें इस श्रृंखला में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो अगले दौर पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए। और इस बीच इरशाद एनएम ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। सलीम माडूर सामना करते हुए ड्राइव कर दिया इस वक्त। सलीम ने बड़ी लंगोन पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू हो चुका है और गेंदबाज तैफ उल्लाल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इरशाद के लिए। रिवर्स शॉट फैंटास्टिक स्ट्राइक बट स्ट्राइट टू फील्डर एट डीप बैकवर्ड थर्ड मैन। बहुत ही चतुरता के साथ इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्डर को नियोजित इस वक्त किया था गेंदबाज ने। और स्ट्रोक बेहतर था इरशाद का, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। और इसी रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और तैफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार ऑन साइड पर उछाला डीप मिड विकेट पर, फील्डर हालांकि थोड़े से फिसल गए थे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक तेजी के साथ वो पहुंचते हुए और बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। स्कूप कर दिया था ऑफ द टोज इस वक्त सलीम माडूर ने, और 1 रन प्राप्त करने में सफल। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 1 रन के साथ 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और तैफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता चूंकि और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 9 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। गेंदबाज तैफ उल्लाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इरशाद के लिए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, इस वक्त स्वीप करना चाहता चूंकि विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटकाए, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। ओवर completed, first over completed, 9 on the board yet to lose the wicket. Steady start for Shiza Rockers after being losing the toss and put it to bat by Mansho Talapadi in the match number 5 of this prestigious cricket tournament, DPL season for 2025. They are 9 without loss after first over. बहुत ही प्रखर धूप मैदान पर छा चुके हैं। दोपहर के 1:45 यहाँ पर बच चुके हैं, 1:46 कहना पड़ेगा। और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी जो गिने चुने इस मैदान पर मौजूद है वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हैं। लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस मंगलुरु का तापमान आज दाखिल हो चुका है। और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई, और इस भीषण गर्मी तले एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला डीपीएल सीजन 5 2025 की शानदार प्रगति होती है, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है ब्रदर्स मक्यार ने। और
मैच नंबर 5 इस श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर शुरू हो चुका है। गेंदबाज इलियास मक्यार गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सलीम माडूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इलियास तैयार। ये गेंद उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और लेग बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 10 रन, डबल डिजिट 10 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है और इलियास इस वक्त गेंदबाजी करेंगे इरशाद के लिए और इरशाद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई इस वक्त गेंद को छोड़ दिया था, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 11 ऑन द बोर्ड, ये टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। इलियास दाहिने हाथ ऊपर द विकेट एक बार फिर से इरशाद के लिए। ये गेंद इरशाद ने गेंद को उछाल दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट पर जाने के बाद लॉन्ग ऑफ फील्डर के द्वारा कुछ हद तक मिस फील्ड जरूर है, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 12 ऑन द बोर्ड, ये टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार इलियास इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए सलीम के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 7 से 8 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद। यह गेंद सलीम के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद थी इस वक्त और वाइड का इशारा अंपायर का। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर। 13 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इलियास एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए एक बेहतरीन आरंभिक शुरुआत की जरूरत है यहाँ पर शीजा रॉकर्स के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और इस बीच इलियास अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद। ये गेंद उछालना चाह, नॉट करके दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 ऑन द बोर्ड, टू लूज एनी विकेट। 5 रन्स ऑलरेडी स्कोर्ड इन द फर्स्ट 3 डिलीवरीज ऑफ दिस ओवर फ्रॉम इलियास। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इलियास इस वक्त तैयार। इरशाद के गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार स्वीप करना चाहता लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट करने में सफल। गेंद पहुंची मिड विकेट पर काफी धीमी गति से और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा अपनी बाईं ओर जाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 15 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका दूसरा ओवर प्रगति पर और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश करते हुए ये दोनों बल्लेबाज और इलियास अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह, गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर। इरशाद काफी तेजी के साथ स्ट्राइक रन की ओर दौड़ा है और 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। अंतिम क्षण में गेंद फील्डर के हाथों से छूट गए थे और बल्लेबाज इसका फायदा उठाकर 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। 16 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 16 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अंतिम बार इस ओवर में इलियास गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार इरशाद सामना करने के लिए तैयार और इलियास की ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ। इरशाद ने मिड विकेट पर फील्डर दौड़ कर रहा है, थोड़ी सी मिस फील्ड, बैकअप होता हुआ दूसरे फील्डर द्वारा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन पूरा करने का। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। इन 2 रनों के साथ
18 रनों पर 18 on the board. First over 9 runs, second over cost also 9 runs. 2 overs, they are looking in a good situation. In fact, for Shiza Rockers, it's 18 without loss after 2 overs. चम्मी गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और वो गेंदबाजी इस वक्त करेंगे सलीम के लिए और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। मैच नंबर 5 इस बेहतरीन श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता है बीपीएल सीजन 5 2025 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया ब्रदर्स मक्यार ने सुंदर से विशाल से फिजा मैदान मक्यार पर। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज चम्मी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम इस वक्त सामना करते हुए और पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए चम्मी। यह गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और चम्मी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इरशाद के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहता है। इरशाद ने काफी तेज गेंद थे, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद और गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए और आखिरकार सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर 2 गेंदें इस ओवर में चम्मी फेंक चुके हैं और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इरशाद के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट। एक बार फिर से गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकरा, विकेट कीपर तेजी के साथ तक गेंद पर लब के, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का लेग बाय के रूप में। ऐसा कहना पड़ेगा जैसे ही गेंद उनके पैर पर टकराई रन के लिए दौड़ पड़े और आखिरकार लेग बाय के रूप में 1 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। 15 गेंदें उनकी पारी में फेंके जा चुके, 15 गेंदें और फेंके जाने बाकी और चम्मी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद को खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए और मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिए और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 on the board, yet to lose any wicket. Slowly and steadily this partnership is now building up for Shiza Rockers। और चम्मी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम के लिए। फुल टॉस उछाला लॉन्ग ऑन पर सीधे फील्डर के हाथों में और इसी के साथ अंतिम कार सलीम का विकेट यहां पर गिर चुका। जस्ट ट्राइंग टू लॉफ दैट वन ओवर द फेंस, नॉट सक्सीडेड, नॉट क्वाइट मिड विकेट एंड द प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही जस्ट पेड द पेनल्टी फॉर दैट। लॉन्ग ऑन फील्डर मेड नो मिस्टेक। सलीम डिपार्ट्स आफ्टर बीइंग प्लेइंग शॉर्ट बट गुड इनिंग्स ऑफ 7 runs and Shiza Rockers lose their first wicket. It's 22 for 1. So number 3 batsman Ashfaq is now comes out to the middle और वो इस वक्त यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाज चम्मी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करते हुए अशफाक के लिए। तो इस वक्त गेंदबाज चम्मी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद अशफाक ने गेंद को उछाला है, गेंद लॉन्ग ऑन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए आखिरकार वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर इस कैच को लपकने में सफल।
पहली गेंद पर गेंद को उछालना चाहता सीमा रेखा के बाहर, लेकिन अंतिम का गेंद को उछाला जरूर, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे आगे की ओर उन्हें दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन गेंद को यहाँ पर लपकने में सफल, एक बेहतरीन जजमेंट के साथ। और अशफक की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। गोल्डन डक के रूप में उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका है और 22 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है शीजा रॉकर्स। इट्स 22 for 2। Three overs completed. The batsman शमीर इज नॉट कम्स आउट टू द मिडल। जहां तक शमीर का सवाल है, पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज सफवान और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ उनकी पारी में। तो इस वक्त शमीर नॉन स्ट्राइक पर मौजूद और इरशाद जो कि बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सफवान, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच एक रन का इजाफा, 1+1 2 रन, इनफैक्ट कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल। और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 24 रनों पर। 24 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 स्टार्टेड जस्ट शॉट व्हाइल अगो। और सफवान एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर जो कि विकेट के बिल्कुल निकट इस वक्त खड़े हुए। और इस बीच बल्लेबाज शमीर सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। सफवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए और वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट सफवान इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। और यहाँ पर some funny things has happened there। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त सब कुछ सुरक्षित इस वक्त बल्लेबाज के लिए। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 25 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress। सफवान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। गुड वन फ्रॉम द बॉलर। इस वक्त इरशाद रन लेना चाहते थे लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके। देखा कि विकेट कीपर अपने दूसरे प्रयत्न में तेजी के साथ गेंद पर लपक रहे हैं और आखिरकार सब कुछ सुरक्षित इस वक्त बल्लेबाज के लिए। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 25 रनों के ऊपर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और सफवान फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा। अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त गेंदबाज सफवान तराशते हुए काफी वाइड इस ओवर में वो फेंक चुके हैं और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर। 26 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। सफवान दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए, विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर पहुंचे, थ्रो किया था इस वक्त लेकिन आखिरकार बल्लेबाज एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं लेग बाई के रूप में। और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और सफवान इस वक्त गेंदबाजी करेंगे इरशाद के लिए। काफी लंबा ओवर उनका इस वक्त प्रगति पर। इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इरशाद के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार।
Lofted and finds the gap as well. One bounce into the fence. This is a fantastic strike. Slog sweep shot. He played that one. ऐसा कहना पड़ेगा. मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ. गेंद बल्लेबाज इरशाद ने और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 31 रनों पर. 31 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ सफान का. और इस बीच गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. सफान इरशाद के लिए जो कि काफी थके मांदे इस वक्त नजर आते हुए सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा. गेंद पहुंची इस वक्त शॉट फाइन लेग पर. जस्ट सिंगल ही गॉट बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर. 32 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और सफान काफी गेंदे इस ओवर में वो फेंक चुके अब तक वाइड के साथ और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त समीर के बल्ले से लगता हुआ. खाली क्षेत्र चुनते हुए लंगोन और डीप विकेट के दरमियान गेंद को इस वक्त उछाल दिया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए. शमीर ने और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर. इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. 36 in fact the score. 36 for the loss of 2 wicket. और जहां तक सवाल है $36 the score now. सफान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त. वाइड अगेन. 37 the score now. What a fantastic over in Shiza Rockers point of view progressing here. काफी गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं सफान. एक लंबा ओवर उनका प्रगति पर रहा. This time bowled leg side outside the leg stump but not so missing 2 for outside the leg stump and over has been completed. So prolonged over from Safwan came to 10 deliveries bowled in this over from him and after completion of 4 over they're looking in a good situation. In fact it's 37 for the loss of 2 wicket after completion of 4 overs. Last over remaining in the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी. नौफल स्टार्ट द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. इरशाद जो कि एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और गेंदबाज नौफल ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ताइन हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ताइन हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. पहली गेंद इस वक्त फुल टॉस गेंद को स्टीयर करना चाहा अंतिम क्षण में लेकिन आखिरकार गेंद को स्टीयर नहीं कर पाए और गेंद विकेट कीपर के हाथों से चूकी वहीं पर गिर गई और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो जहां तक सवाल है इस वक्त नौफल का तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार उछाला है एक्स्ट्रा कवर पर और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का तो रन्स मिलेंगे 2 रन इस गेंद पर. तो अगर नौफल इरशाद को बाउल्ड आउट करते सिर्फ बोल्ड आउट करते तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार इस वक्त घोषित किया गया है. तो देखते हैं हमीद बिट्टू इनकी ओर से 1000 रुपीज कैश प्राइज फॉर नौफल इफ यू बोल्ड इरशाद. इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा. शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची. रन आउट का खतरा हो सकता है. इरशाद पहुंचे. इस बार विकेट उखाड़ चुके हैं और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. So Irshad, the man dismissed. Unfortunately, he was run out after being playing a fantastic knock for their side. He is backing to pavilion and the last over is now progressing here. 39 the score. 3 balls left now in overall calculation in their innings.
न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, नौफल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे शमीर के लिए। तो नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद नौफल दाहिने हाथ राउंड द विकेट शमीर के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। तीन गेंदें अभी भी शेष उनकी पारी में। तो जहां तक सवाल है फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए, और नौफल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फीडर मौजूद। इनफैक्ट दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दिस टाइम ही वोंट सर्वाइव। ಸೇಮ್ 11 ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ. So single run added, 40 on the board, 2 balls remaining in their innings now. नौफल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Here he comes. Right arm round the wicket bowls. इस बार ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग पर थोड़ी सी मिसफील्ड, और बल्लेबाज दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त। विकेट कीपर चूके, विकेट कीपर के हाथों से गेंद इस वक्त चूक चुका है, और लेग बाई के रूप में यह 2 रन यहां पर जुड़ चुका है। आसान सा रनआउट का मौका था स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन विकेट कीपर थ्रो को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए, और बल्लेबाज के पास मौका 2 रन यहां पर सुरक्षित पूर्ण करने का। 42-42 लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। नौफल दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अंतिम गेंद, बेहतर गेंद थी इस वक्त। इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है अंतिम गेंद पर। So 5th wicket fallen and the innings is up. They finished with 42 for the loss of 5 wicket in the stipulated 5 overs for Shizan Rockers, and now the target for Mansho Talapadi is 43. They have to score for victory. 43 the target for Mansho Talapadi, set by Shiza Rockers. And as far the required run rate is concerned, exactly 8.60 runs per hour they have to score for victory. 43 they have to score in the stipulated 30 deliveries. That means in their stipulated 5 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. और उनकी पारी की शुरुआत होगी कि छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक फिर से हम अंग्रेजी में सतीश के साथ उपस्थित होंगे जब यहाँ पर मैनशो तलपाड़ी की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you very much, Gopi. 43 the target for the team Mancho to register their second victory. But for team Caesar Rockers, they're searching for the first victory and scored a valuable 42 runs. And the innings of Isha Denham this takes them into that fighting total. 15 runs he scored from the bat. And now they have to depend that total. The bowler will go into start the proceedings. Akash and Chemi, one who scored of 30 runs in the previous match, will go into his first ball and wanted to go for the reverse stroke in the negation, beaten by the pace, and even the line is so good in the negation for Chami, and beaten by the even wicketkeeper also beaten in the negation. Just short fine leg fielder fields the ball, and there is no chance at all for any run. Akash, second time in this over, right arm over the wicket, pass umpire Sriraj. To Chami. Chami drives that one, lack of placement, played it straight to the hands of mid on. Quickly they are going for the single. Chami is off the mark, one without loss of any wicket in the over number first is in progress. Devi will go in to take the strike. Third time in this over. Akash. Short run up. This time single-handed switch it. And he got a distance. But just wait for the umpire signal. Yes, he got a distance. 6 signal by umpire. Fantastic reverse sweep. Single-handed. Lost his grip over the bottom hand. But still he went into his top hand and get into that distance down to deep third man region. With the 6, scoreboard jumps into 7 on the board without loss of any wicket. Reverse sweep, catch it is a call and is gone. This time he's trying for the sweep shot, improvising that one. But improvisation, what you are looking for, what he is looking for is down the ground, but he's gone. Ball taken an aerial route. Short fine leg fielder takes a catch. Small cameo of Davies comes to an end. It's 7 for loss of 1 wicket. Akash, good comeback after that 6. Immediately in the very next ball he got a wicket of Devi, the new batter in his Taif, one more very important player for the side of team Mancho, one who played a good innings in the first 2 matches. Will go into face next delivery. Akash, 5th time in this over. This time that will go into be punishable from the umpire. Far outside the leg stump, just looking for the extra pace in the negation by the bowler Akash, and scoreboard now moves on to 8 without for the loss of 1 wicket, chasing a total score of 43 to win this match. Akash. This time played it very nicely, 1 bounce, very good stop. No, I just wait for umpire signal. Will it going to be a saved or boundary? Just a couple of runs. Excellent save by the fielder. When he got a contact with the ball, he's in the air, with the body in the air, and good save, fantastic save, and scoreboard jumps into 10 on the board for the loss of 1 wicket. Akash bowls. Wanted to go for the switch, it missed it completely. That's it. 10 runs came from the first over, chasing a total score of 43 to win this match. 33 required in remaining 4 overs. 24 ball and 33 required for the victory. You are watching a fantastic and prestigious BPL Season 5, which is proudly presented by Brothers Makyar in this most beautiful Fiza cricket ground here in Makyar. And these 2 teams are battling for the victory. The must-win match here for the team Caesar Rockers, and if they wanted to win the match, they have to put some extra effort in the bowling and fielding department.
So after that power play, the spread out field set here for Chami. The danger man as far as the opposition is concerned. The fielder down at deep extra cover, long off, deep mid wicket, deep square leg in front of square. The third man, gully fielder, going back to deep gully. The fine leg came inside the ring for Chami. And Suleiman will go into starts his first over and second over of the innings of Team Mancho. Suleiman. Right arm over the wicket balls. This time Chami drives at one and good piece of fielding there by the extra cover fielder. Ample time for the batter Chami to complete the single. He got his second run and scored numbers on to 11 on the board for the loss of 1 wicket. That brings Taif into strike now. Suleiman. Bounce, improvisation, played it between the fielder, down to define like through fielders behind the ball. One of the fielder will going to get that one. And meantime, the ample time for the batter Taif to come back for the second. With that couple of runs, scored numbers on to 13 on the board for the loss of 1 wicket. You're watching this prestigious cricket tournament. The match number 6 is in progress. The league stage matches, 4 teams having a competition. Again, lovely reverse sweep, but protection is given for that reverse sweep in the deep, in the third man region, so that Taif has to settle for the single. With that single, scored numbers on to 14 on the board. Over number 4, second is in progress. 4th delivery of the second over. Suleiman. Right arm over the wicket. Bounce to Chami. Chami this time wanted to pedal the ball. Ball is in there for a while, but no man landed. There is no fielder in the circle in the backward point region, so that is a single here for the batter Chami. Scored numbers on to 15 on the board. Suleiman to Taif. This time ball is in there and taken there by the short fine leg fielder. Just he tried to play across the line. He almost drags the ball from outside the line of off time. Leading edge of the bat, top edge of the bat, ballooning up in the air. The short fine leg fielder making no mistake at all. Wicket number 2 gone of Team Mancho. It's 15 for loss of 2 wicket. As far as the condition of this cricket ground is concerned, the shot selection is always going to be key for the success. The afternoon, the wind, which is changing the direction, it's going in front of wicket. The morning, it's coming in front of commentary box. Now it's going against the commentary box. Meantime, in the offside region for the right-hander batter. If you have got the good left-hand batters in your side, it will going to have benefits the team. The behind the wicket, square of the wicket in the offside region, it's very handy to score the runs. Suleiman. So far, it's a tidy over is in progress. Right arm over the wicket. Nicely flicked set off his legs down to fine leg region. They completed single, looking for 2, but good throw coming from the fielder. Just a single, great over, tidy over from Suleiman. After completion of over number 2. Mushfiq completed a very good over, very tidy over indeed. After completion of first over, it's 16 on the board. Seven more runs required for the victory in the 3 overs. 9 runs per over the required run rate. Abu coming down in the order. Previously is opener batter for the side, changing his batting position in this particular match. Ashfaq brought into attack to bowl the 3rd over, and Abu will go in to take the strike. No one there in the cover point and extra cover.
Long off is there. Deep third man is there. The wind which is going behind the wicket. Starts with the delivery, which is a misjudgment by Abu. The ball is just passing around the legs of the batter, and no run scored. The strong wind is passing here in our commentary box. We can see that in front of commentary box, the winds which is flowing even behind the wicket as well. Ashpak, second time in this over. Left arm. Oh, this time lofted, catch it is a call, and he is just a spectator. What a fantastic struck. Abu is a clean striker of the ball, isn't it? Even though it's not easy to get the distance in the afternoon in the onside region, but he's taken a stated area in front of wicket. Always not difficult for the batter to get the distance. Fantastically struck, and with that 6 Coburn moves on to 22 on the board. Another 21 required for the victory. 16 balls remaining. Sub the ball. Didn't quite getting that one from the middle of the bat. Just a single. With that single, Coburn moves on to 22 on the board. 23. 20 required from 15 balls. Ashpak. This time, what a shot! Magnificently struck. Inside out cricketing stroke there from Chami. Ball racing towards a deeper extra cover boundary for 4 runs. Lovely shot there from Chami. The idea is very clear there for Chami. You know exactly the field where the fielder is. Well calculated cricketing stroke there from Chami. Just a little bit making room to play the shot. Exquisite placement. And now 14 balls remaining. Scoreboard is at 27, means 16 runs required for the victory. Now they're adding one fielder down to deep cover point region, deep extra cover. The mid wicket coming inside the ring. Right left arm. Balls this time wide outside the line of off time. One more extra. Shime 11 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Shime 11 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. The sensible, very sensible there from Chemi. Pushes the ball in the point region and picked up a single for that. With that single, Coburn moves on to 29 on the board. 14 required, 13 remaining. Ashpak to Abu. Left arm round the wicket. Wanted to go for the expansive drive, beaten by the pace and line, which is beautiful there from the bowler. So 2 overs remaining, 12 balls remaining, and they have to get 14 runs to win this match for team Mancho. Toss ball. Ishad will go into ball. This time catch it is a goal, but Chami got the distance. What a striker! What a good striker of the ball. When Chami is in arc, the ball definitely will going to disappear out of the park. Such a clean striker of the ball. Absolutely joy to watch his clever cricketing strokes. Again drives that one down to deep long on. Say deep long on boundary for 4 runs. Raising towards the fence, deep long on boundary for 4 runs. Now Chami is in a hurry to finish this match as quick as possible. And scoreboard jumps into 39 now. 5 required for the victory. The pressure and the frustration. Wide signal umpire. With the addition of that wide, scoreboard moves on to 40. 3 runs required.
This time Chammy finished the things in a style with a 6. What a comprehensive victory. What a fantastic batting display here from Chammy. Once again leading from the front. And with that victory, the team are registering the victory. Hard luck here for the team Caesar Rockers. They couldn't manage to win a single game out of 3. They lost all 3. Now we have a 10 minutes break here. After the 10 minutes break, we'll going to start next match. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಿದಂಥ ಸಿಜಾರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಶೋ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಚಮ್ಮು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 10 ನಿಮಿಷದ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. We have a 10 minutes break. After that, we are going to start the last league stage match of the tournament. Will be played between our friends Makyar versus Saim 11. So Chammy once again the man of the match for his all-round performance. Picked up 2 wickets as well as scored 24 unbeaten runs for his team. So again Chammy is going to receive the man of the match award from our chief guest. And this presentation dies the second consecutive man of the match for Chammy for his all-round performance. 1 over 3 runs and 2 wickets and scored 24 unbeaten for his team. A well-deserved man of the match award for Chammy. Thank you. Congratulations. Thank you.
Welcome back. Good afternoon, cricket lovers. After that lunch break, we are straight away into that last match of the league stage. And the team Friends Makyar, after winning the toss, they elected to field first. So that I request the fielding team please enter into the ground. And opening batters of Sim 11, I request you to please, the batters please get ready. ಅದೇ ಒಂದು ಜಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಒಂದು ಸೆಮಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ അങ്ങനെ ആക്കണല്ലേ എല്ലാം തീരല്ലോ സാമാൻ ಅದೇ ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಎರಡು ಸೆಮಿ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ So very interesting match will going to start between Friends Makyar versus Sim 11. If Friends Makyar will going to win this match, they directly qualify for the finals. If Sim 11 will go into win this match, all three teams will going to have same points, and we are having lucky lots, lucky draw. And in that lucky draw, those who are very lucky, they will go into the finals straight away. And there's they are not lucky, they will have to pay semi-final. And wait and see. And this is going to be a very interesting match as far as point of view of this BPL season 5 is concerned, and which is proudly presented by Friends Makyar. Very fantastic and systematic cricket tournament is in progress. So just we are going to start this match, and before this match will going to start here, we have one more very young commentator, Mr. Naufal is here, and the commentator in our state language and sweet language, Kannada. I request Mr. Naufal and to have the microphone in the innings of team Sim 11 batters. I request you please to enter the ground. It's over to Naufal. So a lot of best wishes coming for this prestigious cricket tournament. We have one more very active the group in WhatsApp pages, Handram DK cricket group, and best wishes coming from admin of this cricket group, Mohammad Arif, and Mohammad Arif Bajal sending best wishes along with the Imran and Achi Kumra. Thank you very much for your best wishes for this cricket tournament, one of the most exciting and as well as most active group in WhatsApp. Thank you very much for your best wishes. Thank you.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ರಿಫಾಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಎಸ್ತಗಾರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜೀಸ್ ಇವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಶಿಯಾಬ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಫಾಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೇಮ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸ್ತಗಾರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜೀಸ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ 4 ರನ್ಸ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ದಂಡನೆ ಇದು. ಶಿಯಾಬ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಯಾಬ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಶೈಮ್ 11 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 4 ಓಟ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ತಗಾರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜೀಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಮುಲ್ಲಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಶಿಯಾಬ್. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೈಮ್ 11 ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ consecutive 2 delivery 2 boundary. Absolutely fantastic batting Shiab. Back to back 4, 2 more extra. Back to back 4 run added. Total score moves into 8 on the board. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 8 ಓಟಗಳು. ಶಿಯಾಬ್ ರವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಶಿಯಾಬ್. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಜೀಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಶಿಯಾಬ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತ. ಎಸ್, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜೀಸ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಶೈಮ್ 11 ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನ ಕದಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಯಾಬ್. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಓಡಿ ಬಂದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಶೈಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮುಹಾಸ್. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಶೈಮ್ 11. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜೀಸ್. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ರಿಫಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಶಿಯಾಬ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿಫಾಸ್ ಇವರ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗದ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 14 ಓಟಗಳು. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿಫಾಸ್ ರವರು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಬಂದಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಅಜೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಸೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ದಾಂಡುಗಾರ ರಿಫಾಸ್. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶೈಮ್ 11. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 15 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಶಿಯಾಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜೀಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಶಿಯಾಬ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 16 ಓಟಗಳು. ಯಾವುದೇ ಹುದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ into 16 for Knowles. What an outstanding, absolutely fantastic batting Shiab and Rifas. Over number 1 completed. Total score moves into 16 for Knowles.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್ ಇವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಮೀದ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಯಾಬ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಶಿಯಾಬ್ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಯಾಬ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ. ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರ ಶಿಯಾಬ್. ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 1.1 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 17 ಓಟಗಳು. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್. ರಿಫಾಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಫಾಸ್. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ರಿಯಾಸ್. ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಮಾಲಕ ರಿಯಾಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸಲುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಇದು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಖಂಡಿತ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ ಶೈನ್ 11 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಿಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶೈನ್ 11 ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನ ಕದೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮುಜಂಬಿಲ್ ಗೂಟರಕ್ಷಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಫಾಸ್. ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಯಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿತ್ತು 11 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಅಂದರೆ ರಿಫಾಸ್. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 22. ಶೈನ್ 11 ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಸಮಯಗಳನ್ನ ಅರಿತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ 3 ತಂಡಗಳು ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಯಾಬ್. ಈ ಮೈದಾನದ ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮಯ ಯಾವ ಒಡೆಯ ಬಲ್ಲಂತ ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಶಿಯಾಬ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗದಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 26. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 26 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಶೈನ್ 11 ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರ ಶಿಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ರಿಫಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಾಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರವರೆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮುನೀರ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಇವರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27. 21-27 ಫಾರ್ ನಾಲಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತ ಇದು.
ರಿಫಾಸ್ ಇವರನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೇರ ಡಕೌಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮುಹಾಸ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತ. 22-23 ವರ್ಷದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ರಿಫಾಸ್ ರವರನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೇರ ಡಕೌಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಡಿಪಾರ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ moves into 27 on the board. Time 11. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರಿಫಾಸ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಕು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಟ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕೂರವರ ದಾಂಡುಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 31 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕೂರವರು ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಾಸ್, ದ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಹಾಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಹಾಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕು, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶಿಹಾಬ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭದ್ರ ಪೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಓಟಗಳು ಗಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಶೈಮ್ 11 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32 ಬಂದಿದೆ. ನಿಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬ್. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಶೈಮ್ 11 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಾಸ್. 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬ್. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಶಿಹಾಬ್ ರವರ ಉದರೆಯನ್ನ ಮುಹಾಸ್
ಅನ್ನನ ಹುದ್ದರೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇದು ಮುವಾಸ್, ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತ. ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶಿಯಾಬ್ ರವರನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೇರ ಡಕೌಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಡಿಪಾರ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ moves to 33 on the board. 2.5 ball completed, last one more delivery left. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹಾಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕು, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮುನೀರ್ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಕು. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 33 ಓಟಗಳು, 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಂತರದೊಂದಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರು ನಿಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕೂರವರ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಮ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಸರೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಪಿಎಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೆಸಿ ನಗರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಶಾಹಿಕ್. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 1 ಓಟ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆಜೀಸ್ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬಂದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಶಾಹಿಕ್. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಶೈನ್ 11. ಸತತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಕ್ಕೂರ್ ಅವರ ಅರ್ಭಟ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಕು. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 39 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕು ಆದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಸ್. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಹಿಕ್. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆಟಗಾರ. ಎಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಅಕ್ಕೂರ್ ಅವರ ಉದರಿ ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 39 ಬಂದಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಕ್. ಅಕ್ಕೂರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಿಜಾಮ್ ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ನಂಬರ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ನಿಜಾಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್.
ನಿಜಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದಿಗೆ ಒಂದರ ಬಳ್ಳಿ ಕೈಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41 ಬಂದಿದೆ ಶೈಮ್ 11 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಜಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 41. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಹಿಕ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಹಿಕ್. ಎಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಸತತವಾಗಿ ಅಕ್ಕೂರ್ ಅವರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಡಕ್ಔಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೌಲ್ಡ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ಶೈಮ್ 11 41. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ 4ನೆಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನೋರಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಳ್ಳುಗುಡ್ಡ ಪರಿಸರದ ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ, ಸೂಪರ್ 6 ಪಂದ್ಯದ ಕಿಂಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ನೋರಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೈಮ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಹಿಕ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ನೋರಿಸ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದು ಖಂಡಿತ. Catch it is the call as taken by fielder deep extra cover Muhas. Again one more wicket loss. The wicket number 5. Total score moves into 41. 24 ball completed. Total score moves into 41. For loss of 5 wickets. The last 6 more remaining in this first innings. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಶೈಮ್ 11 ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು 50ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸಂಬಿಲ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17 ಬನಿಯಂದಾರಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಸಂಬಿಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸಂಬಿಲ್, ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸಂಬಿಲ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಸ್. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತ ಇದು. ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ತಲಪಾಡಿ. 42 ರನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಶೈಮ್ 11. 42 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಶೈಮ್ 11. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ 1 ಓಟ. 1ರ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ರನ್ ಆರ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 44. 44 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಶೈಮ್ 11 ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಯಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಹಮೀದ್ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 45. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಶೈಮ್ 11 ತಂಡದ ಡಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಗಳ ದಂಟಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಶೈಮ್ 11. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 46 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go in this first innings. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತ ಇದು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 6. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 46. The 6 wicket down ಶೈಮ್ 11. Total score moves into 46. The last ball of the first innings. ಅಯ್ಯೂಬ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಜ್ಜು ಡೈಮಂಡ್ ಇವರಿಂದ ಬಾರಿಸುವಂತ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗಿರಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಶೈಮ್ 11 ತಂಡದ ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸಂಬಿಲ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು
back-to-back run-outs. End of the first innings. Total score moves to 46. The 47 is the victory target in remaining 30 ball. 30 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 47 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ BPL ಫೈನಲ್ಗೆ ತಾಪುಗಳನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶೈಮ್ 11 ತಂಡ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ 3 ತಂಡಗಳು ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಾಗಿರಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಗೋಪಿ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಇವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. शुक्रिया नौफल साहब, आपकी बेहतरीन आंखों देखा हल सुनाया आपने राज्य भाषा कन्नड़ में। एक बार फिर से आपका अभिवादन हम करते हुए मैच की आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है इस वक्त फ्रेंड्स मक्यार के लक्ष्य है 47 the target for friends Makyar in the stipulated 5 overs. They have to score with the required run rate of exactly 9.40 runs per over. और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक मजबूत शुरुआत, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट they needed if they have to reach the target of 47 in 5 overs with the required run rate of exactly 9.60 runs per over. Hello. So Suleiman and Muzammil, the openers, meantime the bowler starts a fresh proceedings. It's Rifaz and the first ball of the innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। रिफाज 47 रन बनाने फ्रेंड्स मक्यार को इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। तो उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। रिफाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के। और जहाँ तक सैम 11 का सवाल है इस वक्त उन्हें भी इस मैच में विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है अगर उन्हें इस श्रृंखला में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो। और गेंदबाज इस वक्त रिफाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बेहतर गेंद थी। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी। द बॉल केम along the ground at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run.
तो स्कोर रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को उछाल दिया इस वक्त डीप पत्थर बाल सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Fantastic strike, the ball gets some extra bounce at the last moment और गेंद को तिरछे बल्ले के सहारे इस वक्त स्कूप कर दिया था। गेंद के उछाल बाउंस को पहचानते हुए तिरछे बल्ले के सहारे विद रिवर्स शॉट और गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो इस वक्त गेंद को एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहा, लेकिन गेंद इस वक्त उनके पैरों पर टकराए, रन इस बीच नहीं मिलेगा। और रिफाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुलेमान के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इस बीच रिफास परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद को उछाला इस वक्त से कवर फील्डर के लिए मौका जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे गेंद का पीछा करते हुए और गेंद को इस वक्त सीमा रेखा के अंदर बेहतर तरीके से ढकेलने में सफल है। काफी लंबा दौड़ लगाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर और इससे पहले की गेंद को वो फील्ड करके ढकेले, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। इस धीमेपन को, इस गेंद के धीमेपन को पहले पहचान लिया था बल्लेबाज ने, गेंद को स्कूप कर दिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट अंतिम अक्षर में 2 रनों के लिए। और रिफाज अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पोजीशन मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग वन ऑफ देम बैक इनटू द पवेलियन। असल में सुलेमान रन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मुजम्मिल दौड़ कर आ रहे हैं, स्ट्राइक रेट किया, उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और 2 कदम क्रीज से बाहर भी निकल गए। और इससे पहले गेंद इस वक्त थ्रो विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुका था और विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करते तेजी के साथ विकेट यहां पर चटका दिए। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत सुलेमान जो कि एक बेहतर शुरुआत कर चुके थे चौके के जरिए, उनका विकेट यहां पर गिर चुका है। 6 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटते हुए और फ्रेंड्स मक्यार अपना पहला विकेट खो चुका है 8 रनों के ऊपर। It's 8 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress for friends Makyar. Still, they have to score for victory. 39 more runs in remaining 4 plus overs. That means 2 balls left, and still in overall calculation, it's going to be 26 balls remaining, and in remaining 26 balls. In fact, it's तो इस वक्त एक गेंद बाकी है और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रिफाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 25 balls left, 39 more runs required for victory। और गेंदबाज रिफाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है, शाहिक जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। और दाहिने हाथों पर था विकेट इस वक्त, रिफाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद इस वक्त निकल चुकी है शॉर्ट फाइन लेग पर। और जहां तक का सवाल है रनों का, तो रन मिलेंगे 1। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 9 रनों पर। 9 on the board for losing 1 wicket after completion of first over. And let's straight away coming back to the equation. 47 minus 9, that means 38 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs with a required run rate of exactly 9.5 runs per over. 24 गेंदें 38 रन चाहिए। जहां तक मैच के विजय का सवाल है अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा, still it could be anybody's game at this situation। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो नंबर 77 की जर्सी पहने हुए गेंदबाज जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए इमरान, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रनों पर। और इस वक्त पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। एक बेहतरीन एक्सक्यूजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा किया जा रहा है जनाब बदरुद्दीन इनके सारथ्य में। और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट बीपीएल सीजन 5 2025 की शानदार प्रगति होती है, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है ब्रदर्स मक्यार ने। और इस बीच ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर मौजूद है, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 10 for the loss of 1 wicket, 37 needed in remaining 23 deliveries। और
इमरान इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को चिप कर दिया खूबसूरती के साथ, फील्ड क्लियर करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, जब तक वाइड स्लंग ऑफ से फील्डर दौड़ कर आकर डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और इमरान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए मुजम्मिल सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से इमरान की गेंदों का, इमरान दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑफ फील्डर के लिए मौका, ड्रॉप दैट वन, ही ड्रॉप दैट वन। और अंतिम एक्शन में देखना पड़ेगा, इस वक्त खतरा हो सकता है स्ट्राइक रेंज पर, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में सफल गेंदबाज। और अंतिम एक्शन पर ऐसा कहना पड़ेगा, बल्लेबाज फील्डर ने पहले ही डाइविंग लगाई और गेंद बाद में उनके हाथों में आए, तो इस वजह से मिस जजमेंट होता हुआ और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज यहां पर जीवदान के साथ साथ 2 रन प्राप्त करते हुए निश्चित रूप से इस कैच को लपक सकते थे, लेकिन टू अर्ली इस वक्त उन्होंने डाइविंग लगाई थी गेंद आने से पहले ही, और फलस्वरूप मिस जजमेंट यहां पर कर बैठे और 2 रन बल्लेबाज और टीम इस वक्त प्राप्त करता हुआ। ये गेंद स्वीप किया टॉप एज, लेकिन फील्डर काफी पीछे तैनात, डीप मिड विकेट पर रन, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। 15 ऑन द बोर्ड, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, स्टिल द बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। और इमरान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शाही के लिए। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इस वक्त एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद जब तक शॉट स्कोर लेग पर स्वयं विकेट कीपर द्वारा फील्ड हो, अपने बाईं ओर जाकर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और इमरान एक बेहतर लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद, इस बार गेंद को उछाल दिया, वाइड स्लॉन्ग ऑन पर मौका नहीं, जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए इस वक्त। जी तो कोशिश इस वक्त जरूर की थी डीप मिड विकेट फील्डर ने गेंद तक पहुंचने के, लेकिन आखिरकार गेंद उनके आगे टिप्पा खाते हुए, आगे पिच होते हुए, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 1 रन प्राप्त करने का। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर, 17 on the board for losing 1 wicket. 8 runs came from this over, 2 overs gone, 17 on the board, 1 wickets lost for friends Makyar. 30 required in remaining 3 overs. 18 balls left, 30 runs required, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 10 runs per over. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो बातचीत इस वक्त जारी खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत इस वक्त जारी है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। दोपहर के 3:30 यहाँ पर बच चुके हैं और ऐसा कहना पड़ेगा धूप का कहर अभी भी मैदान पर, धूप अपना कहर ढा चुका है और गर्मी का एहसास अभी भी दर्शक और खिलाड़ी यहाँ पर करते हुए। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला बीपीएल सीजन 5 2025 2025 की शानदार प्रगति होती हुई, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है ब्रदर्स मक्यार ने इस सुंदर से विशाल से फिजा मैदान मक्यार पर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए जो कि नया ओवर आची जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए आची यसार, और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त फ्रेंड्स मक्यार की पारी में। ओवर की पहली गेंद लेकर आची इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस राउंड द विकेट। पहली गेंद बॉल इन, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट हिज मिडल ऑफ स्टंप, बिल्स आर डिस्टर्ब्ड, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद को उछालना चाहता इस वक्त बल्लेबाज ने, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और आखिरकार गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे आई, उनके बल्ले को वंचित करते मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। मुजम्मिल आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए दूसरा विकेट गिर चुका है 17 रनों के ऊपर। 17 balls left, 30 runs required in fact. Number 4 batsman is now comes out to the middle for friends Makyar, मुहाज, और मुहाज इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और इस वक्त आसिफ की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, फैंटास्टिकली स्ट्रक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक came from the bat of मुहाज, it just
twisting the bat and clinging on the corner at the last moment and played that one with a perfect switch hit. And he finds the gap as well at last. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर 21 on the board for losing 2 wicket in the over number 3 in progress. Still the battle is now on. 16 balls remaining, 26 runs required. तो इस वक्त ये गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, रन के लिए दौड़ पर एक रन जरूर मिलेगा. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ತಲಪಾಡಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. हार्टली वेलकम टू यू सर मिस्टर विवेक तलपाड़ी. इस बार गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. He just played that one with a twisted bat and played that one in the gap as well at last. This is a fantastic strike. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर 26 on the board. And now 21 runs required. The things getting much easier now for brothers Makyar with this boundary. 21 required, 20 balls left. और गेंदबाज इस बार गेंद को उछालना चाहा. इनफैक्ट इट्स 14 balls left. और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 27 on the board. Thirteen balls left now, and 20 runs required. And this time, he's got that one. He's gone open. In fact, he just fell short of a fence. He just played that one against the wind. हवा के रुख के खिलाफ इस स्ट्रोक को खेला था और गेंद अपने रफ्तार को खोते हुए आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए. एक और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज मुहाज के बल्ले से और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 31 रनों पर. एंड नाउ 16 to get from remaining 12 balls. The match is now still equally balanced. और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पर शाहिक और मुहाज एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर निभाते हुए और अपनी टीम को मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हुए. जहाँ तक सवाल है इस वक्त सैम 11 के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए चंद डॉट गेंदे और विकेट इस मैच में कम बैक करने के लिए. 12 balls left, 16 runs required. और गेंदबाज इस वक्त तैयार गेंदबाजी करने के लिए. सियाब गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, सामना करते हुए इस वक्त शाही का फील्डिंग में जमावट करने के बाद पहली गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी एंड दिस टाइम ही लॉस्ट हिज विकेट. दैट वाज़ अ juicy one at the last ball, lucid delivery. लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद इस लो फुल टॉस गेंद को समझ नहीं पाए, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता चूंकि और गेंद सीधे जाकर मिड लेग स्टंप पर जा टकराती हुई, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और एक आसान गेंद पर बल्लेबाज शाही आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए. He scored 5 runs into his credit and 31 the score. 16 runs required from 11 balls. 11 balls 16 runs required. निश्चित रूप से फ्रेंड्स मक्यार के बल्लेबाज इस वक्त जीतोड़ कोशिश करते हुए इस मैच में विजय दर्ज करने का, अगर इस मैच में वो विजय दर्ज कर लेते हैं तो लगातार तीसरी विजय उनकी होगी और सीधे वो इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर जाएंगे. तो इसलिए उनके बल्लेबाज इस वक्त जीतोड़ कोशिश करते हुए विजय के लिए. जहां तक सवाल है सैम 11 के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर कम बैक करने के लिए. ये गेंद इस बार गेंद को छलना चाह बैक टू द बॉलर की दिशा में बेहतर गेंदबाजी. मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दिस टाइम इज गॉन. He is gone this time. Misunderstanding costing one of them back into the pavilion. पहले रन नहीं लेना चाहता, जैसे ही गेंद ऑफ साइड पर गई बल्लेबाज ने रन के लिए दौड़े और इससे पहले के नॉन सेकंड बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे. सीधा थ्रो पहुंचता हुआ फील्डर के हाथों में स्ट्राइकर एंड पर और फील्डर ने थ्रो रिसीव करते हुए विकेट यहां पर चटका दिए. अब तो इस वक्त आउट होने वाले बल्लेबाज मुहाज जो कि अपने भाई हमीद नित्तू इनके द्वारा यहाँ पर रन आउट हो चुके हैं. कुछ हद तक कोसते हुए वो इस वक्त पेविलियन की ओर जा चुके अपने भाई को और जहां तक सवाल है उनका विकेट इस वक्त गिर चुका है. बशीर का आगमन होता हुआ नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से. 2 बेहतर गेंदे इस ओवर में शियाब अब तक फेंक चुके हैं. 10 गेंदे बाकी 16 रन. स्टिल ऐसा कहना पड़ेगा इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन. और बशीर इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 6 बैट्समैन.
और सियाब इस वक्त लेग स्पिन गेंदबाजी के तौर पर अपनी ओर की अगली गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार फाइटर गेंद को रोक लिया इस वक्त अपने स्ट्रोक को, ऐसा कहना पड़ेगा। गेंद को ज्यादा उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक को चेक कर लिया था, रोक लिया था। हाफ माइंडेड स्ट्रोक इस वक्त खेला और गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर। 15 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी। गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑफ साइड, दिस इज गॉन ऑल द वे, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर, दिस इज अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइक came from the bat of Hamid Nitto, and with this 6 I must say that they are strongly back in the game. Now I want to see the equation, 9 runs required from 8 deliveries. और निस्संदेह इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा, after being comes down the track, hit that one pretty hard and got that one right from the middle of the bat at the last moment. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त हमीद नित्तू के बल्ले से। अब 8 गेंदें 9 रन और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर सैम 11 को एक घातक गेंदबाजी ही अब इस मैच में वापस ला सकते। फिलहाल मौका जरूर है उनके गेंदबाजों को बाउंस बैक करने का यहाँ पर। और शियाब अगली गेंद, इस बार गेंद को उछाल दिया, गेंद पहुंची वाइड लॉन्ग ऑन पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। क्लीन पिकअप पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 ऑन द बोर्ड, 4 विकेट्स लॉस्ट एंड नाउ 8 रिक्वायर्ड फ्रॉम 7 डिलीवरीज। अंतिम बार इस ओवर में और सामना करते हुए बशीर। शियाब फील्ड में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछालो इस वक्त, गेंद लंगो फील्डर के हाथों में और इसी के साथ बशीर की पारी समाप्त। तो कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछालना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और वाइड लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे, गेंद की ताक में गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंचे और इसी के साथ विकेट बशीर का गिर चुका। 5th विकेट डाउन, 4 overs completed, 8 runs needed from the last over और अजीज का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में। 6 balls, 8 runs required. Still, it could be anybody's game at this situation. What a fantastic match is now progressing here. The match number 6 of this prestigious cricket tournament, BPL Season 5 2025, which proudly presented by brothers Makyar, is now progressing here. And the match is now heading towards to a nail-biting finish. 6 balls, 8 runs required. निजाम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और अजीज का इस वक्त आगमन होता हुआ। और जहां तक सवाल है निजाम का, तो आमतौर पर लेग स्पिन गेंदबाजी वो करते हैं इस वक्त। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार हमीद के लिए। यह गेंद इस बार क्विकर गेंद का उछाला इस वक्त लंगोल पर मौका और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। हमीद इज नाउ बैकिंग टू पवेलियन एंड द टाइड इज नाउ स्लोली टर्न्ड. Now equation seems to be a stiffer a little bit for the batting side. 8 required, 5 balls remaining. और निसार का आगमन यहाँ पर होता हुआ, तो इस बार हमीद ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकलते हुए गेंद को उछाला जरूर। स्ट्रोक पर इस वक्त कड़ा स्ट्रोक जरूर खेला था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने इस कैच को लपका और इसी के साथ ही विकेट गिर चुका है। निसार का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में। अब 5 गेंदें 8 रन, 7 for tie, 8 for win and 5 balls left. और निजाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, अराउंड द विकेट कहना पड़ेगा इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज बशीर इस वक्त सामना करते हैं। देखते हैं अगली गेंद पर बशीर किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। दाहिने हाथ अराउंड द विकेट इस वक्त कप्तान सैम 11 के फील्डिंग में जमावट करते हुए कुछ हद तक काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। निजाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं। बशीर के फुल टॉस पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ ये कैच लपकने में सफल। फुल टॉस गेंद पर उछाला जरूर, लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट। गेंद टॉप एज पर लगी, हवा पर उछली और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई यहाँ पर कैच लपकने में। तो इक्वेशन इस वक्त कुछ हद तक कठिन होता हुआ। अब
4 गेंदे बाकी, 8 रन चाहिए। तो एक वक्त 7 गेंदे बाकी थे, तब 8 रन बनाने थे, अब 8 रन नहीं बनाने हैं, लेकिन 3 गेंदे इस वक्त घट चुके हैं, यानी 4 गेंदे बाकी है इस वक्त। अशरफ इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और जहां तक सवाल है, इस वक्त 4 गेंदे 8 रन चाहिए, और देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनाते इन बचे हुए 4 गेंदों में 8 रन बनाने के लिए। 7 for tie, 8 for win, 4 balls left in overall calculation in their innings. निजाम 2 बेहतर गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं, ये गेंद ढीली गेंद, और दिस टाइम हिट दैट वन, hit that one, no ball also called by umpire. 7 runs added, and with that 7 runs, scores are now leveled. काफी ढीली गेंद थी, और इस ढीली गेंद को इस वक्त अशरफ ने उठा लिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर। नो बॉल का भी इशारा हो चुका है। अब 3 गेंदे बाकी और रन चाहिए सिर्फ 1। पूरी तरह मैच का नक्शा इस वक्त पलट गया सिर्फ 1 गेंद पर। इस गेंद से पहले तख्ता भारी लग रहा था सैम 11 का, और इस गेंद के बाद इस वक्त तख्ता काफी हद तक भारी हो चुका है फ्रेंड्स मक्यार का। 1 रन चाहिए, 3 गेंदे बाकी, और निश्चित रूप से बेहतरीन स्ट्रोक था अशरफ का। और अब 1 रन चाहिए, 3 गेंदे। सराउंडिंग फील्डिंग, सारे खिलाड़ी बीच के दायरे के अंदर मौजूद। यह गेंद बेहतर गेंद, 2 balls 1 run रिक्वायर्ड नाउ। अगर यह गेंद डॉट होती है तो शायद कुछ हद तक उम्मीदें जाग सकती हैं यहाँ पर सैम 11 के लिए। फिलहाल सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है, लगभग सारे खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात है, और इस बीच निजाम तैयार, दाहिना राउंड विकेट, ये गेंद उछाला इस वक्त, फील्ड क्लियर करते हैं, मौका, कैच को लपकने में सफल, कैच को इस वक्त लपकने में सफल। स्टिल द मैच इज नाउ अलाइव, 1 ball 1 run required. What a fantastic match. The match of the tournament is now progressing here. So what a fantastic catch taken by the long on fielder, just running towards to his backside to grab the ball. In fact, it's a no ball, that's why just 2 balls remaining. नो बॉल था, तो इसकी वजह से अभी भी 2 गेंदें बाकी है, तो चिंता का कोई विषय नहीं। तो सिर्फ 1 रन इस वक्त बनाने उन्हें इन बचे हुए 2 गेंदों में। So 2 balls 1 runs required. So इस बार लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी यहाँ पर, एक बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन के फील्डर ने लिया था इस वक्त अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए। अली फ्रेंड्स इस बीच यह गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया, और he misses, that's it. Lucky escape for the batsman, and friends Makyar registered a thrilling victory with just 1 ball to spare against Sime 11, and with that 3rd consecutive victory they are through to the grand finale of this competition. So what a fantastic match came to an end. The match of the day is now came to an end, which won by friends Makyar in the 2nd last ball of the match, and with that 3rd consecutive victory they are through to the grand finale, mega final match of this tournament. And now one and only semi-final match is now going to play within just a short while, and we'll be back right after a short break with my friend Satish in English, where the next match will going to commence, the one and only semi-final of this tournament. So man of the match of this match award goes to Muaz, who scored valuable 9 runs, and he also captured 2 wickets in his bowling, and because of this all-rounding performance, Muaz of friends Makyar enjoyed the man of the match. I request Muaz to please come out to the stage and receive the man of the match award from one of our organizer. So fantastic match has been came to an end, and we'll be back right for a short break with Satish in English when this one and only semi-final match will going to begin right after 10 minutes. No? Right after 10 minutes, the semi-final match is now going to begin. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So 500 rupees cash prize
announced for Muaz from Mr. Yakub KKR announced a 500 rupees cash prize for Muaz for his fantastic performance in this match. Thank you. From Mr. Yakub KKR declared a 500 rupees cash prize for Muaz for his fantastic performance in this match.
The match is started here and first ball of the semi-final between two very good teams and the team of Mancho Talapadi versus Sim 11. After winning the toss, elected to field first. Team Mancho, the first delivery which is played by the batter, of course, got a single, one without loss of any wicket. This time played it tapishly but quite safely down to deep long on region by the batter Riaz, and with that single, Rifaz little correction, and he got his first run. Total score now moves on to 2 on the board without loss of any wicket. Taif bowling with a short run off, right arm over the wicket. Bounce. This time switch it comes into play. Didn't got enough bat onto that. Ball landed safely. And before the fielder from backward point region to run across his to left, and ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board. Shiab as well as Rifaz, opening batters for the side of team Sim 11. Just try to get some foundation. Lovely delivery in the delegation, automatically done by wicketkeeper behind the stump, but nothing much excitement. Of course, the back foot of the batter still inside the crease, so that no damage done, but very important dotted delivery ball by Taif Ulal. Taif, right arm over the wicket, bounce this time across the line, tried to get that one into fine leg region, doesn't get any contact with the bat, but definitely contact with his leg, so that leg by call by umpire. With that extra, scoreboard moves on to 4 on the board. So far it's a tidy line which is maintained by Taif Ulal. It's not so easy to come and bowl in the power play overs, and so far he did a great job in this first over. Final time in this over. Bowls tries that one down to mid-off region. Quickly they're going for the single. So first over completed, great over, tidy over. After completion of first over, it's 6 on the board without loss of any wicket. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಸಿಫ್ ಅಟೋಲಿಂಗ್ಸ್, ಯಾಕೂಬ್ KTR, ಜಾಫರ್ ಫಿದಾ, ಸುಕೇಶ್ ಮೆಂಡನ್, ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ BPL Season 5 which is proudly presented by brothers Makyar. So first over completed, it's a 5 on the board, 5 without loss of any wicket. Simple correction in the scoreboard, it's not 6, it's a 5, and 5 without loss of any wicket. The bowler will go in to start the second over. Ilyas, he's got a very good tournament so far from the bat and ball for the team Mancho, and the winning team will go into qualify for the mega final of BPL Season 5, and wait and see how well these two teams will go into battle for the victory.
So ready for the second over. Ilyas will going to start his first over and second over of the innings of team Saim 11. Saim 11 and team Mansho Talapadi in the semi-final. Do or die situation for the both the teams. And Ilyas taking his own time to deliver the first delivery. Right arm over the wicket, pass by Munir. Again, played it nicely down to mid-off region. The mid-off is not in the up in the circle, but it is a long off. So that long off fielder have to run quickly to his friend to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Again, Ilyas with the short run up. Keeping 4 fielders in the offside region, almost the 5 in the on, deep long on and deep mid wicket. This time he lofted handsomely, but straight to the answer fielder. Nothing wrong with the stroke, but there's something wrong with the placement. Hit that one pretty well, isn't it? Once it looks like the ball will going to travel out of the boundary line, but he's just played it in a flatter version, and just a little bit of high stroke is required to get the distance. And played it straight to the hands of deep long on. That's the end of Rifaz. Quite unfortunately is back in the pavilion, and the team the lost their Saim 11 lost their first wicket at the score of 6. It's a 6-4-1. Searching for the right track. Still they are struggling in the middle. Saim 11. The young man walking towards the middle. One who played a fantastic knock in the first match. Akku with the jersey number 10, good striker of the ball. Will going to face experienced campaigner Ilyas. Square leg, fine leg inside the ring. The fielder short third man. Deep gully. Deep extra cover, deep long off. The 3 protection the deep in the offside region by seeing the wind direction towards the offside region. The long off is there. Long on and mid wicket. Ilyas bowls. Again outside the line of off tamper. Deflected from this bat. Third man fielder fields the ball. Abu just wanted to shy the wicket. And wicket keeper fails to gather the ball. Ample and no time at all for the batter to take any kind of run. So one more dotted delivery. 4th time in this over. Ilyas bowling to Akku. This time Akku lofted that one. The fielder charging in from the deep long off. Fantastic running catch taken there by the fielder. That's the end of Akku. Again he disappointed. Is out for duck. Again doesn't get hold up that one properly. He played it in the air. Looks like once it is going to be a shape stroke he played in the extra cover. But long off fielder absolutely is a bird. Got a fantastic running from long off to deep extra cover when he finished that catch. Plenty of ground he covered. Absolutely athletic work. Naufal, the young man, did a great job in the deep long off. With that stunner taken by Naufal, the wicket number 2 is back in the pavilion of team Saim 11 looking in deep trouble. Niaz is the new batter in. The good competition now between Ilyas versus Niaz. So far it's a fantastic over from the point of view of Mancho is concerned is in progress. Ilyas. Short run up. Right arm over the wicket, balls to Niaz. The new batter just came into middle. Played it down to extra cover in the gap, and good piece of fielding there by the fielder. Fielding has been outstanding. The youngsters are doing a great job. Akash this time is in the man in the picture. 2 very young talented fielders in the deep, extra cover and long off. Not really providing the batters of their opposition to get any kind of boundaries there. Great piece of fielding. Couple of runs and 8 on the board for the loss of 2 wicket. Ilyas right over the wicket. Balls just getting away from the line.
Good judgment here by the batter. Niaz knows that down the leg side it's going to be wide. Not really attempting that stroke. And a wide call by umpire. With that extra score, moves on to 9 on the board for the loss of 2 wickets. Still the team Sim 11 just try to get that the track what they really required. The 5 overs game, no time at all to think and play. Just have to look for some acceleration of run rate. The strong breeze is passing in the middle of the ground. Ilyas balls. Final time in this over. Extra bounce in the negation. Defeated the bat of Niaz. So still it's a great over from the bowler Ilyas. After completion of over number 2, the team Sim 11 searching for the right track. 9 on the board for the loss of 2 wicket. Brothers Makyar presenting this prestigious cricket tournament. The BPL season 5 is in progress. Thanks to all the donors, your cooperation. The organizer grateful and thankful for all the donors, supporters for the success of this cricket tournament in this most beautiful venue, Fiza Cricket Ground here in Makyar. The place is known to be a border of Karnataka and Kerala state, with this beautiful nature's beauty, and especially the coconut trees which is surrounded with this beautiful cricket ground. Chami brought into attack, the experienced campaigner. Brought into attack was the 3rd over of the innings of team Sim 11. The same field set, there is a deep long on, deep whitish long on and mid wicket, and the fielder at a deep backup point and deep extra cover. First ball, wicket keeper missed it, fumbled, and the batter will go in to complete the single for that. And no signal means it's from the bat. The ball has got a contact with the bat of the batter Shiab. And score moves on to double figure 10 on the board. Now a little bit interesting, and there is no field in the deep in the gully, but mid-on fielder going back to deep mid-wicket. The 3 protection in the onside division. Chummy balls. This time lofted, swings it away, but I think ball lost his speed. Can you believe this? Definitely that stroke which is out of the boundary line. The fact that he played that one against the direction of the wind. Unfortunate dismissal here for Niaz. Everyone, even I also thought that it might be the ball is out of the boundary line. But this is sometime the nature of the particular cricket ground. The wind direction is always nightmare for the batter. Perfectly played cricketing stroke, but the played against the direction of the wind. 3 wickets back in the pavilion. The team still Sim 11 searching for the runs. Shami got a fantastic wicket here. Huge wicket of Nizam. New batter in. Shami. Balls inside edge of the bat. Quickly they're going for the single. With that single, score moves on to 11 on the board. Over number 3rd is in progress. Sim 11 and team Mansho Talpadi, they're battling here to get the place in the mega final. Team Friends Makyar already there in the mega final as an unbeaten team in the league stage match. This time wide outside the line of leg stump, so that wide call by umpire. With that extra score, but moves on to 12 on the board. 12 for the loss of 3 wickets back in the pavilion. The team Sim 11 going to enjoy each and extras conceded by the opposition team. Chami around the wicket right arm. Balls this time. No ball called by umpire. Overstepping, and clearly umpire saying that
You are just overstepping, and umpire Sri Raj is very experienced umpire, neatly observing the front foot of the bowler. It's over the line, and no ball call by umpire. It's a free hit delivery for the batter. One more extra and one more run. 13 on the board for the loss of 3 wicket. Free hit delivery. The right time for the batter to back in the game with one big shot here. Nizam. See update correction, and extra bounce defeated the bat, leg by call by umpire. With that extra score moves on to 14 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. You can see that runs which is dried up because of no boundaries, no sixes so far for the team Siam 11. Shami, the man who got a fantastic tournament so far from the bat and ball. Again chipped it away nicely down to deep long off. Now for the fielder in the long off very quick, so that asking for trouble if you're going against his throwing arm. Just a single there. With that single score moves on to 15 on the board. Chami, the man who got 2 man of the match consecutively in that last 2 league stage matches. Round the wicket, Chami. This time catch it is a call, but Naufal will not going to get that one because of the ball was just falling short of him. Good throw coming from the fielder, but not good enough. Direct to, oh my goodness. They were looking for the 3rd run as well. 3 valuable runs they conceded. Now they are just claiming for the umpire for the, maybe they're obstructing the field they are asking for. Now they were going for that 3rd umpire to see that whether the batter quite deliberately wanted to obstruct the field, just wanted to see obstruction of the field as far as the rules and regulation of the cricket is concerned. They ask for the 3rd umpire. If the batsman while running, if he deliberately coming to avoid that run out to deviation, what you need to see that deviation, whether the batter quite deliberately that move towards the ball to avoid the run out, then as per the rules and regulation of the cricket is concerned, the umpire can give him out. If it is not a deliberate, he is running in the same line without seeing the ball, then well, umpire decision is 3 runs and the umpire is given warning for the batter not to run in the pitch. Of course, it's not deliberate by saying that batsman is not really having any idea where the throw is coming. It's not obstructing the field, but umpire will going to give the warning for the batter. The second time will going to do the same job, and then umpire will not going to give the runs. Please obey the umpire decision. This is one of
the part of cricket, of course, respecting the decision of umpires. Of course, 3 more runs conceded, 17 on the board for the loss of 3 wicket. Now Fall will go into ball the 4th over. ಸೆವೆಂಟೀನ್ 17 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17 ಸೈಮ್ 11. ಏಯ್ಟೀನ್ 18. Now Fall will go into ball the 4th over of the innings of team Sime 11. Nizam. Siab is a batter. Now Fall. Right arm over the wicket bounces. Oh, opportunity for the wicket keeper in the occasion. Devi, the wicket keeper, has got opportunity, but sometimes it's happening, isn't it? And just misses that opportunity, wicket keeper Devi, and the bowler will go into continue. Second time, Safwan, right arm over the wicket. This time lofted, and now Fall is a safe fielder in the deep long off, taken a wonderful running catch to his friend. Wickets are falling here. The 4th wicket is back in the pavilion of Sime 11. Siab is a batter, walks towards the pavilion after came as an opener for the side and didn't got opportunity to get any kind of big stroke in his innings. Just wanted to break the shackle, didn't getting hold of that one properly. Lofted that one, and now Fall again is looking so good in the long off. Takes his second catch. Fourth wicket back in the pavilion. It's 18 for 4. Safwan got a vital breakthrough and a huge wicket for him. The new batter in. Safwan. Or this time slog sweep to play it down to deep square leg region. Not more than a single. Good piece of fielding there by the fielder at deep square leg. Just a single with that single score, but moves on to 19 on the board. Now Rish got his first run. Safwan. So far one more tidy over is in progress. This time again appeal for leg before wicket, but certainly it's going to be leg by. One more addition with the addition of that single score, but moves on to 20 on the board. 20 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. The penultimate over is in progress, and both batters knows that at least 40 runs they needed in 5 overs, and a lot of hard work required in the remaining deliveries. At least 1 or 2 big shots takes them into a good score. Safwan. This time went for a switch hit. Wicketkeeper missed it. By call by umpire. One more extra bounce in that occasion. Defeats the batter and the wicketkeeper. With the addition of that single score, but moves on to 20. 21 on the board. Safwan. Right, I'm over the wicket bounce. Again, going to be a wide. One more extra. 22 on the board. The batter is on strike in his arm. Just searching for a one big shot here. Safwan. Right arm over the wicket bounce to the right-hander batter. Again, drives that one powerfully down to deep long on region. And not so easy place to field on.
Slight a bit of humble, chance of run out, it is gone. Now Rish fails to complete that second run. He couldn't manage to drag his bat right time. The fielder slight a bit of uncomfortable to get that one, but he quickly recovered and returns that one very quickly to the hands of Safwan. So one more wicket back in the pavilion of team Saim 11 are really struggling in the middle. It's 23 for the loss of the 5 wickets back in the pavilion, and over number 4 also completed, and last over remaining, and Naufal will go into ball that last over. The young man did a great job in outfield in a deep long off region, taken 2 very good catches as well as stopped some runs. Now we will go into ball the last over. Very young talented leg spin bowler Naufal, off spin bowler, correction. He will go into ball the last over. Ayub is the new batter in. Naufal. The time again, that's going to be a chance of run out. Davy there as a wicket keeper. White call by umpire. So extra will go and help the total score to move to 24 now. Last 6 balls remaining in the innings of team Saim 11. Needed some runs. This is the last opportunity for them to get some acceleration. Third man and a fine leg, very close together behind the wicket. Short square leg, short mid wicket, deep square leg in front of wicket, wideish long on. The fielder down at long off, deep extra cover, deep third man, deep gully in fact, and the wicket keeper missed it. And one more wide. Every time the bowler defeats the bat, wicket keeper fails to collect the ball. By call by umpire with that extra score, but moves on to quarter century. 25. Last 5 deliveries remaining. Again, it's going to be one more wide. Wide plus 1, 2 to the total, and again the overthrow. And chance of run out there. Again the fumble. 3 runs. 3 gifted runs for Saim 11. They're not really bothered about how the runs are coming, but every runs they will going to enjoy because they desperately wanted to run here. It's 28 for the loss of 5 wickets. Naufal just feeling a pressure. Around the wicket, right arm. Nizam. Islam, lovely delivery, right on the block hold. Quicker one and faster one. Good line maintained by Naufal, leg by call by umpire. With that, one more extra score, but moves on to 29 on the board. Another 4 balls remaining. Another 10 runs will going to take this total into very interesting. Again, one more quicker one and faster one. The batsman uncomfortable, leg by call by umpire. Beaten by the pace. Ayub got a contact with this leg. Leg by, score moves on to 30. 3 balls remaining. The competition for the place in the mega final of the prestigious BPL season, the 5. Lofted high, will it going to be handsome? Yes, it is a handsome, and it got the distance as well. What a fantastic struck. Just I mentioned, it's going to be very interesting, another 10 runs. And Naufal is absolutely producing some important runs for the opposition. Great hitting there from Nizam. Off the toes, and getting the distance in onside is not so easy. With that 6 cover jumps into 36. Turning out to be a very good over here for Saim 11. Again driven into the deep square leg region. They certainly look for the second. In comes the throw.
It's not a good end to throw. It is definitely going to be a striker's end. Both the batters completed 2 valuable runs. With the 2 valuable runs, Coburn moves on to 38. Now it's a final delivery of this over. And the batter Nizam, what an innings is playing here. This time, lovely delivery, chance of run out in the non-striker's end, and looks like yes, he's gone. So the batter Nizam back in the pavilion. So that's it. Team Sim 11 will go into happy to see the total, because at one stage they are struggling to get 30 runs, but they got 38 runs because of a very good last over for them. They got some extra runs. They got 1-6. Altogether, the important runs came in this last over of now fall 38, which is the total score of team Sim 11, and they set a target of 39 for the team Mansho Talapadi to get the place in the mega final. So it's going to be very, very interesting semi-final. The match is looks like it's going to be very interesting because of that target set by the team. Even the Mansho has got some big show in their team, and they got some big batters like the man in form Chemi, and some good players in the side. Maybe it was not a big total to chase down, but cricket is unpredictable game. You can't say anything in cricket, and you cannot every time depends upon the history, but present how you going to perform, that will going to give the result, especially in the semi-final. It's not an easy game because always is a pressure game, and wait and see which team will going to handle the pressure in the big semi-final to get the face in the mega final. And before the next innings will going to start here, time to invite Mr. Gopi to take over the microphone. And Gopi, semi-final do or die situation for both the teams, and both the teams knows that they have to do before die, because die in the sense it's all over. If they're going to lose this match, the all over for them in this particular tournament. But I think it's good recovery. The team Sim 11 one stage they are very difficult to get that 30 to 35, but they got at least 38 runs because of that productive last over. And seeing that last over, which is productive for them, looks like, and if they bowls well, fields well, this is going to be one more good match, and we are just expecting some good battle between these two teams, between bat and ball, and definitely both the teams wanted to do something special in this semi-final to get the same place in the mega final. Of course, a team which is relaxing and watching these two teams' performance, that is a team Friends Makyar, just waiting for the winner of this match. And altogether, Gopi, this is going to be a very important session, and wait and see which team will going to handle the pressure. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त फ्रेंड्स मक्यार इत्मीनान के साथ इस वक्त अपने ओपोनेंट का इंतजार करता हुआ ग्रैंड फिनाले में, और जहां तक सवाल है इस वक्त ग्रैंड फिनाले तक पहुंचने का, तो सैम 11 और मैनशो तलपाड़ी के बीच में इस वक्त संघर्ष जारी है, और 39 रनों का लक्ष्य इस वक्त मैनशो तलपाड़ी के सामने रखा है इस वक्त सैम 11 के खिलाड़ियों ने, और 39 रनों का जहां तक पहुंचने का सवाल है। 5 ओवर में 39 द टारगेट इन 5 ओवर, दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। रिकॉर्ड रन रेट जो है सतीश 7.80 रन प्रति ओवर, और जहां तक सवाल है इस वक्त मैन शो तलपाड़ी के सलामी बल्लेबाजों का, तो इस वक्त उन्हें एक बेहतर शुरुआत देनी होगी अगर उन्हें अपने मंजिल की ओर अग्रसर होना है। तो जहां तक सवाल है इस वक्त सतीश सैम 11 के गेंदबाजों का, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें एक घातक गेंदबाजी यहां पर करनी होगी, क्योंकि लक्ष्य ज्यादा ऊंचा नहीं है इस वक्त, सिर्फ 39 रन बनाए हैं, लेकिन 39 रन के अंदर डिफेंड कर सकते हैं इस वक्त सैम 11 के गेंदबाज। अगर वो सही तरीके से बेहतरीन गेंदबाजी अपने पहले ओवर से करें तो दबाव इस वक्त मैनशो तलपाड़ी के बल्लेबाजों पर आ सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मैच लगभग बराबरी पर इस वक्त रुक चुका है, और इस द्वितीयार्ध में, इस सेमीफाइनल पहला और एकमात्र सेमीफाइनल के द्वितीयार्ध में देखते हैं यहाँ पर क्या होता है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत बीपीएल सीजन 5 2025, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है ब्रदर्स मक्यार ने इस फिजा मैदान मक्यार पर। और देखते हैं फाइनलिस्ट के द्वितीय सेमीफाइनलिस्ट के रूप में, दूसरे सेमीफाइनलिस्ट के रूप में, दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में कौन सी टीम यहां पर फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है। तो पहली गेंद लेकर गेंदबाज रिफाज तैयार, चम्मी इस वक्त सामना करते हुए, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड किस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है।
मानशोज तलपाड़ी के लिए 1 रन 90 लंके से नुकसान के। नवाज नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और रिफाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी और गेंद इस वक्त पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन 90 लंके से नुकसान के। एक वाइड फेंकने के बाद एक सही गेंद इस वक्त गेंदबाज रिफाज फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। गेंद को इस वक्त उछाला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। चम्मी का स्ट्रोक मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन, और जब कभी भी चम्मी का स्ट्रोक मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट होता है तो यहां पर कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती कि गेंद सीमा रेखा के बाहर ना जाए। तो यहां पर छक्का इस वक्त चम्मी के बल्ले से लगता हुआ और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और रिफाज इस वक्त छक्का प्रदान इस गेंद पर कर चुके हैं। काफी लंबा छक्का इस वक्त चम्मी का लगता हुआ और इस वक्त 7 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। निश्चित रूप से जहां तक मैंने और सतीश ने फरमाया था सैम 11 के गेंदबाजों को इस वक्त 39 रनों के लक्ष्य के अंदर अगर मैन शोज के बल्लेबाजों को रोक कर रखना तो पहली ओवर से एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करना होगा, लेकिन यहाँ पर छक्का इस वक्त रिफाज प्रदान कर चुके। देखते हैं अगली गेंद पर वो किस तरीके की कमबैक यहाँ पर करते हैं। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर धीमी गति से पहुंची और कुछ हद तक देरी से दौड़े थे इस वक्त दोनों बल्लेबाज, लेकिन आखिरकार 1 रन बाई के रूप में पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और नवाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया हाफ स्टॉप इस वक्त मिड विकेट फील्डर द्वारा। अगर थोड़ा सा भी मिसजजमेंट होता तो गेंद उनके हाथों को चीरते हुए सीधे सीमा रेखा की ओर बढ़ सकती थी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को उन्होंने रोका हाफ स्टॉप के रूप में। और दूसरे फील्डर जब तक गेंद को बैकअप करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और अगली गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा। गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर और जहां तक रनों का सवाल है तो रन से यहां पर मिल चुके हैं 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। डबल डिजिट नाउ द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 10 ऑन द बोर्ड येट टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और रिफाज की गेंद इस वक्त स्टंप्स पर टकरा चुकी है। Absolutely much straighter line and he just caught the read of the batsman at the last moment. मिड लेग स्टंप पर जाकर के टकराए, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और रिफाज आखिरकार यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। नवाज का तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट हालांकि अंतिम गेंद पर जरूर खोया है इस वक्त मैन शोज तलपाड़ी ने, लेकिन यहाँ पर 10 रन बनाने में सफल। अब 29 रन चाहिए, 4 ओवर का खेल बाकी और रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त सीधे 9.5 से उतर कर अब आकर रुक चुका है 7.25 रन प्रति ओवर। 24 balls left and 29 runs more required at this situation. The equation stands for मैनशो तलपाड़ी। तो दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ तैफुल्लाह और जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नए गेंदबाज के रूप में इमरान। और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ और 29 रन चाहिए 24 गेंदों पर। निश्चित रूप से हमने कहा था कि कमबैक करना है सैम 11 को तो एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर देना होगा, लेकिन पहले ओवर में 10 रन बनाने में सफल हो चुका है इस वक्त मैनशोज तलपाड़ी। हालांकि अंतिम गेंद पर विकेट जरूर गिरा है नवाज का, लेकिन उससे पहले चम्मी ने एक छक्का लगाकर एक बेहतर शुरुआत देने में सफल रहे। इस बार गेंद को खेल दिया इस वक्त चम्मी ने, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और इमरान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, इस वक्त सामना करते हुए नए बल्लेबाज तैफुल्लाह और इस बीच इमरान ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर रन से इस बीच नहीं मिलेगा। निस्संदेह कमबैक करना है तो ऐसे डॉट गेंदे और फेंकने होंगे, विकेट उखाड़ने होंगे। इस वक्त जहां तक का सवाल है
सैम 11 के बल्लेबाज गेंदबाजों का। ये गेंद शॉट फाइन लेग पर एक बार फिर से डॉट गेंद, लगातार 2 डॉट गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं बल्लेबाज को। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर। और इमरान ये गेंद ड्राइव कर दिया, इस बार गेंद को रोकने में असफल और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर बढ़ते हुए हाफ स्टॉप यहां पर किया था एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर। 13 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इमरान अपनी ओर की अगली गेंद चम्मी के लिए, इस बार ऑन साइड पर मोड़ा लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और गेंद अपनी रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद को ऑन साइड पर मोड़ा था इस वक्त तईफ ने और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 14 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 4 रन अब तक इस ओवर में दे चुके इमरान। अब तक उनका ये बेहतर ओवर साबित हो चुका है और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इमरान इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार चम्मी के लिए, गेंद को उछाला इस वक्त लंबा फील्डर जी नहीं, गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। छक्का नंबर 2 चम्मी के बल्ले से लगता हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड डिस्पैच्ड इट इन अ स्टाइल लवर लॉन्ग ऑफ फेंस फॉर अ मैसिव वन। और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट्स लॉस्ट एंड दे आर लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन फॉर Mansho's Talapadi. Now still 1 ball, in fact over has been completed, 2 overs completed, 20 on the board, 1 wickets lost, still 19 to get now in remaining 3 overs, and the equation seems to be a much easier for them at this situation. सेमीफाइनल मैच इस वक्त खेला जाता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत बीपीएल ब्रदर्स प्रीमियर लीग सीजन 5 2025 के अंतर्गत, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है इस वक्त ब्रदर्स मक्यार ने। और ढलती हुई शाम में इस वक्त सेमीफाइनल मैच प्रगति पर, और देखना यह है कि कौन सी टीम द्वितीय फाइनलिस्ट के रूप में फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है फ्रेंड्स मक्यार का सामना करने के लिए। फिलहाल तख्ता इस वक्त मानशो तलपाड़ी का भारी लगता हुआ, लेकिन कमबैक करने का मौका जरूर है इस वक्त सैम 11 के गेंदबाजों को बचे हुए 3 ओवर में। और गेंदबाज इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। निजाम दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद लेकर तैयार। तैफ सामना करते हुए लेग स्पिन गेंदबाजी, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया और गेंद को रोकने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। एक्सक्यूजिट स्विच हिट इस वक्त खेलते हुए बल्लेबाज तैफ, और गेंद को इस वक्त पॉइंट पर जो फीडर खड़े हुए थे पैर के जरिए रोकना चाहा लेकिन नाकामयाब, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर। 24 on the board for losing 1 wicket at the start of the 3rd over, and at the situation Mansho's Talapadi looking right on top, और निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तैफ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। और ये गेंद इस वक्त बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, गेंद लगभग टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रहती है, लगभग जमीन के सहारे स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और निजाम फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद तैफ के लिए ढीली गेंद उछाला मिड विकेट पर, लेकिन मौका हो ब्रिलियंट, ब्रिलियंटली टेकन इनसाइड द फेंस बाय द फील्डर एट डीप बैक ऑन स्क्वायर लेग। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्लेड दैट वन अगेंस्ट द विंड, हवा के रुख के खिलाफ इस स्ट्रोक को खेला था और डीप बैकवर्ड के लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे पहले उन्होंने पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया कि गेंद सीधे उनके हाथों में आएगी, लेकिन अंतिम एक्शन में अपनी गेंद अपनी रफ्तार को खोती हुई धीमे पड़ गई और जैसे ही फील्डर ने भापा की गेंद उनके आगे टिप्पा खाने वाली है, पिच होने वाली है, अपने आगे की ओर डाइविंग लगाते हुए गेंद को लपक लिया इससे पहले की गेंद जमीन पर टिप्पा खाए और इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है तैफ का और 24 रनों के ऊपर दूसरा विकेट खो चुका है मैनशोस तलपाड़ी। It's 24 for 2 and Taif departs. सफवान का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में, निस्संदेह चंद और डॉट गेंदे और चंद और विकेटों की जरूरत है यहाँ पर कमबैक करने के लिए सैम 11 के गेंदबाजों को। 24 द स्कोर नाउ।
15 runs to get from remaining 15 deliveries. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त निजाम तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज के लिए ये गेंद स्वीप करना चाहा। गेंद इस वक्त बल्लेबाज के सिर पर टकराने के बाद सीधे जमीन पर गिर गया। पहले उनके हाथ पर टकराई, हवा में उछली, फिर सिर पर टकराने के बाद जमीन पर गिर गया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 15 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 14 बॉल्स। बेहतर ओवर साबित हो चुका निजाम का। हालांकि पहली गेंद पर उन्होंने चौका जरूर प्रदान किया था, लेकिन उसके बाद 3 गेंदों में बेहतर कमबैक यहाँ पर वो कर चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा स्टंप्स को कवर करते हुए, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई एक और डॉट गेंद। एंड नाउ 13 बॉल्स लेफ्ट, 15 रन्स रिक्वायर्ड। सो स्टिल इट्स कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो इस ओवर में अंतिम बार निजाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार। ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर into the gap as well and he just cleared the fence. It's a biggie. 30 रन पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 2 लगातार डॉट गेंदें खेलने के बाद जो बल्लेबाज पर दबाव क्रिएट हो चुका था, उस दबाव को स्ट्रेट अवे वो हटाने में सफल। लंबे छक्के के जरिए लॉन्ग ऑन क्षेत्र से बाहर। 30 for the loss of 2 wicket, 9 required in remaining 12 balls. The equation seems to be a much easier now for Mansho Talapadi. तो पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगता हुआ सफवान के बल्ले से, और वो छक्का इस वक्त समीकरण को बिल्कुल आसान यहां पर कर चुका है। तो चौथा ओवर शुरू होता हुआ, 4th ओवर स्टार्ट्स। गेंदबाज सियाब इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और सामना करते हुए इस वक्त चम्मी, जो कि 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्कों की मदद से, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार। 12 बॉल्स रिमेनिंग, 9 रन्स रिक्वायर्ड। पहली गेंद सियाब, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त। वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर। 31 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4th हैज बीन स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो। एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर वाइड का इशारा। नाउ द थिंग्स गेटिंग मच इजियर फॉर द बैटिंग साइड। 32 द स्कोर नाउ, 7 runs to get from 12 balls. लेग स्पिन गेंदबाजी, इस बार उछाला लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। बॉटम एज पर गेंद टकराई थी और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। 35 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। In fact 33 the score now, I beg your pardon. It's 33 for the loss of 2 wickets, 6 runs to get in remaining 11 balls. इस बार लेग स्टंप पर आती हुई और गेंद को छोड़ दिया इस वक्त, और तीसरा वाइड इस ओवर में गेंदबाज सियाब द्वारा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 ऑन द बोर्ड, और सियाब अगली गेंद लेकर तैयार। जमीन के सारे गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। बैक हैंड थ्रो इस वक्त विकेट कीपर का, लेकिन स्टंप्स पर नहीं टकराया, और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 35 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी 10 balls left and 4 runs required. अगली गेंद इस बीच डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ रन से नहीं मिलेगा। सिर्फ 4 रनों की दरकार विजय के लिए। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और चम्मी बेहतरीन तरीके से इस मैच को समाप्त कर चुके हैं चौके के साथ। और इसी के साथ मानशो तलपाड़ी और through to the grand finale of this competition, defeating Sam 11 handsomely by 8 wickets with 8 balls to spare in their innings, and with that 8 wickets comprehensive victory, they are through to the grand finale, mega final of this competition. और अब मेगा फाइनल यहाँ पर खेला जाएगा चंद मिनटों बाद फ्रेंड्स मक्यार और मानशो तलपाड़ी के बीच में, और ठीक 5 बजे यानी 11 मिनट के बाद इस वक्त है 4:49 यानी 5 बजे ठीक इस फाइनल मैच यहाँ पर शुरू होगा। इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत बीपीएल सीजन 5 2025, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया ब्रदर्स मक्यार ने। और इस बीच मैन ऑफ द मैच चम्मी
who scored unbeaten 18 runs in just 7 deliveries, including 2 6 and 1 boundary. And because of his fantastic batting knock, he's adjudged man of the match. Chammi adjudged the man of the match. So third time he bagged the man of the match award. I request Mr. M.B. Bashir to please distribute the man of the match for Chammi for his fantastic knock of 18 of 7 deliveries. So I request the captains of both teams to please report to the stage immediately for toss procedure. And we'll be back right after a short break, right after the 10 minutes break when the final match will going to begin. Thank you. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. Hello, check. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಂಥ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಶೋ ತಲಪಾಡಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶುಕೇಶ್ ಮೆಂಡನ್, ಮಾಲಕರು ಮೆಂಡನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪಿಚ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ನ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಶೋ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ
ಪರಿಚಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಸಿಫ್, ಅಟೋಲಿಂಗ್ಸ್, ಯಾಕೂಬ್, KTR, ಜಾಫರ್ ಫಿದಾ, ಸುಕೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 10 ಶೌಕೀನ್ DXP, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಶಾಕಿರ್ DXP, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಈ ಒಂದು ಫಲಕವನ್ನು ಉರ್ಬಿ DXP ಇವರು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ರಶೀದ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಸಲೀಂ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಫರ್ ಫಿದಾ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನನ್ನ ಟೀಮಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ರಿಮ್ಸಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಮುಖ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಮೈದಾನದ ನಡುವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಂಥ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಶುಭಾಶಯ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್, ಮ್ಯಾನ್ಶೋ ತಲಪಾಡಿ. So all set now for the mega final, and before we are going to start the mega final, the introduction of the players for chief guests of this prestigious cricket tournament. We have some dignitaries in our for this prestigious cricket tournament. Sukesh Mendan, Zafar Fida, we have Rashid Rimza, Riaz Rimsha, Shining Ulal. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ತಲುಪಿದಂಥ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೇವಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ 4 ತಂಡಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಶೋ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಹಸ್ತಲಾಂಘನ ಹಾಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಫೈನಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ
ನಾವು ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ
और अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। और इस बीच ये गेंद इस बार चम्मी के लिए हल्के से गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाते हुए, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर। 2 overs completed, 25 on the board, 1 more good over in Mancho Talapadi's point of view came to 9 runs came from this over, और 10 रन चाहिए 3 ओवर का खेल। द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ स्ट्रेट अवे कमिंग डाउन टू एक्जैक्टली 3.33 रन पर ओवर। सतीश इस वक्त 10 रन 3 ओवर का खेल बाकी, लक्ष्य बिल्कुल आसान दिखाई देता हुआ मैनशोर तलपाड़ी के लिए ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही फ्रेंड्स मक्यार को इस मैच में वापस ला सकती है इन बचे हुए 3 ओवर में। Exactly, Gopi. One man show from the man show batter, especially the Chammi, is absolutely one man show so far in this tournament. And again, he just released the pressure straight away. And that was one of the features of innings, because whenever he came into bat, the first over itself is dominating. And once you got 15 to 20 runs, 10 to 15, 15 to 20 runs in the first over, job is almost over. And that's what he is doing. The right strategy and the right technique is implemented so far in his batting. He is going after the ball. He's not seeing which bowler is bowling. He's just watching the ball. He's not watching the bowlers. And that was the main success behind his batting. And 10 runs required, Gopi. And 18 balls remaining. I think some miracle and magical bowling which is required here for team Friends Makyar if they wanted to back in the game. And first of all, they wanted to dismiss this man Chammi. If they wanted to little bit, if they wanted to back in the game, they desperately wanted the wicket of Chammi. But already they missed on opportunity, the golden opportunity to send Chammi into the back. But he already did a damage in the first over itself. I think now the do or die situation here for the Friends Makyar. But I think just a sensible batting is required here for the team Mansho to become the champion. बिल्कुल सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत है इस वक्त सतीश मैनशो तलपाड़ी को एक बार फिर से अपना चैंपियन का खिताब बरकरार रखने के लिए। और जहां तक का सवाल है फ्रेंड्स मक्यार, तो जैसा कि मैंने और आपने फरमाया सतीश, इस वक्त चमत्कारी गेंदबाजी ही इस वक्त उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। पहली गेंद चम्मी के लिए आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए। इसको बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग नो विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और सुलेमान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सफान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इक्वेशन काफी आसान इस वक्त उनके सामने। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ उछाला विद अ रिवर्स शॉट। सफान ने गेंद डीप पकड़ो, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ द थिंग्स गेटिंग मच इजियर नाउ फॉर देम, एंड नाउ जस्ट 3 runs required। और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त मैनशो तलपाड़ी अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है एक बार। एंड ही जस्ट फिनिश्ड द मैच इन अ स्टाइल विद अ बिग वन, अ बाउंड्री डिक्लेयर्ड, 4 declared, that's it। मैनशो तलपाड़ी retain the championship of BPL season 5 2025. Once again they become the champion in the second consecutive years. A fantastic victory for them, and also a fantastic tournament came to an end. Kyo Satish? Absolutely, Gopi. Fantastic tournament which is comes to an end, and it's a consecutive second time the man show they're really showing their excellency in this season 5 as well. Congratulations for Mansho to become the champion. Nothing to lose the heart here for Friends Makyar, because they also played a very good game of cricket. They are unbeaten throughout the league stage matches, but unfortunately they have to face the defeat in the mega final. And the Mansho desperately and definitely they deserve this victory, because they played like a champion and they become the champion. That's it, and the very good tournament which is comes to an end of this prestigious BPL season 5, which is proudly presented by Brothers Makyar. And thank you very much for the organizing committee of Brothers Makyar for the invitation being the part of this cricket tournament. As a commentator, myself Satish Salyan and Mr. Gopi would like to give special thanks to the organizing committee for this wonderful opportunity. Thank you.
Hello, hello. Hello. Mic check. Hello. Check. Hello. Hello. Raman. Hello. ಹಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ BPL ಸೀಸನ್ 5ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಹಲೋ ರಮನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ BPL ಸೀಸನ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಗರಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸರ್ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮುನೀರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಜಯ್ ಸರ್ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟವು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ತಲಪಾಡಿ ಗಡಿನಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ TM, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಶೀರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲಾಂ KC ರೋಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಕೋರರ್ ಅಫ್ರೀದ್ ತಾವುಗಳು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಗದು ರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ TM, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮೀರ್ ಮಕ್ಯಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಫ್ವಾನ್ ಆಜಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಮೀದ್ ನೀತು, ಅದೇ ರೀತಿ
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ತಂಡದ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಜ್ ತಾವುಗಳಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ 2 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮುನೀರುಲ್ಲಾ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ತಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮುನೀರ್ ಉಲಾಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುನೀರ್ನವರಿಗೆ ಬಶೀರ್ ಎಂಬಿ ಇವರು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಅಫ್ರೀದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುಕೇಶ್ ಇವರು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾಕು ಚಕ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿಸುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಕಾರಣ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಬಸೀರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರನಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ನೌಫಾಲ್ ಕೇಸಿರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಗಡಿನಾಡು ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ನೌಫಾಲ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೌಫಾಲ್ ಬೋಲಿಯಾರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೌಫಾಲ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಸುಕೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಕೇಶ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಕೇಶ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಅಸಫ್ ಕೇಸಿನಗರ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದಿಕ್ ತಲಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಂಡರ್ 11 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೊಮರಂಗಲ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೊಮರಂಗಲ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಇದ್ದರು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಬಶೀರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೇಸಿರೋಡು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೂ ರಾತ್ರಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ದಮನುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ್ ಅಬು ಯಾನಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಓನರ್, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜೀಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಕೂಡ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ವೀರೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಗದಗ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಗಡಿನಾಡ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗದಗದಿಂದ ಬಂದು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಹಲ್ ವೀರೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಲ್ ಸಿದ್ದಿ ಗಡಿನಾಡ್ ಅವರೇ ರಿಯಾಜ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗದಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೀರೇಶ್ ಗದಗ. ಇವರಿಗೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ the one and only, the third-time league stage man of the match goes to the fourth-time Chammi Vasangadi. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 2-3 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಎಸೆದುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಚಮ್ಮಿ ವಸಂಗಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲಾಂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ ಚಮ್ಮಿ ವಾಸಂಗಾಡಿ ದ ಫೋನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ತಲಪಾಡಿ. ಚಮ್ಮಿ ಸಲಾಂ. ದ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ದ Sigit 3, 4, 5 catches and long on side Mr. One and only Naufal Brothers. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕರೀಂ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪರ್ ದ ಟೂ keeper from best wicket keeper. One is Sulaiman. That goes to Sulaiman from best wicket keeper. This friends Tarabari. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The best batsman goes to ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಆಟಗಾರರೇ? ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತರು ನೈಜ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವಂತದ ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈಮ್ 11 ತಂಡದ ಶಿಯಾಬ್ ಪಾಲಕ್. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಶಿಯಾಬ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಮ್ 11 ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಶೀರ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯ ಸಹಕರಿಸುವುದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ದ ಸಿಯಾಬ್ ದ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್.
best bowler. In this tournament, the best bowler goes to the Mr. Taif from Talapadi. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸುಕೇಶ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ದ ಒನ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಮುಹಾಜ್ ಶಮೀರ್ ಸಿಯಾಬ್. The three players consecuted this same tournament. This is goes to man of the series, the none other than Chami Wasandari. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಶೀರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೊಮ್ಮರಗಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಶಾಸ್ ಕೀಪರ್ ಚಮ್ಮಿ ವಸಂಗಾರಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಟಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಇವರಿಗೊಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ನಗದನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೀರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಗದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನದಾಗಿ BPL ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 3 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ಇದುವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನೆಟ್ ಹಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ the last one prize, the man show. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀರೇಶ್ ಗದಗನವರು. ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ವೀರೇಶ್ನವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Consecuting the second time champion of this wonderful Brothers Premier League 2025 and 2024. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ತಲಪಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆದಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲ್